Hello, hello, hello. Welcome back to Almighty Blues FC, a fan channel for all to see. और हाँ, आज is going to be a very, very important night, especially for Hungary and Italy, because यार one of them will basically create history. Italy again back to back Nations League semi-finals में जा सकती है, लेकिन Hungary that will be crazy for them. Imagine भाई in a group जहाँ पर you had what Italy, Germany and England, Hungary get through. तो इट बी क्रेजी लेकिन टॉकिंग अबाउट इंग्लैंड एंड जर्मनी भाई दे हैव टू फिक्स समथिंग और इसलिए आज अगेन गैरेथ साउथगेट दी मैन ने यू कैन आर्ग्यूबली इट कैन बी हिज लास्ट मैच बट एज पर रिपोर्ट्स इट विल नॉट बी हिज लास्ट मैच और उन्हें टाइम दिया जाएगा नो मैटर व्हाट और यू हैव टू से दैट ही हैज टू गेट थिंग्स राइट yes he has already had a couple of big calls भाई ट्रेंट नहीं है आज नहीं खेल रहे और of course you know we had I think Jared Bowen dropped as well as you know I think टोमोरी का काफी अनफेयर था इन माय ओपिनियन कम ऑन भाई ने खेला ही नहीं है फिर भी ड्रॉप कर दिया फॉर व्हाटएवर रीजन वेरी गुड ऑफ फुटबॉल ऑलवेज गुड टू सी यू एज वेल बाय द वे यार हम लोग लाइव भी थे ऑन ऑलमाइटी स्पोर्ट्स प्लस अगर आप लोग में जो भी फीफा का शौकीन है भाई हम लोग वहां पर फीफा का क्रेजी ट्रांसफर विंडो से आए हैं एज वेल एज बेसिकली डूइंग अ you know a season as well तो वहां पर भी आइएगा definitely again as per rumors English clubs are favorites to sign Bellingham but we still can't rule out you can never rule out the Spanish clubs the Real Madrid and Barcelona and Bayern Munich मैं तो बोलता हूँ तीनों we cannot rule out ever especially for a top player like Bellingham by the way Bellingham Rice का जो midfield है I think this has to be the future of England as much as Calvin Phillips क्या काफी अच्छा किए थे in Euros but we'll come to that. There's a higher possibility that City giving Dortmund cash plus Gundogan again. Yeah, abhi talking about transfers doesn't make much sense. Football creeks again. Much love to you for coming on. अरे लेट हो भी सॉरी यार मतलब अगेन वी आर डूइंग बैक टू बैक स्ट्रीम्स बीच में थोड़ा सा खाने लग गया था तो 1 मिनट लेट हो गया सॉरी अबाउट दैट समीम हेलो टू आशीर एज वेल आशीर नाइस टू सी यू ऑलवेज पोर्चुगल कैसे जाएगा सर सेमी में बात करते चलो बात करेंगे एब्सोल्युटली पोर्चुगल की कल है बाय द वे फिर भी विल ट्राई एंड कवर दैट Hello, बिल्कुल हेलो Rini, nice to see you as well. And Vanabas as always. मुदत आज अपना जर्मनी का मैच है या बिग अप टू लूसी एज वेल. तो भाई ये सब लोग हो जाए और सब लोग कैसे आएंगे भाई अगेन मैं लास्ट 2-3 दिनों से नोटिस कर रहा हूँ मैं बोल नहीं रहा और मैं सोच रहा हूँ आप लोग बेसिकली यू नो अंडरस्टैंड द टेम्पलेट क्या है कोई भी लाइव स्ट्रीम में जाता हूँ पहली बार ये दबाइए थम्स अप बटन दबाइए. Yes, I am saying it. There have been a couple of people who have said that. I say it a lot of times. It is not necessary. But let me tell you, for whatever reason, it might happen in other streams for other content creators. Big up to them. I don't get many likes. और ये fact है. तो हम last 2 streams से मैंने जानबूझ के नहीं बोला है for testing and trust me for the kind of streams and the kind of interactions हमने किया I genuinely believe that हमें कम से कम चाहिए भाई 150 लाइक्स कम से कम that is like absolutely बहुत कम टारगेट है यार तो सब लोग ये है अपना टारगेट है होपफुली बिफोर दैट बिग वर्ल्ड कप इनफैक्ट मैं तो बोलता हूँ बिफोर द क्रिकेट वर्ल्ड कप भी हमें ये मिल जाए यार 6 के सब्सक्राइबर्स मिल जाए और आज रात को इस स्ट्रीम में हो जाए भाई सबसे पहले ठीक है सब लोग प्लीज लाइक कर दीजिए वीवा रोनाल्डो एब्सोल्युटली व्हाट योर थॉट्स दैट रूडिगर इज नॉट प्लेइंग चलो आते हैं भाई वी विल बी लुकिंग एट द स्टार्टिंग लाइनअप्स एंड ऑफ कोर्स जो हो रहा है इन द नेशंस लीग अगेन वी हैव लाइक अ 20 मिनट मार्जिन अभी चलो 20 मिनट्स है तो विल ट्राई एंड पहले कवर व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ ईच ग्रुप एंड ऑफ कोर्स यू नो जो कल रात को भी हुआ था थोड़ा सा तो बात करना बनता है यार वन ऑफ माय टीम नेदरलैंड्स हैज गॉन देयर तो थोड़ा बहुत बात करेंगे उसके बारे में वापस से लेकिन हाँ मेनली विल फोकस ऑन द स्टार्टिंग लाइनअप्स ऑफ tonight's game and get predictions from you all and then we'll come to the star you know best 11s and what not जो भी हम बात करेंगे right taking comments तो साउथगेट इज बायस्ड दानिश मोर देन बायस्ड मैं तो बोलता हूँ उसके पास he doesn't have the balls he doesn't have the guts simply put मैं बोलता हूँ to kind of drop certain people ट्रेंट को फाइनली इज ड्रॉप्ड लेकिन कम ऑन आउट ऑफ 5-6 राइट बैक्स एक को तो ड्रॉप करना ही था एंड इज पिक ट्रेंट दैट्स व्हाट आई वुड से लेकिन एनीवे ये देखिए कल रात को वी सॉ दैट मैडनेस हैपेंड यस एज मच एज डेनमार्क गॉट द प्लॉडिट्स Croatia has actually walked away to that Nations League semi-finals. Of course, they were a World Cup finalist, so you have to give them as well. लेकिन France, very lucky, भाई कि Austria couldn't get anything from Croatia. Having said that, Portugal का कल है, तो we will be covering that. Spain, Portugal बहुत ही interesting है. And the match in itself, भाई Portugal, Spain itself is very interesting कल, तो वो हम देखेंगे. I think it's a 6-pointer literally, लेकिन I think Portugal are good with the draw उस गेम में. आज रात को ये है फोकस इज ऑन हंगरी एंड इटली भाई अगेन स्लोबोत्साई वाज द गाय बट एडम्स जलाई ने नो गोल मारा था पिछले गेम में हम देखे थे अगेंस्ट जर्मनी और दैट इज व्हाई दे आर नॉट देयर बाय फ्लूक 5 गेम्स हुए 5 गेम्स में 10 पॉइंट्स मिले हैं
इटली स्टार्टेड बैडली. आई रिमेंबर एक थ्रैशिंग ली थी इटली ने, इफ आई रिमेंबर राइट, जर्मनी के साथ 5-2. बट सी, इटली का बाकी सब, they have just about won matches. So I think that is what Italy is. Raspadori with a brilliant goal against England. लेकिन honestly, England has been very poor. सिंपल एज दैट. इंग्लैंड ऑलरेडी रेलिगेटेड आपके लीग बी में, और इटली और हंगरी के बीच में है. द विनर विल गो थ्रू. अगर हंगरी ड्रॉ करते हैं, सिमिलर टू अ पोर्चुगल स्पेन जो कल होने वाला है, हंगरी ड्रॉ करते हैं तो हंगरी आर थ्रू. सिंपल एज दैट. तो देखिए है हंगरी में, हाँ, लेकिन हाँ ग्रुप 4 में हम जाते हैं. नेदरलैंड्स आर थ्रू एंड वेल्स आर रेलिगेटेड. यहाँ पर मैं क्विकली यार लीग बी में दिखाता हूँ. तो भाई प्रमोशन यहाँ पे स्कॉटलैंड और यूक्रेन के बीच में होने वाला है, रिमेंबर दैट. और इजराइल हो गई है ऑलरेडी प्रमोट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. लेकिन यहाँ पर लग रहा है बॉस्निया एंड हर्सिगोविना, और यहाँ पे लग रहा है बिटवीन सर्बिया एंड नॉर्वे. तो दैट्स द सिचुएशन ऑफ द नेशंस लीग जनरली स्पीकिंग. और बिफोर गेटिंग टू द लाइनअप्स, अगेन लेट्स हैव मोर लाइक्स, लेट्स हैव मोर पीपल. भाई एवरीवन कम ऑन, ये नंबर इजीली ट्रिपल हो सकता है जो देख रहे हैं. चलो तो हो जाए भाई. अपन डोंट यू थिंक वी गाइस आल्सो डिजर्व having so many people watching us? Yes, it's a break time, international break time. But let's be honest, we speak a lot about the other games as well as generally about football. तो बहुत सारा हम लेते हैं भाई आपका भी चैट. अगेन मैं तनिष्क का स्टार करके रख रहा हूँ. आई कम बैक टू दैट जस्ट अ फ्यू मिनट्स. आई थिंक एज सून एज कैल्विन फिलिप्स इज फिट, बेलिंगहम वुड बी ऑन बेंच. साउथगेट लव्स फिलिप्स. हाँ, फेवरेटिज्म इज देयर. प्रभात, आई हियर यू एब्सोल्युटली. सेमीज में कौन कौन टीम जाएगी? अगेन मैंने बता दिया दानिश, मेरा तो प्रेफरेंसेस वहां पर और फेवरेट्स. भाई में माय टीम पोर्चुगल एंड जर्मनी. वेल दे कैन, मैं बोलता हूँ विल दे, आई डाउट. पोर्चुगल का फिर भी मैं बोलता हूँ ज्यादा लग रहा है कि फाइनली दे विल गेट टू ग्रिप्स. जो लास्ट गेम में परफॉर्मेंस हुआ था, आई थिंक दे कैन गेट इट. इट्स जस्ट दैट they need to basically focus on basically एक chemistry understanding on the pitch, especially the forwards. I think they are good. पोर्चुगल का बहुत ही अच्छा है स्क्वाड. जर्मनी का अच्छा स्क्वाड है, बट फॉर्म में बहुत लोग नहीं है फॉर गुड वाइल. दैट्स द रीजन. गॉट बैक जर्मनी टुनाइट माय मैन. मैच स्टार्टिंग. चलो वापस से मैच शुरू करें. इंटरेस्टिंग भैया. कल मैं कलुलू का नाम लिया था फ्रांस के सेंटर बैक के लिए, बट व्हाई वी आर फॉरगेटिंग इवन एंडिका ऑफ फ्रैंकफर्ट. ही हैड अ ब्रिलियंट सीजन. या भाई फ्रांस के ऑप्शंस बहुत है. The backup options are brilliant, by like England, like Brazil, like maybe on Argentina to some extent. France have a huge squad like a Portugal. ये 4-5 टीम्स का स्क्वाड है ह्यूज. रिजर्व्स में है बहुत लोग. प्रॉब्लम है दे आर नॉट, दे हैव टू स्टॉप चेंजिंग नाउ एंड जस्ट बिलीव ईच अदर एंड हैव मोर केमिस्ट्री गोइंग. मेरा ये है. मिसिंग क्लब फुटबॉल संकेत होता है भाई, इसलिए मैं बोला हूँ दो मिसिंग क्लब फुटबॉल आ जाइए फीफा स्ट्रीम्स में यार. वी आर डूइंग फीफा स्ट्रीम्स एज वेल on the other channel, that is that's Almighty Sports Plus. Thanks Tanishq as well. तो भाई मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ the lineups now. Coming to Tanishq's question, right? और वो था भाई जर्मनी इंग्लैंड का. yes, it's away to England और it's at Wembley of course. तो वेम्बली में ऑब्वियसली एक एटमॉस्फेयर है, और ये एक रिपीट है भाई. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, यूरोज में wasn't it that England did play Germany last यूरोज में? और मैं एक सेकंड दीजिए मुझे, आई हैव टू, आई थिंक आई डिड नॉट शेयर दिस पर्टिकुलर स्ट्रीम इन द कम्युनिटी पोस्ट. भाई सब लोग वो भी लाइक कर दीजिए. विल सर्टेनली हैव, लेट्स गेट ओवर 5.5 के यार एटलीस्ट सब्सक्राइबर्स आज. ओके कोई नहीं, आई एम जस्ट शेयरिंग इट. 1 minute, जस्ट गिव मी अ सेकंड एंड वी विल डू लॉट्स. ठीक है, एक सेकंड मैं बस कर रहा हूँ सो दैट आई डोंट फॉरगेट टू पोस्ट इट. हाँ, गोट्स ऑफ फुटबॉल आपने रेकमेंड किया था ना. व्हाई डोंट वी डू अ करंट वाला लीडर्स 11 और समथिंग लाइक दैट, राइट? करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. वाज इट दैट? बोलिए आप क्या क्या था. डेफिनेटली वी कैन रीडू दैट एब्सोल्युटली. लेकिन मैं आई एम जस्ट ट्राइंग टू ब्रिंग अप द लाइनअप्स. जस्ट गिव मी अ सेकंड अगेन. चलो आई थिंक वी आर ऑलमोस्ट देयर. भाई सब लोग इंग्लैंड जर्मनी. ओके लेट मी पुट इट ऑन स्क्रीन. में डाला नहीं है, चलो डाल देते हैं. लाइक्स एवरीवन. भाई अगेन यार लाइक्स और सब्सक्रिप्शन के पैसे नहीं लगते फॉर एवरीवन, जस्ट इन केस आपको नहीं पता है, लेकिन इट हेल्प्स मी यार. इफ आपको लगता है आई डिजर्व सम हेल्प इन दैट, मतलब इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, तो लेट्स हेल्प देयर एटलीस्ट. या डेफिनेटली यू कैन बिकम अ मेंबर. तो बहुत सारा चीज कर सकते हैं, लेकिन वही है, वो हमारी चैनल की चाबी यार. वो हमारी चैनल की बेसिकली काइंड ऑफ व्हाट यू से, दैट इज द कैटलिस्ट टू आवर चैनल ग्रोइंग. तो सिंपल एज दैट. तो हमें चाहिए यार वो, सिंपली पुट. ठीक है, तो वही है, ज्यादा लोग करेंगे तो ज्यादा लोग को रेकमेंड करेगा यूट्यूब, और इसलिए हमारा चैनल ग्रो होगा, जो राइट नाउ इन माय ओपिनियन कैन ग्रो मच मोर. चलो एनीवे,
केरर इज प्लेइंग फॉर जर्मनी. केरर, हाउ इज ही प्लेइंग फॉर जर्मनी? प्लीज कोई बताइए मुझे. प्लीज हेल्प मी अंडरस्टैंड व्हाई इज केरर प्लेइंग फॉर जर्मनी एट राइट बैक. एब्सोल्युटली बॉन्कर्स. हैंसी फ्लिक, आई रेस्पेक्ट यू ब्रो, लेकिन व्हाई इज केरर प्लेइंग फॉर जर्मनी? ओ माय गॉड, मैं बिलीव नहीं कर पा रहा यार. केरर का जो इतना गंदा रहा है, मतलब जनरली फॉर लास्ट फ्यू सीजंस ही हैज बीन बैड यार, नॉट जस्ट वन सीजन, एंड इवन दिस सीजन, इस मंथ में हगा है उसने. हगा है प्रॉपर. केरर जो अभी ऑब्वियसली वेस्ट हैम में है, राइट, लेकिन अगर निकोलस सुले, उन्होंने भी हगा है. उन्हें भी हगा है डॉर्टमुंड के लिए. श्लॉटरबेक इज गुड एंड रूडिगर नॉट प्लेइंग. एग्जैक्टली, नाउ आई अंडरस्टैंड तनिष जो आप पूछ रहे हो. देखिए रूडिगर, यस ही इज नॉट स्टार्टिंग फॉर रियल मैड्रिड, बट व्हेनेवर ही स्टार्टेड ही हैज डन वेल. इट्स शॉकिंग. Yes, definitely he is wanting to blood, say a different defender, a different formation, different setup. Maybe उन्होंने ट्रेनिंग में अच्छा किया होगा. I hear all that and I get that ये इस मैच से जर्मनी या इंग्लैंड कुछ अचीव करने नहीं वाली. ठीक है, all they are doing is they are playing this competitive match before the World Cup being the last match for them. So it's important to get the starting 11 of the World Cup. दैट्स व्हाट मैं करता. हाँ, गुड टू सी मुसियाला हियर. मैं सच में बोलता हूँ, गुड टू सी हैवर्ड स्टार्टिंग डिस्पाइट उसका फॉर्म, लेकिन बिकॉज दे आर नॉट स्कोरिंग इनफ गोल्स. अगेन गनाब्री, आई एम सरप्राइज इज नॉट देयर. सच में बोलूं तो थॉमस मुलर, आई अंडरस्टैंड लास्ट मैच में मिसिंग थे काफी. आई अंडरस्टैंड हिम नॉट बीइंग अ टीम ओनर आल्सो मिसिंग द स्टार्टिंग 11. आई अंडरस्टैंड, ठीक है, लेकिन आई फील दैट गनाब्री कुड हैव बीन कम ऑन. हॉफमैन इज ट्राइंग, बट अगेन I don't agree with that. आप लोग बोलिए, do you agree or that? लेकिन इंग्लैंड के लिए क्या हो रहा है भाई? फोर्डन एंड स्टर्लिंग beside Keane. That's interesting. And Shaw finally starting a left-footed left back, but does he deserve to even be in the squad? No. मैं बोलता हूँ Chilwell deserves over Shaw. सच में बोल रहा हूँ मैं. Chilwell deserves to be over Shaw. Okay. Maguire चलो बैक थ्री में खेल रहे हैं आज, तो लगता है मे बी दैट्स द रीजन. नहीं, बैक, एक सेकंड, हाँ भाई बैक थ्री खेल रहे. बैक थ्री पे आ गए यार वापस से. कोई नहीं, क्या बोलते हो इस पर. should have played Kimmich in right back. Yeah, Kimmich also would have been a great option, even better than anyone else. But again, मैं shocking, मतलब क्या ही तो बोल सकता हूँ. मतलब surely there are better right backs available यार. मैं तो बोलता हूँ गिंटर भी शायद खेलते right back, even try him. But Kehrer at right back is like a liability. अगर फीफा वर्ल्ड कप में इंग्लैंड सेमीज तक नहीं जा पाती, तो क्या साउथगेट सैक होगा? यू नो व्हाट, आई थिंक साउथगेट का लास्ट टर्म जो है ना, उसके उसके टेन्योर का लास्ट टर्म इन्हीं में आने वाला है. इट्स कमिंग सून, बी इट आफ्टर द फीफा वर्ल्ड कप और बिफोर इट एज वेल. मैं तो बोलता हूँ हाँ, क्वाइट पॉसिबिलिटी. लेकिन अगेन एज पर रिपोर्ट लग रहा है आफ्टर फीफा वर्ल्ड कप ही होगा. आई एम अ डॉर्टमुंड फैन. आफ्टर सम टाइम गाय रॉयस विल बी देयर टू. Again, Marco Reus luckily is not very badly injured. That's good. लेकिन but looking at that lineup और looking at that bench, भाई क्या लगता है? मुझे लग रहा है यहाँ पे गोल्स है यार, गोल्स है. देखिए, yes they are playing three the back England, और इंग्लैंड काफी स्ट्रांग है three the back डिफेंसिवली. लेकिन आई स्टिल फील शॉ एंड मैग्वायर आर देयर. यस, वो ज्यादा एफर्ट डालेंगे, डालना भी चाहिए उन्हें, लेकिन वो ये सम पॉइंट मैं बोलता हूँ दैट यहाँ पर एक गोल आएगा. लेकिन जर्मनी विद मुसियाला बीइंग देयर, आई फील दैट हैवर्ट्स और मुसियाला काफी बेसिकली इंटरचेंज कर सकते हैं. साने इज अ मेन मैन फॉर मी. तो आई फील दैट जर्मनी माइट एक्चुअली स्कोर अ गोल एज वेल. तो मैं जा रहा हूँ 1-1. अगेन इट विल बी अ ड्रामा फिल्ड 1-1. इट वोंट बी अ बोरिंग 1-1 फॉर श्योर. दैट्स माय प्रेडिक्शन. वेयर इज कोडी? भाई कोडी घर पे शायद. आई थिंक कोडी, let me see. Cody is there on the bench. I think I did show the bench. Ben Chilwell is there. Cody is there. Mason Mount is there. Bukayo Saka is there. Tammy Abraham is there. Ivan Toney, भाई Ivan Toney किधर है? Ivan Toney भी bench पर है. Toney of Brentford. और again, I think Germany का तो हमने already discuss कर लिया है. England has Brazil level talent and options, but not commitment. Yeah, that's a good point. The winner of Hungary and Italy will face Netherlands. As a Dutch fan, भाई, which national team do you want to face in semi-final? Yeah, I will take that. आयुष, मैं लेता हूँ हंगरी और इटली का विनर का लेता हूँ कंपेयर टू मे बी पोर्चुगल, जो मुझे लग रहा है जीतेगी कल. लेट्स सी. अगेन पीपल, एवरीवन, लेट्स डू दिस. आप देख रहे हो कमेंट, थैंक्स. लेट्स डू दैट. एब्सोल्युटली इट हेल्प्स, बिकॉज दैट इज हाउ द चैनल काइंड ऑफ कीप ऑन गोइंग. और वो है, आप बोलते हो हर एक स्ट्रीम में आकर लाइक करना, भाई बोर हो जाता है. भाई कम ऑन, इट्स जस्ट अ प्रेस ऑफ अ बटन. दैट इज रिक्वायर्ड फॉर व्हाटएवर रीजन, दैट काइंड ऑफ बैकिंग, I believe can be more to our channel than what we have been getting, which we also are thankful for. After World Cup, 99% they will sack him for a new starting project. 100% again, मुझे लगता है. Do you think Sergio Ramos can come back in Spain squad for World Cup? I don't think so, Sudarshan. नहीं लगता मुझे.
मुझे नहीं लगता, बिकॉज आई डोंट थिंक यार देखिए डिफेंस में वहां पर लपोर्ट है, you have basically others as well, right? Remember, you have basically a Laporte coming back, you have a Pau Torres already doing well, you have a Eric Garcia who's improved for sure. Or again, even like others are there, by who are waiting in the wings. Inigo, there are a lot of people, by Sudarshan. Fernando Santos on Portugal, the best is still to come against Spain. Yeah, मतलब Portugal fans will hope that it's high time that Portugal improves anyway. हाँ, last game अच्छा की थी, but they'll improve. Tanish बोल रहे हैं 3-0 to England, Germany against England away. Interesting that. Interesting. Again, people, I just request something भाई, अगर आप लोग देख सकते हो तो बढ़िया है, अगर कर लो तो बढ़िया है. Again, let me not go on and on about it. It's certainly required here. That's how channel grows. आपके definitely super chats will help as well, but we can certainly do at least with the definitely what do you say, the likes, वो तो minimum कर ही सकते हैं. और again, let's get to 5.5 subscribers आज at least. Okay, so let me show Hungary and Italy, दूसरा मैच जो हो रहा है meanwhile. और यहाँ पर is my main man is playing. Do you all know कौन है मेरा recent favorite in Italian team? Does anyone know in the chat? देखते हैं आप लोग कितना follow करते हो streams को. Let me know in the chat. In that Italian team, who is my recent or current favorite? I have a recent or a current favorite in that Italian team, which I have बहुत ज़्यादा praise किया उसको because he is good. But is he playing the right position? No, I don't think so. That मैं दिखाने वाला आपको लाइन ना, फिर आप बता देंगे. और भाई सब लोग जर्मनी रादर इंग्लैंड वर्सेस जर्मनी का प्रेडिक्शन डालिए चैट में. एवरीवन, अगेन इट्स जस्ट द प्रेस ऑफ अ बटन. अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया तो all you have to do is subscribe, comment, and keep subscribed and like the stream and get involved in the chat as much as possible, because we are going to be discussing best 11s and whatnot. We're going to be discussing a lot of things along with हम जो करते हैं रिएक्ट ओवर द मैच. ठीक है, तो भाई हो जाए यार, इतनी कंजूसी मत करा करिए यार मेरे साथ. मतलब आई हैव टू रिक्वेस्ट एवरीवन. यस, मैं थोड़ा ज्यादा बोल रहा हूँ बिकॉज आई हैव ऑब्जर्व्ड इन द लास्ट 3-4 days आई एम नॉट गेटिंग मेनी लाइक्स. सो प्लीज इट विल हेल्प मी अ लॉट. ओके, देखिए यहाँ पर चलो, वी हैव डी लोरेंजो स्टार्टिंग नाउ. मेरा क्वेश्चन है भाई, अगेंस्ट हंगरी व्हाई आर यू गोइंग एट 3 at the back? ये मेरा क्वेश्चन है. Why are you going 3 at the back? Yes, Hungary, kind of hit you on the break. Hungary in terms of transition, they have been great. लेकिन I was thinking कि they would go 3 up front, 3 in midfield and 4 defenders. The reason being, उनके पास है. Yes, they don't have a proper center forward नहीं है इटली में, आप बोल सकते हो. लेकिन आई थिंक इन रिसेंट वीक्स दे मतलब अगेन ऐसा नहीं बोलोगे कि बहुत ही बुरा लगे यार. आई थिंक स्कमाका फॉर इटली हैज लुक डिसेंट अगेंस्ट इंग्लैंड, डिसेंट लगे थे मुझे तो. आप लोग बोलिए इफ यू अग्री और नॉट. हु एल्स इज देयर भाई? मतलब अगेन हाँ, सेंटर फॉरवर्ड इमोबिले इज इंजर्ड, तो आई कैन अंडरस्टैंड व्हाई वो हुआ है टू सम एक्सटेंट. वो एक और इंजरी नहीं चाहते, लेकिन भाई ये लास्ट है, वो वर्ल्ड कप नहीं खेल रहे मतलब इटली. तो फॉर मी इट्स वेरी सरप्राइजिंग that they'll be happy with the draw, man. हाँ, उनका एक draw is not enough. हंगरी के लिए enough है एक draw. तो very surprising. और maybe they're thinking Nonto. तो भाई this is the guy. Nonto, Wilfried Nonto is the guy जो maybe वो ये they'll hit on the break with Raspadori's as in double footedness और Nonto's pace. और यही वो लोग hit करेंगे with Barella and Cristante kind of helping Jorginho. That's interesting because Cristante has more legs, so that's great to see that. लेकिन अगेन बोनुची, the evergreen Bonucci is there as captain and Donnarumma behind him as always. लेकिन अगेन Slobozai is the danger man for Hungary और Adam Zalai जो उनके forward captain है वो तो है ही है. Who else is there? One second, I'm just coming to other options. So I think वही I think I can understand why they've gone for this formation Italy, that is. लेकिन still I ideally मैं सोच रहा था 4-3-3 would be good. They need a win. Okay, now let's take a few comments. Okay, make a team of underrated players. चलो समर तो स्टार करके रखा हूं मैं. I will come to that. Dumfries नहीं यार, Dumfries का Dumfries is one of my favorite for sure. लेकिन इटली में it's got to be Nonto. Your most heartbreaking moment in football. चलो ये सब मैं मैच शुरू होने के बाद शुरू करेंगे. सुदर्शन में स्टार कर रहा हूँ. I will come back to this in just a few minutes. Germany 3, England 0. Why? Krish also is saying England will go to lose 3-0. Okay. 2-1 to Germany. Handsome Mohawk, thanks for coming on. Okay. साउथगेट के बाद कौन मैनेज कर सकता है इंग्लैंड को? वेल
यू नो व्हाट, इट कुड हैव बीन पॉटर, लेकिन हम पॉटर ले लिए, अभी इंटरेस्टिंग रहेगा। मे बी दे आर सेइंग वन ऑफ द क्लब मैनेजर्स विल बिकम अ नेशनल टीम मैनेजर एट सम पॉइंट, दैट माइट बी वन थिंग, अब देखते हैं। इसीलिए मे बी यू नो दे डोंट हैव इतने ऑप्शंस, इसलिए साउथगेट के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं। वेयर इज क्रूज, गोरेत्स्का, वॉलैंड, आरडीएमई, इट्स यू नो व्हाट, अगेन काफी यंग है आरडीएमई तो। वर्ड्स, आई थिंक मुसियाला ओवर वर्ड्स एनी डे, गो टू द फुटबॉल, नो टू, मतलब वर्ड्स बहुत अच्छे प्लेयर है। Again, he's coming back from long-term injury. I would actually not have you know words over Musiala. Musiala over words any day of the week. सच में बोलता हूँ तो। हाँ, लेकिन again हॉफमैन को खेल रहे हैं, वॉलेंड नहीं है। That's a good point. That's actually a good point. You can argue that why not Volland. सिक्स हार्ट ब्रेक और लुकाकू पेनल्टी में सेट सुपर कप फाइनल। बिल्कुल वो बहुत ही बुरा था। बाय द वे इवन टैमी का भी हुआ था भाई सुपर कप में, याद रखिए। साउथगेट के बाद कौन मैनेज कर सकता है इंग्लैंड को? वो मैं ले लिया क्वेश्चन। व्हाई इजंट विराटी प्लेइंग? लेट मी सी भाई, अगेन रोटेशन होती है भाई इटालियन नेशनल टीम में। दे हैव सिंपली गॉन फॉर रोटेशन। आई डोंट सी हिम इन द इंजरी लिस्ट ईदर, तो लुक्स लाइक इट्स अ डिफरेंट टीम, सिंपली पुट फ्रेश लेग्स, क्योंकि यार 4 दिन में 2 गेम खेल रहे हैं ना, दैट माइट बी द रीजन, और कुछ नहीं। सेम चीज, क्रूज विल प्ले अगेन। जर्मनी का भी दैट माइट बी द थिंग ना, इसलिए बहुत लोग खेल नहीं रहे आज। 4 दिन में लिटरली 2 गेम खेल रहे लोग। सेमीज का क्या सिचुएशन है? वही सिचुएशन है, लोन वुल्फ, यू आर लेट टू द स्ट्रीम, लेकिन थैंक्स फॉर कमिंग ऑन। हमने शेयर किया ऑलरेडी। सो ऑलरेडी यू हैव नेदरलैंड्स हु आर थ्रू, ठीक है। यू ऑलरेडी हैव क्रोएशिया हु आर थ्रू। आज लुक्स लाइक इट विल बी ईदर हंगरी और इटली। हंगरी नीड अ ड्रॉ, इटली नीड अ विन, वो सिचुएशन है सिंपली पुट। इट इज द गेम इज हंगरी, सिंपल एज दैट। एक सेकंड, मैं यहाँ पर एक बैनर डाल देता हूँ, सो आप लोग डोंट फॉरगेट टू लाइक द स्ट्रीम, होपफुली समवन नोटिसेस लाइक दैट। कोई नहीं। Germany, my favorite. England, the team I hate. Oh my god, that's strong. Cristante, yeah. Germany 2, नहीं नहीं. It was Nonto. Nonto was a person जो है अपने forward, but actually he's a winger. He's actually a winger. But let's see. Forward on the break, it can be helpful as well for Italy. Germany 2, England 1. England 2. Reese 2 goals. Oh my god. ओके, जर्मनी 1 बोल रहे हैं डेरेन। आयुष बोल रहे हैं जर्मनी टू इंग्लैंड 2। अगेन मैं गया 1-1। एंड बाय द वे आई हैव नॉट प्रेडिक्टेड येट फॉर हंगरी इटली। हंगरी इटली में मैं बोलता हूं भाई, माय मैन नॉन्टो, ही विल गेट ईदर असिस्ट और स्कोर 100%। यस, रास्पदोरी स्कोर्ड इन द लास्ट वन। मैं बोल रहा हूं इस बार कोई और स्कोर करेगा, और प्रोबब्ली ओके लेट्स गो इवन नॉन्टो एक और गोल भाई। एक नॉन्टो, एक जॉर्जिनियो पेनल्टी, क्या बोलते हो? लेट्स गो फॉर इट। Nonto will win a penalty and score a goal. ज़्यादा बोल दिया I know, but it is what it is. और Jorginho penalty and 1 assist Barella and 1 assist Nonto. ठीक है, तो 2-0 away to Italy मैं बोल रहा हूँ। Yes, Hungary hits on the break, लेकिन 3 the back जा रही है Italy, याद रखिए। तो I am going 2-0 to Italy. Oh my God, look at Hungarian players, bro. Literally रो रहे यार. What happened? भाई, they are literally crying, man. What happened? But it's so important, bro. Now, should I change those predictions looking at the emotions of Hungarian players? Man, a couple of them are literally crying. भाई रो रहे वो लोग, इतना इमोशनल है, क्योंकि they are, remember, इस ग्रुप में थे England, Germany, Italy, and Hungary are on top of as things stand, and they might actually go to the semi-finals. Yes, it's Nations League, लेकिन it's huge for them. 4-0 to Germany. Oh wow. Come on, Ankit bhaiya. You want Tuchel to manage England? नहीं नहीं नहीं. So, Sean Dyche, New England manager, most underrated. You know what? I won't be surprised. सच में बोले तो प्रभात, मैं सर, लेकिन वो ये होने चाहिए कुछ फ्लेयर चाहिए, मतलब आफ्टर साउथगेट, तो आई डाउट इट एज वेल एट द सेम टाइम। फॉर मी जिडान एंड मेसी मिस द वर्ल्ड कप ट्रॉफी इन फाइनल। ओ माय गॉड। 1-1 समर्थ में भी ओके। चलो हो जाए भाई, 50 लाइक्स होपफुली हो गए, 150 लाइक्स भी हो जाएंगे होपफुली। कूल। कल हम लोग लीडर्स 11 ऑल टाइम बनाए थे, पर भैया वी मिस्ड पिरलो। नहीं, एक्चुअली पिरलो मैंने शाउट आउट दिया था, जहां तक मुझे याद है, गोड्स ऑफ फुटबॉल। नहीं, मैंने दिया था भाई पिरलो को, मैंने बोला था सेड ऑफ पिरलो, मैंने मिस कर दिया। लेकिन वही है, मिडफील्ड में इतने सारे ऑप्शंस है। इज पिरलो नेचुरल लीडर कंपेयर टू जो हमने डाला था? प्रॉब्ली नॉट। अगर आप बोलते हो रूड हुलिट और पिलो, मैं रूड हुलिट को डालता। अगेन ही इज एन एसी मिलान लेजेंड एज वेल, नॉट जस्ट चेल्सी, ठीक है। तो आई थिंक इट्स फेयर, मतलब पिरलो इज डेफिनेटली अ ग्रेट शाउट, लेकिन शायद जहां तक मेरा चॉइस है, नहीं। इमेजिन नॉन्टो है चेल्सी भाई, लीड्स है, डर्टी लीड्स में है, नॉन्टो इज इन डर्टी लीड्स। इमेजिन दैट, दैट्स बैड। बहुत लो स्कोरिंग मैच होगा, 1-0 जर्मनी और 1-1 ड्रॉ। चलो देखते हैं। आई फील दैट टोटल आज 4 गोल्स मिलेंगे आपको दोनों मैचेस को मिलाकर, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। बेलिंगहम स्कोर्स, समर्थ बोल रहे हैं इंटरेस्टिंग। कैरियर वाज मैनेजर्स
Oh, okay, got it. By for this Portugal side, will you be satisfied if they at least reach semi-final in this World Cup? Will it be a satisfying for this golden generation? Uh, I don't think so, Ayush. Yes, semi-finals of the World Cup is huge. लेकिन in my opinion, by Portugal मोर देन नेदरलैंड्स भी बोलूंगा कि यस दोनों अंडर अचीविंग टीम्स रही है इन मेजर टूर्नामेंट्स स्पेशली इन वर्ल्ड कप्स एट सम पॉइंट पोर्चुगल इन टर्म्स ऑफ द स्क्वाड द रिजर्व्स मिलाकर भाई दैट इज वन ऑफ द बेस्ट स्क्वाड्स यू हैव एंड दैट इज व्हाई आई एम सेइंग दैट I think final is what a Portuguese, true fan would probably expect, especially being in Ronaldo's last World Cup. And let's be honest, it's his last World Cup. Which was your first World Cup Euros? My first World Cup जो मैंने देखा है खाली World Cup final match देखा था 94 का World Cup match. Yes, I was a baby then, but I did watch that. Then obviously full World Cup 98 World Cup मैंने देखा है और यूरोज अगेन यूरो 96 मैंने कुछ मैचेस देखे थे बट यूरो 2000 हर एक मिनट देखा था आयुष वी मिस निमानिया मिडिस टू नहीं आई गेव हिम अ शाउट आउट डेफिनेटली आप देखिए वापस लेकिन मैंने बोला है दैट द फैक्ट दैट कैनावारो वन अ वर्ल्ड कप यार वन एक जन जो मैंने मिस किया मैं रियलाइज किया समर्थ बाय द वे किक ऑफ हो गया है हंगरी इटली का मैच देख रहा हूँ लेकिन दूसरा मैच भी लगा सकते हैं साथ साथ में आप लोग बताइए एक्चुअली लेट मी पुट दैट राइट अवे वो भी डाल देते हैं भाई गोल होते होते बच गया पहले ही हंगरी का हंगरी स्टार्टेड वेल बाय द वे एक जन जो मैंने मिस किया ना समर्थ एंड एवरीवन जो लीडर्स 11 के थे ऑल टाइम यहाँ पर एक अर्ली फ्री किक हो गया है गिवन अगेंस्ट इटली और बरेला खुश नहीं है व्हाट इज दिस ब्रो हैंडबॉल नहीं था अरे नहीं था यार हैंडबॉल मैन रेफरी मैन कम ऑन ब्रो कम ऑन दैट इज नॉट अ हैंडबॉल हाँ तो कमिंग बैक टू समर्थ कमेंट थियागो सिल्वा आई मिस थियागो सिल्वा कैन यू बिलीव इट मैं हर एक 11 में बनाता हूँ भाई थियागो सिल्वा को डालता ही डालता हूँ मैंने कैसे भूल गया भाई आई फॉरगॉट taking even Thiago Silva's name. Yes, I might not have put him over Cannavaro still, लेकिन भाई Thiago Silva, even Lucio. I missed out these names actually. Why does Dier start over Tomori? यार इसीलिए क्योंकि वो only thing is he is a better would I say? Yeah, actually, let me say it. Yeah, he's a better passer of the ball. When I say passer of the ball, he has that better diagonal pass, and I would assume that on set pieces he's better, and even on taking set pieces. That's the only reason. लेकिन unfair है. It's fairly put. I would more say by how does Maguire start over Tomori? Yeah, Maguire. मतलब he has been hated थोड़ा सा unfairly भी to some extent. लेकिन come on, Tomori over Maguire any day of the week, and he can play left center back. Tomori that is. डू यू रिमेंबर जोला का बैक हील गोल फ्रॉम कॉर्नर अरे बिल्कुल यार वो तो मतलब वायरल हुआ था यार एज इन फॉर फ्यू इयर्स इट वाज वायरल बिकॉज मतलब आर्ग्यूबली इट वाज द बेस्ट गोल बाय चेल्सी प्लेयर यार फॉर अ फ्यू इयर्स डेफिनेटली तो मैं तो डेफिनेटली बोलूंगा नॉरिच के साथ था ना नॉरिच के अगेंस्ट था आई रिमेंबर दैट यार एब्सोल्युटली गुड ऑफ फुटबॉल आदरी कैसे हो हाय नाइस टू सी यू ऑलवेज अगेन डू लाइक द स्ट्रीम बहुत पुराने खिलाड़ी को मैंने तो 2014 में फर्स्ट वर्ल्ड कप देखा था चलो कोई नहीं हाँ 2014 वर्ल्ड कप भी मैं देखा था भाई पूरा आर यू सीइंग ब्राजील इन द फाइनल अगेन डिटेल में तो नहीं जाऊंगा मैं अभी लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट ब्राजील आर वन ऑफ द फेवरेट्स डू आई सी देम इन द फाइनल probably not again I might be wrong लेकिन दैट्स जस्ट माय गट फील प्रेडिक्शन अभी के लिए अब देखते हैं याप स्टैम हाँ डेफिनेटली मैंने शाउट आउट दिया था कल आई रिमेंबर गिविंग अ शाउट आउट टू याप स्टैम अगर केयरफुली देखिए आई डिड गिव अ शाउट आउट टू याप स्टैम आई वांटेड टू गेट हिम इन एक्चुअली सादिक भाई ने मुझे याद दिलाया बाद में आई फॉरगॉट डिबोर मैंने याप स्टैम और रूड हुलिट को डाला भी है लेकिन भाई आई फॉरगॉट डिबोर वाज द कैप्टन ऑफ दैट side I think if I'm not wrong which won the Euros. Do you think it's finally a time where the World Cup curse will be broken? Well, लग तो नहीं रहा यार लेकिन अगेन आई डोंट बिलीव इन कर्सेस सच में बोलो तो भाई सोनी 10-1 में आ रहा है हंगरी और इटली और सोनी 10-2 में आ रहा है आई थिंक द अदर गेम राइट विच इज ऑब्वियसली इंग्लैंड जर्मनी आप लोग कौन सा मैच देख रहे हैं बता दीजिए मैं दोनों मैच लगाने वाला हूँ लेकिन अभी दोनों मैच लगा दिया हूँ ठीक है और लेट मी ट्राई एंड पुट द स्कोर्स भी इंग्लैंड जर्मनी 0-0 अभी वेम्बली में दैट्स आल्सो गोइंग टू बी अ गुड मैच डेफिनेटली अर्जेंटीना हाँ यार अर्जेंटीना हैज अ गुड चांस इनफैक्ट अर्जेंटीना हॉलैंड मिल सकते हैं यार इज व्हाट आई हैव प्रेडिक्टेड अर्ली प्रेडिक्शन जो किया था वापस आएंगे हम लेकिन अर्जेंटीना हॉलैंड साथ में मिल सकते हैं तो वहां पर अगेन 2014 का फाइनल रिपीट सॉरी सेमीफाइनल रिपीट
अरे भाई बढ़िया विंग प्ले बाई डी लोरेंजो आई बिलीव। डी लोरेंजो अच्छा किए इटली के राइट विंग में, एंड भाई बहुत ही अच्छा किए। एंड ही गॉट अ कॉर्नर ऑफ हंगेरियन प्लेयर। यहाँ पे इंग्लैंड क्या कर रही है भाई? इंग्लैंड ट्राइंग टू कीप पोजीशन बैक फाइव में। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। आप कहाँ से हो भाई? इंडिया से हो? बिल्कुल इंडिया से ही हूँ। आई हैव बीन बॉर्न इन बैंगलोर, लेकिन मेरी फैमिली नॉर्थ इंडिया से है यार, जस्ट टू लेट यू नो। अच्छा ये ले लिए थे, चलो। तो मैं यहाँ पे क्विकली लेट मी एक्चुअली अपडेट द स्कोर्स सब लोग, ठीक है। तो आज दो ही मैच हो रहे, अनलाइक यस्टरडे। तो वी आर हैविंग इंग्लैंड 0, जर्मनी 0, और दूसरा मैच कौन सा है भाई? अपना हंगरी और इटली, वो भी 0-0 अभी तक, ठीक है। ठीक है, चलो। ठीक है, आपका स्कोर नीचे नीचे चल रहा है, तो वो अपडेट कर लेंगे आप कैसे ना कैसे। भाई हैंसी फ्लिक अगेन यार, थोड़ा सा सरप्राइज यू बाय द लाइनअप एनीवे। मैनचेस्टर वर्सेस बार्सिलोना, योर प्रेडिक्शन? ये कौन सा मैच के लिए पूछ रहे हो आप? मैनचेस्टर से बार्सिलोना, मे बी आई मिस समथिंग क्या? आई एम जस्ट सेइंग कि अगर मैनचेस्टर कौन सा, यूनाइटेड की सिटी? थोड़ा डिटेल में पूछ लो यार आयुष। अर्जेंटीना 2014 विदाउट हगवाइन वर्सेस पोर्चुगल 2024 without Santos with Jose. Okay, I'm not sure if I understood that as well. Argentina 2014 without Higuain versus Portugal 2022 without Santos with Jose. Okay, तो आप बोल रहे हो कौन सा एक पिक करिए क्या? That's what you're asking, Samarth. Okay, I believe Samarth. Portugal with Jose again. Do I see them attacking as much? Not really, to be honest. Okay, is a penalty shout? पेनल्टी शाउट टू इटली, लेकिन नहीं, इट्स अ शोल्डर पुश बाय हंगरी। कोई नहीं होता है। आई स्टिल सी अर्जेंटीना 2014 गेटिंग द बेटर ऑफ देम यार, सच में बोलता हूं तो। हाँ, क्योंकि मैंने देखा था अर्जेंटीना 2014 को, पोर्चुगल 2022 आर द बेटर टीम ओवरऑल, लेकिन वही है, आई स्टिल फील दैट अर्जेंटीना 2014 और एक्चुअली मतलब नॉट इजीली, मतलब वो गोल्स नहीं दे रहे थे कंपेयर टू मे बी पोर्चुगल। एक क्वेश्चन, ब्राजील के टीम में एक अंडररेटेड प्लेयर बताओ एंड ही वुड बी विनिंग अ बैलन डोर बट ही वुडंट, आपका ओपिनियन देना, देन मैं मेरा बताऊंगा। ओके, मतलब एक अंडररेटेड प्लेयर जो जिसको बैलन डोर मिलना चाहिए था और जिसको नहीं मिलेगा, मतलब मैं तो तियागो सिल्वा बोलूंगा। तियागो सिल्वा, मतलब या इज अ डिफेंडर, सो व्हाट। मतलब फॉर मी अ गाय हु इज even today one of the best defenders in the Premier League. In the last 10 years, he's been one of the best defenders. And even at age 38, he's doing this. And yes, for Brazil, he's been a crazy leader, much important leader. And आप वो गवाह है 2014 की बात करें ना, 2014 में थियागो सिल्वा मिस्ड वन मैच एंड दैट वाज द सेमीज। क्या हुआ था उस मैच में सबको याद है। तो मैं बोलूंगा थियागो सिल्वा, ब्रो आई थिंक इज हाईली अंडररेटेड। ही इज नॉट recognized as one of the goats in center backs. I think he should be. Thiago Silva is my call. Again, Ballon d'Or स्टैंडर्ड का आई डोंट नो, मे बी नेमार ही बोलेंगे, उसके बाद और कौन बोलेंगे यार एट बैलन d'Or लेवल? आई डोंट नो, प्रीवियस बोच द डैनी एल्विस इज व्हाट यू आर सेइंग। आई डोंट, कैसिमिरो इज ग्रेट बट मतलब वो एक अलग लेवल हो गया यार, नेमार, थियागो सिल्वा, डैनी एल्विस का। दैट्स व्हाट आई वुड से। आप बोलिए आदरी। आई थिंक आदरी का ही था ना? हाँ, मैनचेस्टर वर्सेस बार्सिलोना, यू गॉट ओके। दैट्स अ गुड वन, दैट्स अ गुड वन। ओके ओके। यार हिगवाइन, देखिए मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, हिगवाइन वाज वन प्लेयर जो मैं हमेशा बोलता हूँ दैट, मतलब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, गोड्स ऑफ फुटबॉल। देखिए हिगवाइन वाज अ वेरी गुड प्लेयर व्हेन ही केम आउट ऑफ रियल मैड्रिड, ठीक है। जब रियल मैड्रिड के बाहर आए ना, तो ही वाज लाइक समवन हु कुड प्ले वाइड एज वेल एज प्ले स्ट्राइकर। देन बाद में ही बिकेम लाइक दैट प्योर सेंट्रल स्ट्राइकर, while his finishing was absolutely wow, superb. I actually feel, और ये थोड़ा सा अंडररेटेड होगा ये पर्टिकुलर ओपिनियन, अगेन ही वाज वेरी गुड फॉर अर्जेंटीना, बट फॉर मी, ये मेरा थॉट है,
सर्जियो अग्वेरो डिड नॉट गेट इनफ स्टार्ट फॉर अर्जेंटीना देन व्हाट ही डिजर्व्ड. सच में बोल रहा हूं मैं. अग्वेरो को ज्यादा स्टार्ट मिलने चाहिए थे ओवर द इयर्स. एंड वन ऑफ द रीजंस व्हाई हिगुआइन प्लेड, यस ही वाज वेरी गुड, अगेन डोंट गेट मी रॉन्ग, सुपर्ब थे. बट फॉर मी हिज फिनिशिंग कुड हैव बीन स्लाइटली बेटर कंसिडरिंग जो वो करते थे क्लब फुटबॉल में. दैट इज व्हाट आई वुड से फॉर अर्जेंटीना. एंड द फैक्ट दैट आई थिंक, हाँ, मे बी आप बोल सकते हो he had that height factor with a Messi around, with a Di Maria around, they needed a Higuain in terms of the team setup. लेकिन वही है ना, वहां पर अगर आप इमेजिन करिए अग्वेरो ज्यादा स्टार्ट्स करते, आई फील जो फ्लोइंग फुटबॉल होती है अर्जेंटीना, जो बहुत बार मिसिंग थी स्पेशली 2014 के वर्ल्ड कप में, तो वहां पर ज्यादा फ्लोइंग फुटबॉल मिलती है अर्जेंटीना को, इन माय ओपिनियन. दैट्स जस्ट माय ओपिनियन. लेकिन हाँ, हिगुआइन एज इन वन ऑफ द ग्रेट्स इन टर्म्स ऑफ फॉरवर्ड फॉर एट क्लब लेवल फॉर नेपोली, भाई क्या किया था, क्या सीजन ही हैड. दैट इज व्हाई वी गॉट हिगुआइन. लेकिन 2014 के समय में, आई थिंक इट वाज अराउंड हिज प्राइम that we're talking about, but for sure he missed chances. He should have scored even that final, you can say that. नहीं, आप बोलिए, what are your thoughts? नेमार समर्थ बोल रहे हैं. Suarez, okay, Ayrton, nice to see you. I have never seen you before, maybe I missed it. लेकिन hopefully you have subscribed to our channel, both our channels, that is Almighty Sports Plus, the link is always tagged below in the description, and Almighty Blues FC, that is this. फ्रैंक लैम्पार्ड डिजर्व टू बैलन डोर. हाँ यार, बहुत क्लोज आए थे फ्रैंक लैम्पार्ड, बहुत ही क्लोज आए थे. मतलब अगेन आई वुड से यूर अनलकी मैन इफ यूर ऑन रोनाल्डिनियोस एरा, सिंपल एज दैट, एज मच एज मेसी. और ऑफ कोर्स उस समय रोनाल्डिनियो काका थे फ्रैंक लैम्पार्ड और ड्रॉगबा के एरा में, तो कांट हेल्प मच ना. Who according to you will surprise all of us in the World Cup? By surprise, again, मैंने डिटेल में नहीं बात करना है, because I genuinely believe I'll do a series which I've been telling about by the end of this month or beginning of next month. I'm just trying to find the right time. देखिए, for me, the surprise of the World Cup, you can say, I'm biased, लेकिन I genuinely believe that Netherlands अगर जाती बहुत deep, it will surprise many people. But I believe so, yes, Netherlands Argentina meet करेगी, and that is maybe the game which tells you what Netherlands are all about. I'm hoping that. ठीक है. You can say it's a surprise. हाँ, considering Nations League form आप नहीं बोलोगे, लेकिन come on, overall, you wouldn't expect Netherlands to be in semi-finals, would you? I think they might just reach there. That's my call. Again, maybe I'm biased, पता नहीं, लेकिन maybe I'm just following football, और मुझे लगता है yes, अर्जेंटीना क्रेजी फॉर्म में है, बट एट सम पॉइंट यूर पीकिंग टू अर्ली इज व्हाट आई फील. मेरा ये था. Portugal, despite the bad form over the last few months, I think will do much better at the World Cup. So that is just my call. Again, major surprise तो मुझे नहीं लगता कोई होगा. हाँ, you can say outside chance Japan, maybe because Germany form में नहीं है. That's the only thing मैं बोल रहा हूँ. Thiago Silva, Modric, Ronaldo, Alex, still a fine wine, बिल्कुल. हिगुआइन नहीं यार, remember that match against Huddersfield? अरे चेल्सी के लिए तो बेकार था भाई एकदम. Agree करता, Silva is underrated, but Neymar is overrated in my opinion. Alexander Pato, if he's fit, would be winning. Oh my God, I think Alexander Pato was like one of my favorite यार at the time. In fact, he was a Chelsea player also on loan. वो अलग बात है, उनको चांस नहीं मिला. Of course, वो फिनिश हो गया था as a player anyway by then. But Alexander Pato, yeah, he would have got. लेकिन ऐसे बहुत प्लेयर्स है यार, आदरी, बहुत प्लेयर्स है जो did well, but Alexander Pato, yes, he could have reached that level. I would say Adriano यार, Adriano मैं बोलता, even more than Pato, to be very honest. Aguero point, yeah. Rooney or Totti? Rooney, bro. Rooney. Malab, Rooney could do more because he can give you more on the pitch. Totti was superb, world class. I love his loyalty. लेकिन let's be honest, Rooney, prime Rooney, man, trust me, man, prime Rooney was unplayable थे यार, सच में. Matata against Huddersfield sold you as a dream. Oh my God. Okay, let's like the stream. Absolutely, people. Come on, likes कितने हुए भाई? Likes अब देखिए वापस भाई 100 लाइक्स हो जाने चाहिए थे अभी तक. इतने टाइम से हम बात कर रहे हैं, बहुत लोग देखिए, जहां तक मैं देख रहा हूँ व्यूज. होपफुली वी कैन हैव मोर पीपल. कम ऑन पीपल, कंजूसी नहीं लाइक्स में. लेकिन both David Beckham and Lampard deserve to win Ballon d'Or. David Beckham, I would disagree. आयुष, मैंने डेविड बेकहम को बहुत प्रेज किया. इफ यू एक्चुअली केयरफुली फॉलोड माय स्ट्रीम, प्रीटी श्योर आयुष आप देखते आ रहे हो, he is one of my favorite players at that time. जो शुरू किया था मैंने, he was one of my favorite players. लेकिन उस समय at the same time I don't think it was Ballon d'Or level. He was underrated क्योंकि वो काफी लोग सोचते it was because of his basically जो antics of the pitch होते हैं, because of that he was famous. But नहीं, he actually was very good as a player, very good. But Ballon d'Or level नहीं यार,
सच में बोलता हूँ यार, लैम्पार्ड बेकहम को आप सेम लेवल पे नहीं कंपेयर कर सकते हो। नो डिसरेस्पेक्ट यार, लैम्पार्ड अगेन आप स्टैट्स मत देखो, आप लाइव देखो भाई लैम्पार्ड के मैचेस, वापस से रिकॉर्डिंग देखो पूरे मैच, आप देखते हो हाउ मच लैम्पार्ड गेव इन अ मैच, as much as Beckham was superb for Manchester United, superb for even Real Madrid. I don't think Beckham is that level, and different player altogether. But I'm just saying, as a player, as a leader plus player, maybe Beckham is even better. But as a player, I would say Lampard. Lampard में leadership skills, I actually reckon that नहीं उसमें इतने नहीं थे comparatively. Did Zidane was robbed of Ballon d'Or? No, he wasn't. यार यार आप अपना अपना बेसिकली कंट्री का फाइनल जो आप वर्ल्ड कप जीतने वाले हो, यस ही गॉट देम टू द वर्ल्ड कप फाइनल, यू कैन ऑलमोस्ट से दैट, यू नो इट वाज हिम, रिबेरी एंड जिडान वर क्रेजी मैन। लेकिन सच में बोलूं, इट वाज बेसिकली जिडान का जो हेडबट नहीं होता ना, आई जेन्युइनली फेल्ट फ्रांस वुड हैव वन द वर्ल्ड कप। दैट वाज अ मोमेंटम चेंज हुआ ना, नॉट जस्ट 10 men, इट वाज अ मोमेंटम चेंज, एक साइकोलॉजी चेंज हुई वहां पर, जिडान ने लिया वो, और बिकॉज ऑफ दैट पनिशमेंट है। Yes, punishment itself is not winning the World Cup, and he deserved the player of the tournament and the Ballon d'Or. You can say that, but come on, भाई, whether Materazzi ने गलती की थी या जो भी बोला था हमें पता है, the fact is Zidane shouldn't have done what he did. But again, मैच कैसे चल रहा है भाई लोग, अगेन मैच में कुछ मेजर कुछ नहीं हो रहा है, इसलिए मैं बीच बीच में कम रिएक्ट कर रहा हूँ, आई एम टेकिंग कमेंट्स मोर। 4 मैच और अर्जेंटीना विल हैव द लॉन्गेस्ट स्ट्रीक टू गेट विन, दैट इज द बिगेस्ट थिंग राइट, 4 मैच और कर सकते हैं क्या, स्पेशली आफ्टर दिस 2 month गैप अगेन, दैट इज माय ओनली क्वेश्चन। रॉबिन, स्नाइडर, रिबेरी, ड्रॉगबा डिजर्व बैलन डोर, हाँ 100% अग्री विद दिस, 100% अग्री विद दिस। उसको उसमें लैम्पार्ड भी दो जोड़ दीजिए, मैं तो बोलता हूँ, यू नो अगेन पीपल विल से भाई आप लैम्पार्ड को दे रहे हो तो जेरार्ड को क्यों नहीं दे रहे हो। देखिए भाई, लैम्पार्ड इन कपल ऑफ सीजंस was the best mid, only for those couple of seasons, मैं सच में बोल रहा हूँ, was the best midfielder of all time वाले ब्रैकेट में, only for those couple of seasons he was absolutely crazy. Okay, yes, throughout भी इतना consistency किए थे, लेकिन I think for a couple of seasons he was like next level bro. John Terry, Lampard, Peter Cech, Drogba, they were absolutely fantastic, between 2005 and 2010 वाला जो seasons थे ना, wow. अर्जेंटीना पोर्चुगल कंबाइंड, ओके, ये मैं, चलो स्टार्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं क्विकली। मेक अ टीम ऑफ अंडररेटेड प्लेयर्स, भाई ये बहुत ही थोड़ा सा ग्रे एरिया हो गया ना, बहुत ही ज्यादा ग्रे हो गया। नाइकी 11, ओके दैट्स इंटरेस्टिंग। नाइकी और एडिडास, आई एम नॉट अ ब्रांड्स गाय रियली सर स्पीकिंग, मतलब मैं दिखावे में ज्यादा बिलीव नहीं करता। यस आई डेफिनेटली लाइक ब्रांड्स, आई एम नॉट सेइंग आई डोंट, लेकिन फॉर मी जनरली इन टर्म्स ऑफ इन टर्म्स ऑफ किट्स मैं बता सकता हूँ एडिडास एनी डे ऑफ द वीक इन टर्म्स ऑफ किट्स, जो फुटबॉल किट्स होते हैं, मतलब अगेन आई एम नॉट लाइक एज इन बहुत ज्यादा नहीं हो। बट यहाँ पे कुछ लड़ाई हुई है यार, दोनों मैच में हो रहा है कुछ, एक सेकेंड। ओके, इंग्लैंड जर्मनी कुछ तो लड़ रहे, एक फ्री किक दिया गया है बिलीव, लेकिन देखते हैं क्या हो रहा है। कांटे वर्सेस मैकेलेली, ये डिफिकल्ट है, वेरी डिफरेंट प्लेयर्स बट वेरी वेरी क्रूशियल प्लेयर्स दोनों ही टीम्स के लिए। देखिए भाई, प्राइम कांटे एनी डे, लेकिन ओवरऑल बिकॉज ऑफ मैकेलेलीज फिटनेस एंड बिकॉज ऑफ मैकेलेलीज लॉन्जेविटी और बिकॉज ऑफ मैकेलेलीज एक्सप्लॉइट्स विद द नेशनल टीम, मैकेलेली ओवरऑल जनरली मैं बोल रहा हूँ, नॉट फॉर कंट्रोवर्सी, जस्ट फॉर फन ब्रो, बिल्कुल बिल्कुल। कैसेमिरो वर्सेस फेबिन्यो, ओके, पर्सनली मैं जाऊंगा कैसेमिरो। कैसेमिरो इज आई बिलीव, यस फेबिन्यो इज अ सुपर्ब शॉट ऑन हिम, और भाई ही इज लीथल व्हेन इट कम्स टू हेडर्स एज वेल, लेकिन कैसेमिरो आई थिंक उसका पासिंग काफी अंडररेटेड है। ये मैं जाना, अगेन आई एम अज्यूमिंग, आप अभी के लिए नहीं पूछ रहे हो, अभी के लिए फेबिन्यो एनी डे, लेकिन कैसेमिरो फेबिन्यो ऑफ कोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट मे बी अ कपल ऑफ इयर्स जब दोनों एब्सोल्युटली प्राइम में थे ना, उस समय का बोल रहा हूँ मैं। ऑल टाइम एडिडास 11 में कौन कौन होंगे यार, मुझे तो पता ही नहीं आप किसका बात कर रहे हो। एड्रियानो बोलते हैं मेरे डैड ने मेरा नाम, ओ इंटरेस्टिंग, वाओ इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग है भाई आदरी, नाइस नाइस। नहीं उनका एवरेज तो नहीं बोलूंगा डेरिन, आई थिंक हिज वर्क रेट एंड जनरली हिज शॉर्ट पासिंग इज एक्चुअली अंडररेटेड, जनरली इवन लॉन्ग पासेस
नॉट अबाउट जस्ट सेट पीसेस, बहुत अंडररेटेड है, लेकिन आई एग्री मैन, नो वे क्लोज टू लैम्पार्ड यार, अपार्ट फ्रॉम सेट पीसेस, सच में बोलता हूँ तो। नो प्रॉब्लम ब्रो। ओ हैप्पी बर्थडे भाई एवरीवन, हो जाए भाई हैप्पी बर्थडे टू कुणाल, मच मच हैप्पी 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 बर्थडे टू यू, एब्सोल्युटली ब्रो। तो भाई ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग ईयर यार कुणाल, आपके लिए एब्सोल्युटली हैप्पी बर्थडे टू यू। लेकिन बर्थडे सॉन्ग यार मैं तो नहीं गाऊंगा आप लोग गा लीजिए अपने स्ट्रीट पे, बट यहाँ पे गोल होते होते बच गया यार इटली का। इज दैट अ पेनल्टी? इज दैट अ पेनल्टी? What do you think? How far will Asian teams go for this World Cup? Again, I really doubt. सच में बोलूँ तो I wish South Korea and Japan kind of surprise us. लेकिन I think because of their tough groups doubt लग रहा है। हाँ अब Araho is not there ना, वहाँ पर एशियन टीम एक, तो looks like उस ग्रुप में हो सकता है कुछ, who knows. One big news या बिल्कुल वही वही मैं बोल रहा था, he set to miss World Cup looks like absolutely. पैटो जैसा फाइनेंस प्लेयर मैं बहुत रेयर देखा। He was super, bro. But I remember Pato scoring one of the fastest goals ever or something like that. And for Milan, obviously being a Milan supporter as well, but he was superb. लेकिन वही है, मतलब it was too short a sample space, too small a sample size to go for him. तो इसलिए मैं एड्रियानो बोला था। ओके 2006 वर्ल्ड कप फाइनल वाज द कोल्डेस्ट फाइनल। मैं तो बोलता हूँ 2006 वर्ल्ड कप वाज वन ऑफ द, मेरे लिए मतलब एज अ स्पेक्टेटर, एज अ व्यूअर, जर्मनी में जो सीन्स थे, जर्मनी में जो बीच में ग्रेट काइंड ऑफ स्टेडियम था, बीच में टीवी लगा दिया था उन्होंने, बहुत बड़ा सा ऊंचा, आई रिमेंबर दैट, बहुत ही अच्छा है एनवायरनमेंट एंड मोस्ट ऑफ द स्टेडियम्स यार, क्रेजी। एंड आई रिमेंबर द फर्स्ट गेम, एवरीवन गो एंड वॉच 2006 का पहला गेम, वाओ व्हाट अ गेम, 4-3 और समथिंग हुआ था, पहला ही गेम है जर्मनी का, वाओ। Madison should be in World Cup squad. Yes, you can argue, लेकिन I believe the reason is because Madison, as much as Grealish has not done well, Grealish का एक role है winning free kicks and he's running that left channel. और Mason Mount compared to Madison is better defensively. और that's why probably Southgate वो चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैकलेल इज बेटर आई फील, या मैकलेले ओवरऑल एनी डे ऑफ द वीक, लेकिन वही है, एक मैच के लिए पिक करूंगा ना तो कांटे लूंगा यार कुनाल, सच में बोलूंगा तो। अंडररेटेड मैटिच, या मैटिच भाई, मैटिच के सीजन, मैटिच ऑफ 2014 भाई, जो याया टोरे के साथ किया था ना भाई, मैन सिटी के साथ, वाओ दैट वाज ब्रिलियंट। 2014 जनवरी की बात है ये, चेक करिए मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, आप समझ जाएंगे। नहीं 2014, हाँ 2014 जनवरी की बात है, करेक्ट। But yeah, seriously, if Drogba wouldn't have gone to AFCON, he would have broken all-time record for EPL. Yeah, definitely. Without, I think he got 29 goals without going to AFCON, bro. Absolutely. Therein, you're absolutely right there. With going to AFCON. अंश ठीक हो यार? होप्स तो यही है कि वी शुडंट लाइक डू अ, व्हाट डू यू से, मतलब अ रैग्निक काइंड ऑफ सीजन फॉर चेल्सी, वी रादर डू अ कॉन्टे काइंड ऑफ सीजन। होप्स तो यही है, लेकिन वो ज्यादा हो जाएगा, आई नो। आई होप वी डू एटलीस्ट टॉप 4 में आ जाए तो भाई दैट्स मोर देन इनफ फॉर मी, ट्रस्ट मी। हाँ अगर हम लाते हैं मे बी टॉप 6 विद अ कप, आई टेक दैट, सच में बोल रहा हूँ भाई। रमीरेज और कांटे 100% कांटे। रमीरेज वाज ब्रिलियंट, लेकिन कांटे यार, आई हैव टू से रमीरेज का दोनों का पासिंग में इश्यू है, एवरीथिंग एल्स इज सुपर्ब, लेकिन भाई कांटे हैज मोर इंजन देन रमीरेज इवन यार। रमीरेज वाज सुपर्ब और चेंज ऑफ पेस के लिए, लेकिन बट कांटे मैन, एनी डे मैन, कम ऑन। And let's get to 100 likes. Absolutely. Your views on Pavard as right wing back in back five of France yesterday. By absolutely negative. 100% संकेत, मैं नहीं अग्री करता with that, लेकिन जैसे हमने कल भी रिएक्ट किया था that फ्रांस की इतने सारे ऑप्शंस है ना, that at some point is like which combination is right, वो ट्राई करते करते रह गए बस डेशॉम्स ऑफ फ्रांस। Ashley or Evra, please choose one. 100% Ashley Cole. With all due respect to Evra and all Manchester United fans as well, don't get disrespected. Evra in modern day football, in modern day Premier League, is one of the best left backs. और you can argue थोड़ा underrated भी है for a neutral. लेकिन भाई Ashley Cole is one of the goats, and I don't take goat so easily. भाई Ashley Cole is one of the goats in left back. तो for me, arguably again, Roberto Carlos और Ashley Cole, आप हंसोगे, मैं बोलूंगा Ashley Cole defensively was better. Yeah, I'm right. You just follow the football live, देखा है मैंने दोनों को। Cristiano Ronaldo, the way he talks about Ashley Cole is next level, bro. Trust me. Ashley Cole for the Invincibles, wow, unplayable, bro, unplayable. Ashley Cole any day of the week.
Um, Eric Abidal, oh man, big respect to Eric Abidal, by the way. Eric Abidal, so he had a major concern health-wise, right? Or he had to basically, undergo operation and whatnot. Um, and he was playing with that. I was playing with that. और वो एक ऐसे बंदे थे. Talk about Ashley Cole being a goat for the footballing ability. Eric Abidal was a leader. Again, leadership में Eric Abidal को भी बता सकते थे अपन. He could play left centre back as well as left back, first of all. Or he was primarily a left centre back मेरे लिए. But he had a superb kind of a pass जो underrated था. He had a long pass on him. और of course that steely element जो था, बहुत बोनी थे, लेकिन बहुत steely एक element था in terms of the game play, उनका strength, heading ability. भाई Eric Abidal was superb. He was like, कैसे बोलूं मैं, मतलब he was like 10 times better than Marcos Alonso playing at left centre back. Simple as that. जो heading ability रहता है set pieces में, he was a threat, but at the same time much better on the ball, much better reader of the game. Of course he had a long pass on him as well, very good. टाइम स्टैम्प मेरा भाई नीतीश, हंगरी और इटली वाले गेम में है 24:55 एज वी स्पीक. सो 24:56, 20:57 हो गया हंगरी इटली में. और सोनी 10-2 जो है जिस पे इंग्लैंड जर्मनी आ रहा है, मेरा है 23:50. तो वहां पर 1 मिनट पीछे. अरे यहाँ पे वी गॉट फतेह इन द हाउस यार. मैं इसलिए बेस्ट 11 के लिए वेट कर रहा था. अरे फतेह, लॉन्ग टाइम नो सी ब्रो, हाउ आर यू? How are you, man? How are you? I hope you can see me. I hope you can hear me. Yeah, I can see you fine, just absolutely fine. I hope everyone else is able to see Fateh as well. To Fateh, what's keeping you busy? What's up? I've not been following the Nations League, man. I mean, I think I have to ask you, Oh, like, what's going भाई on? गोल होते तो बच गया यार. स्टर्लिंग का गोल होते तो बच गया. नाइस सेव यहाँ पे So, बाय द जर्मनी गोलकीपर व्हिच वी नो टुडे इज टर्स स्टेगन. बट हाँ, नेशंस लीग में ये हो रहा है ना फतेह, तो आपकी इटली को बेसिकली चाहिए एक विक्ट्री आज. अगर इटली जीत okay, जाती है हंगरी के साथ, तो दे विल okay, बी इन द नेशंस लीग सेमीफाइनल्स व्हिच इज टू बी हेल्ड नेक्स्ट ईयर. So out of next 16 year. teams, 4 teams qualified for semifinals, right? So Okay, on top of the group दो right now is Hungary, और हो रहा है हंगरी के घर में. और हंगरी अगर एक पॉइंट भी लेती है, that's enough for Hungary for them to top the group. So okay, Hungary need a draw, but Italy need a win in the same game. England Germany तो टाइम पास का गेम है. It's all honestly the last big game before the World Cup, and of course it's England Germany, so at Oh, Wembley. Italy scored. Oh man, this is going to be a goal. Oh man, Fateh, grand entry. Fateh का गोल हो गया भाई इटली का. Oh man, that is a That's goal यहाँ awesome. पे. लेकिन Ter Stegen doing a That's good one. Reece James Raspadori. taking the corner. Oh man, I can't believe it. Fateh आते ही गोल हो गया भाई इटली का वो भी. Imagine Fateh. See, I think that's why I'm I saying think आ it's, जाओ. see, I think we are missing out on the World Cup. So why not win the Nations League? I mean, I have not followed it, but Raspadori again. again, Raspadori, Back to absolutely. What a back great goals bro signing for उसके लिए. Napoli. You know what? Raspadori scored a brilliant goal against England last game में. So for him to get this, by the way, Hungary playing out from the back looks like, or Hungary, I don't know what they were doing, right? Again, Nonto, why Nonto ko? People, I said it. I have to give Nonto the assist. Come on, and Yeah. Fateh I knows think my he love for almost Nonto. won a penalty, and I think you called it when you saw Nonto last year in the Nations League, was it? या समर में ही हुआ था. कितने 4 महीने पहले हमने देखा था पहले नॉन्टो. या जस्ट 4 months. It seems like ever. 4 months I thought it back was we last year. last year, I think, did we talk about Nonto? Maybe we did, but No, yeah, no, no. definitely in the Last year summer. was the Euro, I think. Was it? I don't know. Like, No, समर में ही था. नेशंस लीग कवर कर रहे थे अपन. लेकिन नॉन्टो हैज गॉन टू नीड लीड्स ब्रो. दैट्स नॉट गुड बीइंग अ चेल्सी फैन, बट इट्स एनीवे. ओके, यहाँ पर फतेह आ गए. फतेह से पूछते हैं, which is the UCL final you enjoy the most except 2012 and 21? That's as a Chelsea fan. For फतेह 2010 नहीं इंक्लूड कर सकते, लेकिन 2010 से बोलिए, उसके बाद का. 2010 के बाद में फतेह आपने कौन सा चैंपियंस लीग फाइनल सबसे एंजॉय किया? 2010 के बाद क्यों? Why not? Like the first Champions League final that I saw हम्म. was the first one that I saw was Bayer Leverkusen versus Real Madrid, the Zidane goal, the glorious goal, and that was a great final. But the first final that I followed was Manchester United against Bayern Munich. So that was 99. again final 99. But Same here, bro. That was the first. That was my first final. Just to let you know. yeah, and people talk about how all English final, all Spanish final. I think there's only been one all Italian final, and I loved it. AC Milan versus Juventus. As a kid, Inter were knocked out in the semi-finals, but I love that final. There were so many good players. Defenses were so good,
and it went to penalties at Old Trafford. I think that is one of my sort of favorite matches. Look, you're an AC Milan fan. I have to mention Istanbul. Why will I not mention Istanbul? Like, to I have to to rub him cause in me because pain. you are having such a nice time, Ankit, and I'm so jealous. Inter are doing so badly. AC Milan, your AC Milan are doing so well. So I have to mention Istanbul. हाँ But लेकिन I think, नेक्स्ट चेल्सी के साथ है. दैट इज द इंटरेस्टिंग पार्ट. नेक्स्ट चेल्सी अब yeah, and Chelsea प्लेइंग have to मिलान. win those games. I'm really या hoping that एग्जैक्टली. Chelsea win, at least get 4 points of those games. I hope for six, so that Milan struggle. But yeah, I think this last decade, my favorite final. I don't think we've had very good finals, isn't it? I enjoyed the Bayern Dortmund game, but okay, I didn't enjoy it because I was rooting for Dortmund. I don't think we've Robin had. Robin get a deserve that goal though in that match. But I Trust me. felt bad for the way Dortmund, with the हाँ, the Götze way it and happened, all yes, that. but Robin जो face किया ना, Robin after 2010 के World Cup में, he Yeah, yeah, deserved yeah. it. Let's be honest. He deserved it. Yeah, yeah, absolutely. I think he deserved it. That was one final. I enjoyed watching Juventus lose 3-1 to Barcelona, the MSN final. So that was good. Okay. What else? Yeah, I think that's Yeah, the I only think one. that's enough for now. But anyway, भाई ये ना कार्ल हाइंस रूमनेगे was a legend. But again, मैंने देखा नहीं उन्हें because again, भाई 1980s में मैं literally as in literally was doing this. You know what I mean, right? In terms of Yeah. अंगूठा था मुंह में यार. मतलब that is too much. But हाँ, But definitely but later on we know that he's a legend of the he's a sport. Bayern and Inter legend, and I think he loves Inter. So anytime there was talk about Inter Milan, he would talk with a lot of respect, with a lot of fondness. And I think 80s, with Rummenigge, 82 Germany made the final, 86 they won the final. I don't think he was there in 1990, but yeah, I think he was there in 82. I think so. I don't know about 86 when Argentina won it. So, but yeah, great player. Yeah, but West Germany, man, West Germany was different class altogether. Yeah, You have and to say. for me that has to be Ballack because I followed Ballack from his Leverkusen days. So was he at Balak, is it? Kaiserslautern too? I don't याद know. है I याद है think फतेह Kaiserslautern. फतेह वाज देयर बाय द वे भाई एवरीवन जो देख रहे हैं ना भाई मैं और फतेह नेशंस लीग की बात है आई थिंक प्रोबब्ली द सेम मैच कोइंसिडेंटली भाई नॉन्टो जिसमें हमने आइडेंटिफाई किया था एंटायर वर्ल्ड डिड नो अबाउट नॉन्टो मैं बोल रहा हूँ उसी गेम में हमने किया था एक ऑल टाइम चेल्सी 11 आपको याद है Yes, 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 तो yes, वहां yes. पर यू वर सरप्राइज दैट आई पुट बैलेक ओवर मैकेलेली बहुत लोग Yeah, सरप्राइज होंगे तो yeah. आई डिडंट पुट मैकेलेली आई पुट I बैलेक remember that. लेकिन आई आल्सो सेड एक और चीज आपको याद है तो बट आई वुड टेक अ प्राइम एशियन ओवर बैलेक a prime Asian. A Prime prime Messi. Asian जो actually and to be honest he actually started games over Ballack when he was at his prime. जब लियोन से जब आया था जब वो Okay, 2 सालों के लिए between 2005 and 2007 there were okay, times when Ballack did not start and Asian started. This is a real thing because Asian में okay. स्टील ज्यादा था यहाँ पर हंगरी का गोल होने वाला है बचा लिया भाई कैसे ना तैसे इटली ने I think लेकिन कोई नहीं Italy will win this. I think we are going to, because याया we're टूरे missing the World मैकेलेली you Cup. cannot compare bro two different players altogether Yeah. कुणाल इट्स अनफेयर भाई एक है अपना जायंट गुंजालेज एक है अपना भाई एंगोलो कांटे का भाई तो आप नहीं बोल सकते साथ साथ में याया टोरे वाज मोर लाइक समवन हु ग्लाइड्स थ्रू द बॉल समवन हु इज अ बेटर प्लेयर ऑफ द बॉल मैकेलेली इज अ डिस्ट्रॉयर तो आप नहीं बता सकते ना Makalele, I नॉट don't think कंपेयर he even scored a goal. Did he ever score a goal, या Makalele? ही I डिड think अरे one, मेरे हुए one में goal. आपने देखे थे मैंने वही क्वेश्चन पूछा था फर्स्ट सीजन हुए में तो डेफिनेटली मैकेलेले डिड यार 2 गोल मारे थे चेल्सी के लिए जस्ट टू लेट यू नो In all the 5-6 years, yeah. एक पेनल्टी था वो भी पेनल्टी में पहले मिस किया रिबाउंड में मारा ठीक है What a player. बहुत मैकेलेली वाज डिफरेंट एलिमेंट लेकिन हाँ याया टोरे फॉर पीपल हु मे नॉट नो याया टोरे इन 2006 चैंपियंस लीग फाइनल he started for Barcelona as a center back not many people know this is आज का trivia He did? yes He played in against 2006. Arsenal Do you mean 2006 or do you mean 2008? 2006 जो आर्सेनल Fine. दिस गाय गॉट सेंट ऑफ ना फर्स्ट मिनट्स में आर्सेनल का कीपर क्या नाम है उसका Lehman. लेमन हाँ Are you sure याया that टोरे Yaya Toure was at Barcelona back then? या I think याया टोरे was 2009 he Barcelona was there. और एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट याया टोरे जब पेप बने थे ना दैट्स व्हाई याया टोरे लेफ्ट ही कुडंट पेप डिडंट अलाउ हिम टू एक्सप्रेस हिम एज मच एज दैट वाज वन ऑफ द रीजंस राइट But maybe, are you sure? Like you must. सनी बासिन ऑफ गोल यार दंदनादन गोल नो वे करो ना आप सादी सर बाबा और एक वीडियो बनाओ हो सके तो टॉपिक जो प्लेयर बहुत कुछ कर सकते
थे, बट इंजरी इनकंसिस्टेंसी बिल्कुल यार करते बहुत, मतलब वही है, पीपल हु डिड नॉट अचीव मच काइंड ऑफ थिंग। इनफैक्ट हम अभी भी कर सकते हैं ना साथ में, मे बी यू एक्सपेक्टेड दोस पीपल। इनफैक्ट मैं यहाँ पर आदरी में फतेह का नाम जोड़ना चाहूंगा, एंड दिस इज फॉर एवरीवन वाचिंग। बाई चांस आपको फतेह के बारे में मालूम नहीं है भाई, तो फतेह इज समवन हु एक्चुअली स्टार्टेड वाचिंग week in football even before me, and that's a fact. So by everyone, Fateh OP ho jaye in the chat first of all. He knows, I think, he for me, and again, not many people know it. Again, it's easy to kind of big up to every content creator, the big up to everyone there जो भी आप नाम लियो, absolutely much respect, and everyone knows that. लेकिन भाई फतेह फॉर मी हैज टू बी रेस्पेक्टेड मोर इन द फुटबॉलिंग कम्युनिटी। तो आज मैं ओपनली बोल रहा हूँ लाइव में, क्योंकि फॉर मी फतेह इज वन ऑफ द मोस्ट नॉलेजेबल पीपल दैट आई नो पर्सनली इन इंडिया अबाउट फुटबॉल। ठीक है, तो फतेह नहीं डेफिनेटली यार, मतलब when especially is difficult to find ultras who actually know the 90s of football and early 2000s, yeah, and you're one of them. And just not the internationals, week in week out वाला जो चीज होता है ना, that is very rare. But हाँ, Neuer save meanwhile, okay Darren, thanks for sharing bro. किसका सेव किया मैंने मिस कर दिया था, लेकिन ये कर सकते फतेह, तो पीपल हो जाए, एवरीवन लेट मी नो, एवरीवन इन द चैट। बहुत अच्छा पूछा, आई थिंक ये अंडररेटेड 11 एनीवे, आई थिंक समर्थ भी पूछ रहे थे मुझसे, और अभी आदरी ने भी बोला है, तो अभी हो जाए। तो एवरीवन लेट अस बेसिकली डू एक 11 ऑफ पीपल, दिस इज अ 11 ऑफ क्या बोलेंगे, मतलब अंडर अचीविंग 11 बोलेंगे, underrated 11, undervalued 11, अंडर अचीविंग का कर देते हैं, और अंडर अचीविंग 11, हाँ 11 ऑफ ऑल टाइम, ओनली आफ्टर 2000, बट नहीं तो लोग सोचेंगे कौन है। फेयर enough। ठीक है, ये अंडर अचीविंग 11 ऑफ ऑल टाइम। ठीक है, अंडररेटेड थोड़ा सा सब्जेक्टिव हो जाता है, अंडर अचीविंग यू नो द नंबर्स, सो यू कैन स्टिल काइंड ऑफ नो डिटरमाइन एवरीवन इन चैट। ठीक है, एवरीवन हो जाए। हाँ, सपोर्ट्स भाई फतेह हमने एक्चुअली कन्वर्ट कर दिया फतेह को, ही इज अ चेल्सी फैन नाउ, वेरी मच सो। लेकिन ऑल जोक्स असाइड, ही इज एन इंटर मिलान अल्ट्रा ब्रो। और अगेन लोग मुझे पूछ भी रहे थे इंटर मिलान में कौन है भाई। इंडिया में मैं तो किसी को जानता नहीं हूँ जो इतना जानता है अबाउट इंटर मिलान देन फतेह, सिंपल एज दैट। ठीक है, तो भाई सब लोग अगेन फतेह ओपी हो जाए, एवरीवन इन द चैट। ओके चलो, हाँ ओवर शॉर्ट अबव ये भी बहुत अच्छा है, टिमो वर्नर ये भी मैं कर रहा हूँ, पीपल हु एक्चुअली अचीव मोर देन व्हाट यू थॉट दे वुड। ठीक है, लेकिन अंडर अचीविंग करते पहले भाई, मैं साथ साथ में कर रहा हूँ, तो गोलकीपर से शुरू कर सकते हैं एवरीवन यहाँ पर। Meanwhile, because you're a Chelsea fan, I have to mention Carlo Cudicini. I thought there were these 1 or 2 seasons that Cudicini had, that just because I think there was Czech, and it's so weird. Like in the Italian national team we had Buffon, so Cudicini never really got to sort of play for Chelsea and to play for Italy. But I thought there were these 1 or 2 seasons when he was mind blowing. Exactly. और वो लीडर भी थे, by the way, he was a very good leader. तो it was very surprising. Having said that, फतेह बहुत इंटरेस्टिंग है, नो इट्स ऑलमोस्ट लाइक वी आर बीइंग टू गुड ईच अदर फतेह। और आप बोल रहे कुडिची ना, मैं बोल रहा हूँ भाई व्हाई नॉट टोल्डो, exactly what I was thinking. Like, oh my god, and because of Buffon, अरे गोल होने वाला है, नॉन्टो कम ऑन, अरे भाई नॉन्टो का हेवी टच कोई नहीं, लेकिन in Euro 2000 हाँ Toldo was just that semi-final. If anybody wants to watch how a goalkeeper should be, you should just watch that Holland versus Italy semi-final. I think he saved 2 penalties in regular time and then saved 3 penalties in the shootout. And there was just, he made so many saves. I mean, he was the reason why Italy made the final. I think that tournament. या सो भाई यहाँ पर हम जा रहे हैं 4-4-2 फॉर्मेशन चले क्या? 4-4-2 चलो 4-4-2 हो जाए एवरीवन। तो मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर नहीं कर रहा, जब आधा टीम बन जाएगा ना तब स्क्रीन शेयर करेंगे। बट सब लोग ये याद रखना, हम लोग ये कर रहे हैं, सब लोग अपने कमेंट्स भी दीजिए। तो भाई अगेन मैं टोल्डो ऐसे ही बोल रहा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई वाजंट सीरियस इन दैट गोलकीपर, लेकिन ही वाज वन ऑफ देम बिकॉज़ ऑफ बुफॉन। लेकिन कार्लो कुडिची नहीं बोल रहे फतेह। सब लोग इन द चैट, एवरीवन डू लेट मी नो हु वाज योर मोस्ट अंडर अचीविंग, लेकिन मतलब could have done more if given more chances, or he could have done more himself, he had more ability, it can be either or। ठीक है, तो गोलकीपर से शुरू करें भाई गौरव, एवरीवन इन द चैट, वी ऑलवेज स्टार्ट, कोई भी 11 बनाते हैं हम गोलकीपर से शुरू करते हैं, 4-4-2 कर रहे, तो एवरीवन इन द चैट भाई सब लोग हो जाए। गोलकीपर हु probably should have been doing more than what he did, but I think Fateh is right, because goalkeeper generally is a position जहां पर
You either start or don't start. Start, simple as that. You cannot come as a sub. So it's only fair that a Kudicini or Toldo is actually in that conversation. Maybe Yeah, even a Kevin another Trapp. Maybe Trapp Kevin for Trapp, Germany. absolutely. I think Neuer is just, not लेकिन वो allowed him खत्म नहीं किए, हाँ, but he's not completed his career, so career. underachieving, you can't say that he's You underachieving. know, uh, Spain had this goalkeeper Santiago Canizares, and I think Iker Casillas sort of saw oh, him. Santiago Canizares, Yeah, and Canizares, he played those Valencia. two, yeah, Champions League finals with Valencia. He was their captain, but he never could get into the Spanish national team. I mean, there was this little moment, I think, around Euro 2000 when नहीं, he came. I'll tell you why. तो Santiago Canizares, as much as I remember ना, उनको उनके पास एक crazy था ना, he used to just snag all sudden से, तो he used to Okay. kind of all of a sudden, make that blunder big time, or just get a red card like a layman. He was like a Yeah. Jens Yeah. Lehmann, जैसे थे ना, We one can of talk those about Jens characters. Lehmann also. Yeah, yeah, absolutely. हाँ, Jens Lehmann was like, on his day he was very good, but there were Very good. days when, oh my god, that Yeah. kind of thing. Either He's too crazy. आपके nature में the way he did not listen to the referee and things like that, or just performance में. तो इसलिए मैं उनको नहीं बोल रहा हूँ. तो I would go again, underachieving बोल रहे भाई. Underachieving can be, again, for people who do not understand, underachieving can be अगर वो they have not reached what their potential was. ठीक है, maybe because of themselves or because of their coaches or because of their managers not picking them enough in the national team or club. Julio Cesar as a goalkeeper underachieving थे. Oh, what a chance, bro. Hungary का बच गए Italy just about. And Donnarumma, talking about goalkeepers, I think that he came and then he went back. I mean, indecisive. See, caught out. Like, what is he doing? Donnarumma, come on. चलो, तो मैं यहाँ पे अभी के लिए डाल दिया हूँ कुडिचिनी. Kudichini, I think, is underachieving Yeah. because I think he made the wrong move going to Tottenham. First of all, that was a big wrong move मेरे लिए after Chelsea. Julio Cesar as goalkeeper is a good shout, but again I thought Julio Cesar ने काफी किया, मतलब based on his potential, not rating him low. Yeah, I mean, with Toldo, the thing is that he played for Fiorentina and he, I think, never won the league. He then played for Inter Milan. He never really won the league when he was a starter, but he had that Euro 2000 tournament. But he was highly Correct. rated. Yeah, There but is that Kudichini, जब yeah, Kudichini का prime था, तब Chelsea इतना prime नहीं था generally, so that's why Kudichini. yeah, that is why I would put Kudigini there because Julio Cesar won the Champions League with Inter. If you won trophies, I don't think we want to put you here in this. Like, Underachieving, yeah. I mean, Kudigini बिल्कुल. won, but there was a moment when you would see Kudigini and you thought, okay, wow, this guy is going to just make it. And then suddenly I thought it was just that check came in and, there were just no opportunities for him. And I think he overstayed and he should have, probably come to Italy, played as a Van der Sar. I think he won the Champions League with Man U. I mean, he's और highly प्लस ये वैंडर सार का मैं इतना rated. नहीं, आई अंडरस्टैंड फ्रॉम वेयर मोजो जो इज कमिंग. मैं सिर्फ ये ऐड करना चाहूंगा दैट वैंडर सार, यू कैन से फॉर अ ग्लोबल व्यूअर ही वाज अ लेट ब्लूमर. विल दैट बी फेयर No, फॉर अ but ग्लोबल व्यूअर? I'll tell you about Juventus. When Juventus signed Buffon, they already had Van der Sar, and नहीं, initially दैट्स व्हाई आई Buffon सेड couldn't फॉर start. दैट्स व्हाई आई सेड फॉर अ ग्लोबल व्यूअर, क्योंकि Yeah, and जो लोग सीरिया नहीं yeah, देखते थे उनके लिए बोल रहा था बस. but then I think Van der Sar won the Champions League with Ajax in '95. I'm not so sure. I think he was there or something. Did he You'll win have to it check. in 95? Was he there? I don't know. You'll have to check. I Let mean, me he's just had check a it up massive quickly. career. यहाँ पे again, I don't exactly remember the back of my mind 90s. क्योंकि again, like I But I said, remember, मैं 90s he में. was the starting goalkeeper for the Dutch in the '98 World Cup. So he was highly rated. He was one of the You're best right. You're goalkeepers. right. भाई इसलिए फतेह हो जाए भाई. Van der Sar was there in the Ajax squad in Yeah, 95. But was he absolutely. starting? I doubt. I don't know about that, but Yeah, I he's doubt got it. Champions League with Man U. He played for Juventus when they played those three Champions League titles. He was there. I think '98 World, the तो '98 मतलब Champions अंडर League. अचीविंग तो नहीं बता सकते I don't think श्योरली. he's तो चलो, underachieving. He's let's move on to defenders. Let's move on to defenders. By people, underachieving center backs of all time, you felt that their potential was more than what they achieved. Uh, I have one name in my mind, but even he's won the Champions League. that's the thing. Then. I was going to say Lucio. Yeah, Lucio, but he no, I think he achieved whatever. Like he won the league, the Bayern और with शायद Bayern. कॉन्फेडरेशन कप भी जीता है शायद, जहां तक मुझे याद है. World Cup bhi jeeta. 2002, he was in the World Cup team, man. 2002 he was there. Yes, sorry, my Yeah, bad, you my must bad. check. Totally missed Yeah. it. He was there. He was there. Mascherano, I think he did Yeah, lots. नहीं, लेकिन क्लब लेवल पे तो बहुत सारा अचीव किया यार. club level pe to bahut. बहुत सारा अचीव किया है. Yeah.
Who could it be then? Abidal, Eric Abidal, अगेन क्लब Eric लेवल पे Abidal किया है would भाई. be. Hmm. अगेन डू Who सजेस्ट अस नेम्स. मतलब who अगेन could be? अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट अ सेंटर बैक ब्रो, लेकिन यार ही स्पॉइल्ड हिज करियर, दैट काइंड ऑफ थिंग, जो है भाई Who? काफी है फुटबॉल में. या मे बी लाइक आई नो दिस गाय इज वन द वर्ल्ड कप, बट आई थिंक ही ओवर अचीव ब्रो. आर्यन विद नो डिसरेस्पेक्ट. One player as because again Chelsea, because I'm thinking like I mentioned this before also. We never talk about Alex. The Brazilian Alex. There was a Alex, time when, yes. yeah, and he was, I thought he was making blunders or whatnot because he came when Felipe Scolari was there or whatever. But then there were times when Alex नहीं, was you have a up. point. The reason is भाई because of AVB, Nicolas Anelka and Alex did not win the Champions League. उसी Oh, जनवरी में he told them oh, Alex will yeah. be PSG. So Alex has to be there. Alex has to Alex be has there to for be me. there. I think Alex तो he भाई तुराम तो भाई no, Thuram वर्ल्ड has कप won a World Cup. वर्ल्ड कप 98 में बहुत जीते हैं भाई. और प्लस इवन Euro इन 2000. 2006 he was there in the final, man. He was there in the final. Yeah, He he came won back. Euro 2000 also, and he was highly rated at Exactly. Parma, highly rated at Juve, Smalling. अंडर Barcelona. अचीविंग. यू कैन आर्ग्यू व्हाई नॉट, मतलब पोटेंशियल तो था बंदे में, लेकिन ही शुड हैव अचीव्ड One मोर देन man दैट. that we talk about now that he's mentioned Smalling is Yap Stam. I mean, he achieved a lot. He ही won अचीव्ड अ the लॉट. Champions League with Manchester United, but that was that temperament, where he left Man U, went to Lazio, He could then have he done went. a lot more in England. He could have done a lot more in England, and he was very good. On his day, he was almost unplayable, one of the best defenders. But I don't कल think he कल had. हमने एक्चुअली एक 11 किया था कल ही, वॉच अलोंग में साथ साथ में, बाय द वे. उसमें मैंने शाउट आउट दिया था दैट द बेस्ट लीडर्स ऑफ ऑल टाइम, बेस्ट 11 Yeah, लीडर्स ऑफ ऑल टाइम. तो उसमें definitely. मैंने उसको शाउट आउट दिया था. Hmm. बट अगेन आई थिंक यार ऑल्सो शाउट आउट, क्योंकि द गाय एक्चुअली वन स्टिल. इन Hmm. इंग्लैंड नहीं किया, या लड़ाई हो गई भाई हंगरी और इटली के बीच में. एडम जलाई ने कुछ किया है लगता है. एडम जलाई को मिल रहा है येलो लास्ट गेम में जो गोल स्कोरर थे अगेंस्ट जर्मनी, और कैप्टन ऑफ हंगरी. भाई क्या हुआ है, कुछ तो गड़बड़ हुआ है, क्या हुआ? आई वुड हैव मिस्ड दैट Some सेकंड. Baji Baji in the book. हाँ, सेंटर I बैक think. और कोई जो अंडर अचीविंग था. मतलब आई आई कैन ऑल्सो, मतलब हाँ, द गाय एक्चुअली वन द प्रीमियर लीग दो, वो भी 2 बार. रॉबर्ट हुक. Alex. ओवर Robert अचीवमेंट हो Huth. गया तो. No, yeah, again, another player that, I remember against when Jose Mourinho, when Claudio Ranieri was there, I thought Hoot was going to be big. And then, नहीं, वो इंजरी थी ना उसके, याद है, एक सीजन फुल acha, इंजरी acha, थी. acha. Okay, okay, okay. Hmm. दैट्स व्हाट इट Who else वाज. could we go for underrated? अंडर अचीविंग हु वाज, अगेन यू कैन नॉट से चेल्सी के में बहुत कम बोलेंगे, बिकॉज आई थॉट एवरीवन वन सो मच इन द लास्ट 10-15 Yeah, years. yeah. दैट्स व्हाई आई एम अनेबल टू थिंक थोड़ा. भाई आई वुड से अंडर अचीविंग, व्हाई नॉट थियागो सिल्वा. ही No, no, डिजर्व्स Thiago मच Silva मोर. is, I think, I mean, he's not won with Brazil, but then, he's won the Champions League with Chelsea, the French League. He's won the Serie A with AC Milan. See, the thing is with Thiago Silva, they said when he came, he was the Nesta replacement, and he looked like that. And he really Yeah. loved AC Milan, and it was हाँ, just because. मतलब he won Serie A, तो we'll give him that, मतलब fair enough. और Yeah, I know Jamie he's won Carragher lots. won nothing. I mean, he's not won the league ever. Why not? अंडर That's a good. अचीविंग भाई गौरव. अच्छा चलो, मतलब आई नो लिवरपूल फैंस आर नॉट गोना लाइक मी फॉर दिस. बाय द वे हाफ टाइम हो गया यहाँ पर, एंड एज थिंग्स स्टैंड इटली आर लीडिंग हंगरी 1-0 अवे, एंड इंग्लैंड हंगरी है भाई जर्मनी के साथ एज ऑलवेज. जेमी कैरेगर, you will remember it, Fateh, how Zola made him smell the grass in Yeah, 2002-3. Yeah, no, you remember yeah, that, yeah, right? By yeah, yeah. Jamie Carragher, for me, probably, मतलब again, you might have a different opinion, सब लोग. I feel he overachieved in what his talent was. I'm saying talent. In terms of But talent, yes, he was very, मतलब एक होता ना, his commitment was superb. I'm not yeah, questioning his commitment as a player, but in terms of talent, I but thought he was a Ankit, fullback who turned into a centre back. Remember? hmm. But those Benitez years, Liverpool's defense was unshakable. हाँ, but he won, right, Champions League. He won the Champions League in 2005, Then and you can't call him. नहीं नहीं भाई, गौरव मैं ये बोल रहा हूँ ना, सिल्वा फॉर मी शुड हैव बीन द हाईएस्ट विनर ऑफ ऑल टाइम एज अ डिफेंडर. इतना अच्छा लगता है मुझे सिल्वा तो, लेकिन वही है, अंडर अचीविंग नहीं बोल सकते. राइट गौरव. see, there are a lot of inter defenders who come to Uh, my mind, like somebody like Cordoba, very short, but you मैं know वॉल्टर सैमुअल बोल रहा था. exactly. Samuel is another one. I mean, but Samuel, and I think Samuel won the treble. I don't think या Cordoba ही was. वन द ट्रबल.
एग्जैक्टली Yeah, exactly. I इसलिए don't think मेरा Cordoba पहला would be. माइंड में वही आया, वॉल्टर सैमुअल। मुझे याद है हमेशा उस समय फीफा में वो लाइक वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ड्यूरिंग दोज Yeah, इयर्स, राइट, फॉर अ रीजन। and he went. Real Madrid bought him for their defense, during the Galactico era. So that means, You but know yeah, what? he could. Actually, on that note, can't it be anyone from one of those Galactico era of Real Madrid itself? Because they had a lot of good players here. मतलब Hero was Ivan Helguera. definitely कौन? Ivan Helguera was there. Play. He was a central midfielder, and then he was converted into a Yes, defender. Helguera. Definitely, Ivan Helguera is there. Yeah, that is But I one was of I the. was wondering about the coach Pochettino. I remember a little bit of him at Espanyol. Mm-hmm. I don't think he won a lot. Even when he was at PSG, PSG was not a winning team at that stage. They had Ronaldinho and whatever, but they were not a winning team. And then he never really had that career where you would say that yet he was in the Argentinian national team or he was around there. अच्छा, चलो, वी हैव सम हेल्प विद अस भाई। हम एक कर रहे हैं श्रेय, बाय द वे वेलकम टू द स्ट्रीम अगेन ब्रो। अगेन भाई, एवरीवन श्रेय एफसी चेक करिए, इट्स टैग्ड इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। आई डोंट थिंक हम हीवान हेलगेरा उसे बोल सकते बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वन कपल ऑफ चैंपियंस लीग एंड कपल ऑफ Champions League, नो yeah. ला लीगास। लेकिन हम लोग ये कर रहे हैं श्रेय, जो आप देख रहे हो स्क्रीन पर। एवरीवन लेट मी नो इन द चैट ऑल्सो, सेंटर बैक अपनी टीम अभी थोड़ी सी रेडी हो गई है। वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम अंडर अचीविंग का डेफिनेशन ये है, either you expected them to achieve more based on their potential और उतना रिच नहीं किए, और बेसिकली वो खुद ही हक दिए बिकॉज ऑफ द कोचेस और बीट बाय themselves, that is what हम बोल रहे हैं। तो any name which comes to mind as a center back who probably should have achieved more in his career? I think center backs is a position. I think there are a lot of center backs, अंकित भाई, जो मुझे लगा कि I think they could have achieved a lot, but exactly अगर मेरे को नाम पे याद आए, क्योंकि चेल्सी में भी अगर मैं देखता हूँ हमारे मोस्टली सारे सक्सेसफुल निकले हैं। मुझे पता है नाम थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन मुझे थोड़ा सा होप थी एलेक्स से ज्यादा, क्योंकि जब एलेक्स स्टार्टिंग में आए थे तो एलेक्स वाज लाइक एब्सोल्यूट बीस्ट। तो 2 साल के अंदर ही धीरे धीरे वो मोमेंटम सारा निकल गया एलेक्स से जो था। तो एलेक्स को ले लिया अपने ऑलरेडी, दूसरा नाम बताइए। अच्छा, एलेक्स को ऑलरेडी ले लिया है, ओके ओके। हाँ, कुलीबाली एक्चुअली, लेकिन वो अभी तक खत्म नहीं हुआ ना करियर, तो अभी ही माइट स्टिल अचीव, सो इसलिए अनफेयर। बिग अप टू श्रेय एंड फतेह, एब्सोल्युटली। इंडिया I में think रहते हैं भाई, वो भी नॉर्थ इंडिया में रहते हैं। हाँ बोलिए। I'm trying to think of like Italian-based defenders who didn't achieve much, हाँ, and दिस there's इज so दिस many. इज अ गुड कॉल ब्रो, दिस इज अ ब्रिलियंट कॉल Oh yes, आदरी का। yes. I आई I थिंक used to love this team at Valencia. I used to love. 2006 में ना, अर्जेंटीना फैंस विल रिमेंबर दैट सेंडिंग ऑफ हुआ था इनका, याद है? ही गॉट सेंट ऑफ। Against Germany or Mexico? आई थिंक इट वाज अगेंस्ट जर्मनी, वही है दी गेम। रोबर्टो Oh अयाला my, गॉट सेंट ऑफ इफ आई रिमेंबर राइट। तो oh वहां my. पर आई एग्री विद दैट। अगेन ही हैज वन स्टफ, बट नॉट बेसिकली, अगेन ही इज And एन इटालियन we चैंपियन, can. दैट्स ऑल। No, I mean he's won a lot with Valencia. He was at AC Milan and he didn't really have a great time. Like I don't know whether he won the Serie A in 98, 99. I don't ही know वन ही about वन that. ही वन He ही won, वन yeah. But हाँ, then लेकिन he was so good at Valencia. I still remember. यूएफा He कप lost जीता है 2 इन्होंने। Champions League finals. And if you look at Ayala and why we should put Ayala here, I think Michael Owen's great goal, the last defender that he beats is Ayala in '98, and then Dennis Bergkamp for that great goal in the quarterfinal. That quarterfinal, again the defender that he हम्म, beat was Ayala. So that World Cup, Ayala is struggling '98, and as you said, in 2006 he got sent off. So या I think Ayala would be the right guy to put here. I mean, I think we expected मतलब more, and he's मतलब लाइक मे बी, हमें तियागो सिल्वा बोल रहा था, मतलब मे बी yeah, लाइक सर्टेन पीपल जो इतना अचीव किया उसके बावजूद वो और भी अचीव कर सकते थे। दैट्स हाउ गुड yeah, ऑफ अ रीडर ऑफ द गेम ही वाज, और बट आयाला, फेयर इनफ। लेकिन अगेन पीपल मूविंग ऑन टू फुल बैक्स नाउ। अब लोग एवरीवन इन द चैट लेट मी नो, बाय द वे पीपल आर जॉइनिंग इन। अगेन रिमेंबर, स्कोर नीचे चल रहा है, इंग्लैंड हग रही है, जर्मनी हग रही है, दैट मैच इज नॉट ग्रेट, लेकिन यू हैव टू गिव इट टू स्टर स्टेगन टू सम एक्सटेंट एज वेल, बट हंगरी इटली में भाई नॉन्टो हैज रियली बीन गुड इन माय ओपिनियन, नॉट दैट आई एम बायस्ड। लेकिन ये हम कर रहे हैं अंडर अचीविंग 11, तो सब लोग फुल बैक्स बताइए अब। मर्टेसैकर आई बिलीव वर्ल्ड कप जीत लिया भाई, he was दैट not वाज that इटसेल्फ good. गुड फॉर हिम। But he was never that good a defender like एग्जैक्टली, Mertesacker ओवर or अचीविंग में मैं तो Mustafi. They वही never, कैरेगर yeah, और मर्टेसैकर उस लेवल में आते हैं। दे वर ग्रेट प्रोफेशनल्स, दे वर ग्रेट yeah. लीडर्स, दे वर ग्रेट कमिटर्स इन टर्म्स ऑफ जो कमिटमेंट करते हैं ऑन द पिच एंड टैकल्स, लेकिन टैलेंट नहीं था इतना इन माय ओपिनियन। लेफ्ट बैक फिलिपे लुइस इज अ गुड शाउट। Hmm. फिलिपे लुइस, या यू कैन से दैट, हाँ, स्पेशली चेल्सी है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था दैट
definitely Aspilicueta उसको overtake नहीं करते as a left back, which happened unfortunately for Lewis. So I remember a anyone? Chelsea left back, the Russian Zirkov. He had that great Euro 2008. यूरी जर्कov, हाँ But बिल्कुल, बहुत अच्छा थे यार, बहुत अच्छे थे. इनफैक्ट मेरे को was नहीं it? अंकित भाई, एलेक्सैंड्रो मेरे को लगता है आना चाहिए, क्योंकि एलेक्सैंड्रो एक टाइम पे 70 मिलियन की डिमांड थी चेल्सी के लिए, एंड या जो उसका अलेक्सेंड्रो स्टैंडर्ड था नहीं, लेकिन हम एलेक्सैंड्रो. करंट प्लेयर नहीं डालेंगे ना. करंट प्लेयर्स हु आर प्लेइंग इन द टॉप 5 लीग्स, इट वोंट बी फेयर. हाँ, अलेक्सेंड्रो इट्स क्वाइट ऑब्वियस, यू आर राइट, 100% मैं एग्री करता हूँ श्रेय से. प्रॉब्लम इज दैट हु नोज कल को अगर यूवेंटस चैंपियंस लीग जीत गई, यू नो, सो ये दिस शुड बी वन ऑफ दोस थिंग्स. Champions League जीत गए Oh, is going down. this is a good shout as well. लेकिन was he so good, Adri? I don't think so. I don't think so as well. He was, वही है, मतलब एप्लीकेशन सही था. थोड़ा देसी राफेल का शाउट हो फेब्रिशियो. सकता है. यूनाइटेड में जिस तरह फॉल ऑफ हो गया था करियर उनका थोड़ा बाद में, राफेल द सिल्वा का जो यूनाइटेड का राइट बैक होता था, स्टार्टिंग में अच्छा कर रहा था, फॉल ऑफ हो गया था बहुत जल्दी. लाइक नहीं, लॉन्गेविटी नहीं थी लेकिन उसके करियर में. डिफेंसिवली बहुत आई वाजंट इम्प्रेस्ड एनीवे विद देम. अटैकिंग बाय राफेल और उसके जो भाई थे ना, क्या फैबियो, बहुत अच्छे थे. लेकिन इन टर्म्स ऑफ डिफेंस आई वाज नॉट इम्प्रेस्ड फर्स्ट भी. मैं एक्चुअली लेफ्ट बैक अभी सोचते थे, मतलब पता नहीं आप लोगों को याद है तो भाई, ओवर अचीविंग हो गया तो ऑलमोस्ट, लेकिन बात करनी बनती है भाई. डेल हॉर्नो जब आए थे चेल्सी में, आर्ग्यूबली दैट वाज द बेस्ट सीजन फॉर चेल्सी, और उससे मुझे एक याद आया है, एंड फॉर मी it actually tops even Felipe Luis, Wayne Bridge. For me, Wayne Bridge was a superb left back in his day, superb. लेकिन maybe because of injuries, एक तो injuries काफी हुए थे, he was out for the entire season. We had to sign Del Horno, I remember that, ठीक है, और Gallus को खिलाया था left back, I remember that, एक entire season because of Wayne Bridge getting injured. Then yes, he went to Manchester City, but I thought जो Terry और Wayne Bridge के बीच में obvious वाला जो हुआ था, that took very ironically a lot of Wayne Bridge's career than Terry's career. Yes, Terry भी strip हुए थे captaincy से, but I thought Wayne Bridge, probably for this reason, he wasn't played a lot even in England starting 11, because Terry used to be there. How many of you agree? But I feel that Felipe Luis, फिर भी I think Confederations Cup में he's won. I remember that very well. But Confederations Cup can't cop. He lost the Champions League final with Atletico twice. You know, Felipe Luis और Wayne Bridge दोनों ही हो सकते हैं. Godin सेंटर बैक, ऑल्सो एटलेटिको मैड्रिड से. हाँ, यूर राइट. मे बी एटलेटिको मैड्रिड वाली जो टीम है ना, यू कैन से दैट दे शुड हैव अचीव्ड मोर. अरे चिन्मय इन द हाउस एज वेल. भाई चिन्मय आ जाओ, अभी फ्री हो गया चिन्मय, बोलो. मैं देता हूँ लिंक आपको, मैसेज करिए मुझे, यहाँ पर मैसेज करिए. मेरा फोन किधर है, गायब हो गया. या प्लीज मैसेज मी ऑन द चैट इटसेल्फ इफ यू आर फ्री. आई विल सेंड यू द लिंक ब्रो ऑन द फोन. बस हाँ भाई, लेफ्ट बैक बहुत अच्छे दो आए हैं इन माय ओपिनियन. एवरीवन ये बताइए, लेफ्ट बैक में अंडर अचीविंग 11 ऑफ ऑल टाइम, अगर आप लोग देखे हो दोनों को, आप प्रीटी श्योर सब लोग वेन ब्रिज को देखे नहीं होंगे, लेकिन दैट्स बेबी वन कॉल मेरे लिए. चलो चिन्मय भी आ रहे हैं भाई. His goal at against Arsenal's invincible team in the quarterfinal of the Champions League in 2004. That, लेकिन हमने अचीव किया लास्ट में everything. That goal, no, but that goal, you know, up until then Chelsea were always losing to Arsenal. Exactly. And that goal, and from there onwards, next to Jose Mourinho came, and till today, when I see Chelsea Arsenal, I'll say, okay, Chelsea is going to win. You know, Arsenal are not anywhere near. But I definitely Arsenal used to dominate us crazily, right? Till then, absolutely. I know that as well. Or Invincibles side, it is great. But problem वही थी ना, देखिए उसके बाद चेल्सी ने बहुत अचीव किया, वेन ब्रिज ने खुद अचीव नहीं किया बहुत. Yeah. That is exactly what I'm trying to say. Wayne Bridge was actually that good. In fact, that goal, you know, made me the stand that I am today. To be very honest, that was एक होता है ना भाई, Chelsea has arrived, that kind of thing. And Wayne Bridge, the Invincibles in their own stadium. Yeah, देखिए again, Gaurav has a point. देखिए Luis at least had a very long career. Wayne Bridge का because of injuries, I thought his career, you know, became shorter and shorter, and because of the controversy, especially for the national team. देखिए Luis was still picked over Marcelo, prime Marcelo at left back. You remember that, right, Fateh and Shrey? Yeah. Wayne Bridge को नहीं पिक किया जाता था इंग्लैंड में. Ashley Cole was above him. Yeah. देखिए, but उसका talent was superb. I felt Wayne Bridge talent. Anyone is questioning Wayne Bridge, I don't think he can be questioned on talent. He was a superb left back. नहीं? He was okay. Well, by English standards, he was very good. Oh my God. चलो, maybe आपके मन में कोई और आता है तो बोलिए भाई. I think above Felipe Luis तो डाल रहा हूँ, ज्यादा अंडर अचीविंग था Wayne Bridge. That's what I am saying. लेकिन हाँ, राइट बैक I'll give it to Fateh. Fateh, you go for right back. And everyone in the chat, आप लोग भी बोलिए. चिन्मय को लिंक भेज दिया मैंने.
I don't know. I mean, who could be an underachieving right back? Like, There are I so many, bro. somebody who's not winning stuff. I mean, we only look at the winners. You know, I'm thinking हाँ, of. it can be an injury. It can, मतलब एक बंदा मैं बोलता हूँ मैं. I think people might be remembering also. Cicinho. Oh, the one who went to Roma. Yes, he was so talented. What? Yeah. Super talented, bro. Super Super talented. talented. Yeah. अरे चिन्मय in the house, bro. कैसे हो चिन्मय? Oh, Chinmay, my man. चिन्मय फतेह, I How are don't know you? कितने साल बाद मिल रहे. By the way, एक लग साल रहा है एक मुझे. साल बाद मिल रहा है, I think I'm यूरो so फाइनल के बाद excited, नहीं. man. Like, England खेल रहा है, Italy खेल रहा है, हाँ तो Italy मैं, is winning, हाँ England मैं is not मुझे doing स्टोरी well, and बतानी Chinmay चाहिए is in भाई. the house. This is amazing. ये दोनों वॉच अलॉन्ग कर रहे थे, चिन्मय और फतेह, और मैं चैट में था. हम तीनों साथ में ऑलमोस्ट बातें कर रहे थे. आई रिमेंबर दैट वेरी वेल, लाइक इट वाज यस्टरडे. Yeah. But that's what, and even Fateh, I'm not sure if Shrey remembers, but we did have a couple of streams. लेकिन भाई again चिन्मय, welcome to the stream. हम देख ही रहे इंग्लैंड जैसे हग रही है. Very honestly, it's not worth watching it. लेकिन what is worth watching is what we are doing in this stream, I know, because we are I'm picking this. taking a notice. I think Cicinho was the most recent name जो आपने लिया. So carry on. If I have some thoughts, How was that call भाई? सिसिनियो, जो लोग नहीं देखे ना, जाके क्लिप्स अभी देखो 1 सेकंड के लिए. भाई मैं बोलता हूँ सिसिनियो का टैलेंट वाज नेक्स्ट लेवल. श्रेय इज वेरी गुड इन स्काउटिंग यार. आई नो लॉरेन बोल रहे हैं भाई. लॉरेन आर्गुएबली वाज पार्ट ऑफ द इनविंसिबल्स ही अचीव्ड, ब्रो. आदरी, Yeah. ठीक है. यार अंश इस पर आएंगे, 1 मिनट में स्टार्ट करो अंश का क्वेश्चन. डैन पेट्रेस्कू, बहुत अच्छा भाई. आदरी, मच लव ब्रो, मच ब्रो. डैन पेट्रेस्कू डेफिनेटली भाई, चेल्सी मैन, ऑफ कोर्स. Romanian, he was one who deserved to win more. That's a great call. Lauren is still achieved, but Shrey, आपको पूछता हूँ मैं, by the time Chinmay thinks of a right back as well, was आई थिंक underachieving. राइट बैक सच्ची में, जैसे फतेह भाई कह रहे हैं ना, राइट बैक सच्ची में बड़ी मुश्किल पोजीशन. लाइक मेरे एग्जैक्टली करंट में जरूर होएगी जो लाइक मैं कहूंगा अंडर परफॉर्म करे, लेकिन पास में कोई रिटायर वाला मुझे याद ही नहीं आ रहा कि कोई ऐसा जिससे एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हो, क्योंकि जिनसे थी उन्होंने मोस्टली अचीव करा है जितना मेरे को लगता है. तो एग्जैक्टली तो मेरे को भी याद नहीं आ रहा, क्योंकि मैं मोस्टली फैन था 2009 के बाद. और 2009 के बाद जो मैंने देखी है, मुझे ऐसा कभी लगा नहीं. राफेल था जो मुझे लगा था, राफेल था यूनाइटेड का जो मुझे लगा था Rafael was a good call. कि लॉन्गेविटी उसकी नहीं थी जिस तरह वो खेलता था. तो मैं राफेल जरूर रहूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि टैलेंट था. लाइक अटैकिंगली राफेल वाज सो गुड टू वॉच. लाइक उस यूनाइटेड साइड में स्केरिंगली गुड था. उसका भाई भी फाबियो, बोथ वर फैंटास्टिक. बट कहीं ना कहीं डिफेंसिवली और लॉन्गेविटी नहीं दिखी. जैसे वैन हाल आया उसको क्लब से, आई थिंक ही वाज सोल्ड, और उसके बाद करियर में कभी नाम ही नहीं आया कि राफेल का कहीं और क्लब में. तो कहीं ना कहीं शॉर्ट लिव करियर था. तो मुझे लगता है वो भी आ सकता है वैसे अंडर अचीव में. Matteo Darmian, taking Yeah, I names was of about to say Darmian, but he's still taking playing. names of United. Darmian तो talent बोलोगे, he's in that category of He's talent. not talented, but he's He's not hardworking. talented, You know, he's a but he proper was, Conte player. when he came in, even for Italy, even for United, there was Yeah. a lot of suggestion कि he would become a right back for the next 10-15 years for both national and club. But then, once Jose came in and, then he went out of favor with Italy. But Chinmay, the thing is that for Italy at Euro 2016, Conte was the manager, Darmian was the right back. It was the perfect fit. And when with Inter Milan, we got Darmian from Man U, and he was the perfect fit under Conte. Now we see under Simone Inzaghi, it's not all that great. But I don't know what Conte does to players. Like he just got so much out of him. Hats off to that guy. Like. यार स्टीव फिनन कीरन वाज इन ट्रिपियर की शॉट लिवरपूल. है, मेरे को अभी भी दिमाग में नाम है कीरन ट्रिपियर. लाइक जितना टैलेंट है कीरन ट्रिपियर में, लाइक जो उसका सेट पीस टेकिंग और उसकी फीट में एबिलिटी है, लाइक थोड़ा सा ट्रेंट ऑफ जेम्स के नियर है. टॉटनहम में अचीव नहीं कुछ करा, उसके बाद नाउ प्लेइंग एट न्यूकासल. नो डिसरिस्पेक्ट, लेकिन चाहे मनी आ गया तेरा बॉटम क्लब. तो that spell he had at Atletico Yeah. was, I think, I think हाँ, Atletico में he was He was the league the player. underachieving part, because he did go on to become the first choice right back. He did win the La Liga, so I mean उसका बहुत बड़ा part था of the success they had, him and Suarez. So I think underachieving तो नहीं बोलूँगा. With England too, he was his first choice right wing back. भाई गोल होते थे, बच गया भाई. Di Lorenzo with attacking on the right wing, but कोई नहीं. Everybody's watching Italy. I am watching Italy. मैं तो दोनों लगा रखा था. अरे थैंक्स यार अंश, मच लव टू यू अंश. लेकिन भाई मैंने अगेन आप बोलोगे भाई ये डोमिनेट कर रहा है. बर्नर आ रहा है, बर्नर
Timo Werner coming on. ऑल द बेस्ट Werner. नहीं हम करंट प्लेयर्स हम बात कर रहे हैं बिकॉज शाउट आउट बनता है सर्टेन प्लेयर्स का, लेकिन हम डाल नहीं रहे क्योंकि इट विल बी अनफेयर ना, देयर करियर इज स्टिल येट टू, मतलब हो सकता है इसी सीजन में चैंपियंस लीग जीत जाए। अगेन दिस इज अ लॉन्ग टर्म वीडियो। तो भाई सिसिनियो, हम डू एवरीवन इन द पैनल एग्री दैट सिसिनियो हैड द टैलेंट, मैसिवली अंडर अचीव्ड, ठीक है। सिसिनियो प्रोबब्ली हैज टू बी दैट गाय, लेकिन अभी तक दिखा देते हैं फॉर एवरीवन हु इज वंडरिंग कि क्या हम कर रहे हैं यहाँ पर। तो बैक लाइन हमारा रेडी है, और अगर चिन्मय जो लेट ज्वाइन किए भाई आपको चेंज करना है तो आप बता सकते हो if you want to change. I agree with all choices. I've been watching the stream. I agree with चलो all सही choices. है। तो गोलकीपर दिख रहा है क्या आपको? एक सेकंड में, लेट मी एक्चुअली, कुड़ीचिनी को डाला है अपने गोलकीपर में। भाई तो सेंट्रल मिडफील्डर्स, एवरीवन अंडर अचीविंग सेंट्रल मिडफील्डर्स ऑफ ऑल टाइम, I have a lot of names in my mind midfielders में। let me see आप लोग के क्या, पहले पैनल के ले लूंगा, और ऑफ कोर्स the people in the chat आप लोग भी बोलिए। आदित्य इंडियन जर्मनी देख रहे हैं, नाइस। For some reason, I feel Seedorf with the kind of potential he had. No, bro, come on, man. Seedorf he has won everything in the club level, bro, everything. That's exactly my point. At club level, national team, he was part of a golden ignore generation. थोड़ी कर सकते क्लब को। See, I think with Seedorf, what happened was, I think he won the Champions League with Ajax, moved to Real Madrid. He won the Champions League with Real Madrid. Then there was this spell at Inter where he was good, and I have no idea how we let him go to AC Milan. That is something that Inter fans still. At club level, he was mad. What I'm trying to say mad. is, he was part of a golden generation in Netherlands. अरे एक सेकंड चिन्मय, अगर ऐसे डालेंगे ना तो अभी का भी पूरा डच टीम लिख देते हैं। डच टीम डाल देंगे। पूरी डच टीम अंडर अचीविंग है भाई, वैन डर वार्ट, एवरीवन ब्रो, आई एम टेलिंग एवरीवन व्हाट टैलेंट्स दे वर, दे हैड लाइक क्रेजी ब्रो, वैन ब्रोंखोर्स्ट, मतलब इतने सारे टैलेंट्स है, वैन पर्सी, सब लोग डाल देते हैं भाई। I think I do agree with one name there, Jack Wilshere. I think it just came up in the chat. That is one name I do agree with. मैं एक सरप्राइज नेम थ्रो करूंगा, शायद एग्री ना करे, एक बड़ा सरप्राइज नेम है। आई थिंक शायद फतेह भाई को जरूर पता होगा इसके बारे में। मेरे को लगता है एक टाइम पे रिकार्डो मोंटेलीवो जैसे फ्योरेंटीना में से स्टार्ट करा था, मिलान में जाके मेरे को याद है बहुत अच्छा, बहुत टैलेंटेड था। जो उसके साथ हुआ मेरे को याद नहीं है कहां गया वो। एसी मिलान में हगा यार भाई, एसी मिलान में हगा है बंदे ने। Montolivo was the big hope for Italy, that after Pirlo there is Montolivo, and Euro 2012 he was there. I think he was there even Euro 2008, World Cup 2010, I don't know, but yeah, Euro 2012, he was there. I was ever present in the squad में। Euro 2012 he was there, and Euro 2012 Italy made the final, so everybody thought Montolivo is now going to take that step. He's going to be the face of AC Milan, and it just it never materialized for him. So that is a very good shout. I was actually thinking of, again, see, that Chelsea team was good, but there were these two players, Gus Poyet and Dennis Wise. I mean, that was the era when Sir Alex Ferguson was ruling England. So at that stage, these two players didn't win enough, and I think I don't know whether they were talented. Oh, yeah, Hungary scoring almost. Oh my God, एक second, sorry. Oh भाई, Donnarumma madness, Donnarumma, what a save bro, what a double save by Donnarumma, and this back to back shots लिया भाई, चार लिया, yeah, some brilliant shots coming in। लेकिन यहाँ पर just quickly फतेह देखिए, Dennis Wise, I agree that when it comes to national team, he probably got the raw deal, he probably deserved much more than what he got, but on the other hand मैं इतना बोलूंगा, for Chelsea जो change हुआ ना about us winning competitions, us winning cups, Dennis Wise was a huge part of that। Dennis Wise in fact captained us to a cup। He was definitely there, if I'm not wrong, then correct me in the chat, जहाँ तक मुझे याद है he was also the captain when we won the Super Cup as well, the first Super Cup, जहाँ तक मुझे याद है, because we had Vialli being the manager at that time, ठीक है, ठीक है, तो कैप्टन वाज डेनिस वाइज। तो फॉर मी द चेंज इन चेल्सी, डेनिस वाइज वाज वेरी मच पार्ट ऑफ इट। और जो कप्स हम लीग में एंड नेशनल टीम में ऑलमोस्ट ही वाज इतना अच्छा था ना उस समय ब्रिटिश मिडफील्ड दैट यू कुडंट, डेनिस वाइज आई स्लाइटली डिसएग्री। लेकिन मिडफील्ड की बात करें अपन, राइट, तो डिड यू शेयर एनीथिंग चिन्मय, आपने नाम बोला कोई? I think I agree with that picture there. I did. I mean, if you look at talent, if you look at that one game he had against Barcelona, a penalty shout, VAR, okay, dive, okay, हाँ, so ये तो बनता है यार नाम।
Jack Wilshere. I completely agree because I know Fateh is shaking his head. Fateh disagrees But with we'll come to that. for We'll the come to that. but for the first 3 or 4 years of his Arsenal career, when he was in that team with Sami Nasri and Robin van Persie and Fabregas, Nasri still went on to win a Premier League. Van Persie still went on to win a Premier League. If you look at the whole team, Jack Wilshere was the star of the young Arsenal team. Yet he did not really finish with a lot of uh, I won't say trophies, but even with respect. Goal, Because bhai, man. Bhai, what a goal, bro. इधर VAR Man, देखो Italy referee, are it's winning. all thing with Italy you. are no World Yeah. Cup, but हो सकता है डिमार्को था ना? Yeah. डिमार्को World Cup. bro. वार है जर्मनी इंग्लैंड के मैच में शायद पेनल्टी होने वाली है. हाँ, it's a VAR अरे अच्छा Maguire. साथ साथ में दोनों हो गए इसलिए शायद मैं मिस कर दिया हो लेकिन भाई इटली आर गोइंग थ्रू टू द सेमीफाइनल्स अलोंग विद एंड आई वांट इटली एंड नेदरलैंड्स टू बी अ मैच हियर फतेह we'll It's a have a penalty. proper conversation. Italy and Okay. Netherlands. It's a penalty for Germany. कौन कंसीड किया? Maguire conceded penalty. Beautiful man. ओहो मगवायर बेचारा यार भाई और भी And then गोल the लेगा man, क्या कर and then the सकते हैं man goes on air and says, "Why is Ten Hag not picking me?" Beautiful. मजा आ गया मेरे को. and here everyone who are sorry Manchester United fans and Maguire fans bro they are like Yeah, I mean, some very interesting names, and somebody said Stankovic. Absolutely, I agree. Although he did win the league with Lazio, he won the treble with Inter, but then, you can't expect him to do too much with Serbia. One name that I thought Veron was somebody that, although he won trophies, I mean, considering that he flopped for both Man U and England Chelsea, में, he was हाँ. a very slow player, Good call, but he good was call. so skillful. Like, he wanted to take all the time in the world, but he was so He skillful. had that gift. एक अलग gift था Veron के साथ. Whatever clips, Yeah. whatever, and whatever said and done, he was loved at United. He was loved. He was loved I- at United. Yeah, Cult hero I to remember there was this one pass in the Champions League he gave to Beckham, I think, who scored against Olympiacos or something. And just the vision where he sort of managed to, but he would take time, but he had that vision. So that's one name that I would 1-0. say, 1-0 Gundogan. 1-0 Gundogan. Wow. Penalty. भाई गुंडोगन स्कोर कर दिए है फॉर जर्मनी एज Gundogan से एक्सपेक्टेड मुझे- एंड इट्स Gundogan से मुझे एक और नेम याद आ रहा है डॉर्टमंड का, who played with him, Nuri Sahin. I think Nuri Sahin, there was a time when हाँ नूरी बहुत अच्छा कॉल है भाई everybody said इसके that पत्ते ओपी this भाई is the guy. I don't know what happened there. I honestly don't know. I mean, he was the Fateh is bringing out all the cards from all. I know, Fateh, but do you remember playing FIFA 2009, 10, and Nuri Sahin was everything? awesome And- he no नहीं I agree man Nuri would you Sahin was be there in the saying- losing would you say Dortmund team controversial? right मैं bench पे रखूंगा शायद. Do you probably think in some sense Mario Götze could be one of those? Yeah, players? absolutely. As a winger, I would definitely. Because- when we because started one this number under no, 18, I think number 10 between Götze and Ozil I would pick Ozil Götze फिर भी he got the winning goal in the but World Cup उसके बाद his career disappeared, It and just went. Ozil It just still, went. I think, Ozil has played for Real Madrid. He's played for Arsenal. He's I नहीं don't but know. played for I don't but know. what is the one Ozil Ozil won Is the it a shout? 2014 World Cup. One नहीं heart. but One heart. who had a better career I think Ozil had the better career. think He's Ozil played had a for better Real career. Madrid. I mean, Ozil Cristiano had a better Ronaldo rates Ozil very highly as a even in Real Madrid days I understand yeah, and हाँ, with Godze, he there was- is just now when we remember Godze, we just remember that one goal and that's it. अरे नबील भाई बिग अप है कैसे हो एक शाउट है लाइक एक स्पर्स का प्लेयर आई थिंक सबको याद होगा लाइक ही वाज एन एब्सोल्यूट बीस्ट मूसा डेम्बेले लाइक मैंने जो उसने 2 साल खेला था लाइक ही वाज एन एब्सोल्यूट बीस्ट और उसके बाद फिर 9 ट्रॉफीज अचीव हुई एंड आफ्टर दैट career has But gone I downwards feel so at least in Musa Dembele. what Donnarumma what a save bro Again, what the hell? हमने इतना क्रिटिसाइज किया Donnarumma को man this guy is on a mission bro Donnarumma he has literally saved 2 goals outright of Hungary Absolutely. भाई I इटली think- स्टिल लीडिंग हंगरी 2-0 अवे और यहाँ पे काउंटर पे नॉन्टो भाई बैड फर्स्ट टच लेकिन कोई नहीं देखते 1 सेकेंड लग रहा है नॉन्टो स्टिल हैविंग द बॉल नॉन्टो एंड विद द शॉट मैन नॉन्टो इज द गाय भाई अर्शाविन एवरीवन हु वॉचेस द चैनल और यहाँ पर गिव मी जस्ट 1 मिनट पैनल मैं तब से वेट कर रहा हूं आप लोग का एक मैं नाम बताऊंगा आप लोग बोलेंगे 100% होना चाहिए आई होप सो एंड एवरीवन इन द चैट अर्शाविन फॉर पीपल मैंने नॉन गोट 11 बताई थी मेरा फेवरेट ऑफ ऑल टाइम अर्शाविन आई हैड पुट इन दैट लेवल मेरे लिए अपार्ट फ्रॉम दिस भाई एंड अपार्ट फ्रॉम हिम एलिमिनेटिंग माय डच टीम इन द 2008 यूरोज ज्यादा कुछ किया नहीं बंदे ने
ठीक है, Yeah. because you can argue that because of his club team not being great at the time, as well as that is Arsenal I'm referring to, or his national team also, yeah, he was a single man at times. So Arshavin, in my opinion, he has a walk-in. अगर आप गोट से ओजिल और अरशाविन के बीच में तीनों में एक बोलोगे, मेरे लिए अरशाविन, लेकिन एक नाम मैं बताने वाला हूं अभी, आप लोग बताइए, पैनल स्पेशली एंड एवरीवन इन द चैट, अगर आपने देखा है, इट हैज टू बी, आई थॉट दिस गाय हैज टू बी, जब नाम लिया ना श्रेय ने अबाउट डेम्बेले, आई थॉट दिस गाय वाज इवन मोर अंडर अचीविंग बिकॉज व्हाट टैलेंट ही हैड. David Bentley, anyone remembers? Blackburn player who moved to Spurs. Bentley. Okay, And flopped. He flopped miserably, bro, because, और reason क्या था? He lost the love for the sport. Talk about Andre Schürrle. Okay, these are people who had some mental illness or some problem like that, or they lost the love for the sport. लेकिन talent, भरा हुआ था. Montoli वो also can be a shout. Again, मैंने दिखाना है अभी तक मैंने किसको डाला है. So everyone, should we go for a poll यहाँ पर? But problem is, I know that a lot of people may not have watched all these players in the chat. क्या बोलते हो पैनल? मैंने अभी दिखाता हूँ, पहले दिखाता हूँ who we have picked in the team underrated. ठीक है, I think बेनाफा भी हम देख ही रहे थे, बेनाफा भी इसमें होना चाहिए. लाइक इतने सारे प्लेयर्स हैं मिडफील्ड में, we can literally have 10-15 players midfield में. Do you probably think some players, maybe as a 10, Dimitri Payet could get watching, because he had that one good season, he had a good Euro spell with France, but after that, you come up and see a few of his performances, but I know he's still playing, but and he could change it around, but he's one of those players who really disappeared after that one good. Renato Sanchez, for all you know, Renato Sanchez again had a very, very good spell, then suddenly went off the radar. But is he at PSG now? Yeah, he is. So Renato Sanchez, it's unfair because he's still young. Yeah, exactly. I mean, you're right, Ankit. नहीं तो मैं तो बोलता, I know pretty much. नहीं, आप लोग याद रखोगे ना, Chelsea fans especially, भाई, we had anyone can name who's this player is. We had a central midfielder in Chelsea who was basically he played for Ancelotti. I remember a couple of games when even Matic was a youngster, and he was on FIFA. He was like crazy. Josh McEachran. Huh? Josh McEachran. Josh McEachran. He's the guy. Josh McEachran is the guy that I'm talking about. He had like a Jack Wilshere category. Lekin Jack Wilshere at world stage, I would say Jack Wilshere is probably obvious. Lekin I think तो अभी तक जो attacking midfield में we can put an Arshavin or a Ben Arfa, और options क्या थे? Ozil और Godse. किसको बोलोगे? I would go with Godse. I think the way he was at Dortmund, and then he totally disappeared, like going to PSV, and I don't know where he is now. Achha, not even Bentley. I also remember this Japanese player Kagawa. He was also at Dortmund. He was so good. He went to and United. Suddenly, He flopped. Yeah, and Manu. Yeah. And what happened? Like he flopped. He flopped. I think एक और मुझे याद है जापानी से था Kizuke Honda. Yeah. Honda ने, लेकिन was he that level in terms of talent? Starting he looked very बहुत अच्छे थे AC Milan के लिए भाई. He did well. I remember that very well. लेकिन but that was banter era AC Milan. Do Hungary. All of you remember this one player in the Premier League, Yossi Benayoun? He Chelsea. अरे Liverpool के साथ he overachieved, bro. He overachieved. Let me tell you, he was terrible with Chelsea. Exactly. He but he was one. This is a great call, bro. Probably he has to be the. He has to be. Yes, some great call. I think Riquelme would get in. Riquelme would get in actually. Yeah, मतलब हमने सब वही ना, when you all are there in the chat, आप लोग मदद करते हो और हमें याद आता है 100% भाई. Riquelme and Veron were so similar. They needed time on the ball. They would just deliberate and I think that sort of football just changed. I mean, okay, it was working in Spain and Italy maybe, but today that would not at all work. Like the kind of time that they needed, and but I think Riquelme is a great shout. I think we should have Riquelme. Yeah, again, Godse is at Frankfurt, so technically we cannot put him. Thanks, Football Creeks. Jack Wilshere is technically retired, so that's why you have put him. That's nice. Football Creeks याद दिला दिया. Guti, for me, I don't, as much as he's a super player, बहुत achieve किया भाई. But you have to put Nuri Sahin, man. Like I still can't believe that guy's career just disappeared. Okay,
because of the positioning, So Jack Wilshere, Sahin in Riquelme the और नूरी middle. साइन के बीच में you would pick Riquelme and Wilshere, huh? No, Riquelme, Sahin, and Wilshere would be the three in midfield, and then we CDM go for थोड़ी the रहेगा attacking. साइन. CDM खेलता था ना कभी कभी, लेकिन हाँ, anywhere हाँ डाल देते खेलता हैं. था. चलो भाई नूरी साइन को डाल देते हैं. हाँ, I think he used to play CDM as well. Yes. So भाई now Cam में सब लोग whom would you want? Like मैं तो अभी भी बोलता हूँ that what we can do is we can put Jack Wilshere on the left hand side. ठीक है, और यहाँ पर मेरा मेरा पर्सनल चॉइस तो रहेगा बेंटली. If people who have seen Bentley No, and but like when we talk about like a right, if you're putting somebody on the right, I have to ask you about the player that I liked a lot, Gronkiar. Like he was so talented and he never achieved anything नहीं at like bro, but he was never मतलब बहुत mistakes थे यार उसमें. That's the he was problem. He very lost talented. possession a Like lot of times. he was very, very talented though, man. I mean, they said that he was skillful. He was, हाँ I don't skillful know. बहुत थे. But I agree. It was almost like a जैसे category of Honda. You know what I'm saying? In terms of level of category, in terms of the skill level, ना Honda जो श्रेय ने बोला बहुत अच्छा था, लेकिन I don't see him as हम डाल रहे हैं यहाँ पे all time best as well And as who underachieved. तो यहाँ and पर people थोड़ा may सा not have, people may not remember this guy because David Beckham was so good in the late 90s. But there was this, I think, guy called Blomqvist or something who came to Man U. Conquest. Yeah. Yeah, and he was really highly rated. He came from, I think, Fiorentina or something, And and he he was was the supposed to be the he was the starter for Man understudy. U. He But was then the David understudy. Beckham just, he just went into that next level in after that '98 World Cup, and he had that season. And I think Blomqvist never got into the team. He was bought as an अच्छा. understudy. Look He at was Donnarumma, by the way, Fateh. Yeah, The guy is like crazy, bro. He's he's gone man of the mad. Adel match. I Tarab think. is, I think Adel Tarab can be a very good shout. Adel Tarab, like, जो I think was a talent of Adel Tarab, जो मैंने देखा था Yeah, like since Tarab. some matches. It हाँ, was like Tarab का one of the most talented attitude was the footballers issue. जो मैंने देखे Yeah. like. या अगेन मतलब ऑनेस्टली मैं तो मतलब आई डोंट नो, मैं बायस बोलूंगा, लेकिन मेरे लिए तो ये बंदा होना चाहिए. सच में Arshavin, बोलूंगा. yeah. आप लोग बोलिए विद यू. मे बी बेन आरफा, यू कैन आर्ग्यू बेन आरफा, अरशाविन, लेकिन इन टर्म्स ऑफ टैलेंट मैं बोल रहा हूँ ना. अगर आप सब लोग चैट में भी बोलिए, इफ यू हैव टू पिक, अगेन ये खाली ऑप्शन दे रहा हूँ आप लोग को चैट में और पैनल में भी. अगर आप मैं दे रहा हूँ खाली टाराप्ट, मे बी बेन आरफा, अरशाविन और ओजिल, Arshavin. तो No, I think उसमें Ozil अंडर won. अचीविंग. I think I would go with Arshavin. Yeah, even me. I think I'd go with Arshavin. Anyone else? Mikel Arteta, भाई, I thought he was good, but वही है, Honda के कैटेगरी में डालूंगा उनको, basically Bentley के कैटेगरी में डालूंगा. Very good. Oscar, he's not technically finished football, bro. You never know, Ankit he'll bhai, come back to Chelsea. Ankit bhai, Mason Mount is coming on for England. Mason Mount. Oh, चलो कोई नहीं यार, I'm Is, not is, expecting much there any anyway, to be hope? honest. Is there any hope from Mason Mount? But I'll Yeah, still say definitely, this. bro. I will still say this, that considering that England in those big tournaments have defended so well, I think in Qatar, all the people who are doubting England now, England will again at least make the semi-finals, at least. Yeah, and Mason Mount का जो लोग बोल रहे हैं ना, मतलब देखिए, first of all, he is still very very young. Secondly, just to give you all a stat, again stat है, by the way, प्रकाश big up भाई, कैसे हो? I nothing to feel low. Think about all the positive things in life you do, and हम तो मस्ती करते हैं भाई. DM me, we can always talk. देखिए, ऐसा है ना, when it comes to Mason Mount, last season at this point he had the same number of goals as assists as what he has this season. So you never know. Young players, they kind of sudden से होता है, when they kind of get goals, they get confidence, तब creativity ज़्यादा बढ़ती है. And last season he ended up, if you all remember, he was one of the best creators in the Premier League, plus only among the three who had double digit number of assists as well as goals. So you never know. I'll still give him time थोड़ा. लेकिन coming back to this, I think Benoit Asuakoto probably overachieved, bro. Tottenham में, I know they didn't achieve anything, but if I'm not wrong, he was part of the League Cup. Abhishek, लेकिन अच्छा call है. The only reason I'll say is because if not for Harry Redknapp, ये कितना करते नहीं. और by the way, Nonto is off. One of my favorite recent players is off. Park Ji Sung again. No, but Park Park Ji-sung- Ji-sung was too good. Park Ji-sung He won cannot the- be. Yeah, Park Ji-sung would be so good. underrated. He would not be हाँ, underrated. underrated में होंगे वो. There's a difference. Again, people जो late join के ना, उनके लिए मैं समझा रहा हूँ. देखिए, अंडर अचीविंग कब होता है? जब बेसिकली यू एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम अ प्लेयर एंड दैट पर्सन हैजंट अचीव्ड सो मच इन हिज करियर, और दैट कैन बी बिकॉज़ ऑफ Paul Pogba. या, बट अगेन उनका करियर but खत्म नहीं हुआ, इसलिए
we have not spoken about him. But also just explaining more to the chat, that can happen when you either get some injuries, and man, this player would have been great if not. I उससे एक player याद आ रहा है. Someone told me in the chat just in the beginning of the stream. Let's move on to forwards. So by forwards, the guy who really, in your opinion, really underachieved. एक बंदा है AC मिलान और चेल्सी के लिए खेला है. Anyone? Shrey might be known as this person. AC मिलान और चेल्सी के लिए खेला है फॉरवर्ड. Pato. हाँ, पाटो अलेक्जेंडर पाटो भाई 100%. हाँ, I he's have technically still two. playing. I have two, and I feel it's up to you if you want to go for it. Yeah, or not. this guy was my second pick. I have Michael Owen, who Oh no, was bro. mad. Yes. He Really? was Yes. mad, but he did Yes. not, really get to the heights. Uh, And I have Balotelli. Well, these hey, two Michael Owen got the Ballon d'Or, bro. after, no, But- but he could have done very, very. He could have really He changed. deserved more, in your opinion. Okay. Yeah, Why because Real Madrid? I think, see, again, Michael Owen, the way he burst onto the world scene in Exactly. '98, He you burst know, the on it way with light. everybody said, okay, this is the guy who's going to be Maradona's heir. Ankit, I don't know whether you remember that '98. And okay, I get it that 98 English World press Cup. overhyped, but still, I've only read at about that it. stage, I've only everybody read. said Michael Owen. He's the next big thing. He's going to win Ballon d'Ors. He's हाँ, the लेकिन guy who's technically, going to मतलब fight. I know that it was again for people thinking that I might be salty, हाँ, लेकिन he scored that 98th minute winner in the 97-minute game. यहाँ पर चिन्मय मुझे गाली दे रहा है, I know, लेकिन भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ he won the title. क्या हुआ? काय हैवर्ट्स, ये गोल देखो भाई, ये गोल देखो काय हैवर्ट्स. गोल हो गया क्या? प्रो भाई, Oh my God. banger goal. Man, काय हैवर्ट्स भाई तू. Finally, he scored against England as well. Yes, bro, मेरा लैग हो रहा है थोड़ा सा, but by this one is something else. Kai Havertz scoring, and man, this is absolutely brilliant. But pro goal. is it because Again, हैरी मैगवायर की गलती थी, है ना? शायद हैरी मैगवायर ही था जिससे बॉल लूज करी है. की था. स्टार्टिंग में, सबसे स्टार्टिंग में. Harry Maguire? Let's see, एक सेकंड नहीं, में शायद स्ट्राइकर था, शायद मेरी मिस्टेक है. Harry Maguire did not go get the. Harry Maguire did not go defend the shot. Very good. Even Germany too. Also made an effort, but England have not only been relegated, they have been like the worst performers. How can Southgate remain in this job? I really don't know. Chinmay, And I think draw भी उनकी they got a very good draws Doesn't पिछले matter. यूरोज और वर्ल्ड कप में. Draws बहुत अच्छे थे. look, he's got लेकिन an हुआ easy क्या draw in उससे? 18. He's got an easy draw in 18. He got an easy draw in 21. And Hmm. whether England fans want to admit it or not, he's got an easy draw in 22 also. Defensively, whatever said and done, you leave these performances out of it. June Yeah. say he's been very sound and secure in tournaments. And I feel after this tournament, you can take a call, but you can't sack a manager who's got you a semi-final and a final. Ye team literally, they've only underachieved since 1966. Underachieved. कुछ भी नहीं किया है इस टीम ने. If they're at least coming up to that stage, players अगर सच में उसके लिए कुछ करना चाहते हैं, I don't think you can sack him right now. There is no point for people calling him to get sacked. They're saying Thomas Tuchel is available. And he does not want to come manage the English team. Yeah. And Southgate, he has a, I know fans are booing and stuff. I agree. Fans are not liking the play. But I feel come the World Cup, we'll get back to results. We'll, I think semis is something which we can look forward to. Yeah, absolutely. I think who cares for the Nations League, man? Like, I don't even understand. This tournament should be. No, called off. I do, bro. I do. Sorry, bro. I do. I'll tell you the reason why. Again, being an Italian fan, no disrespect, bro. Much love to you. Like, by being someone who actually has won tournaments versus someone who I have like in my lifetime. हाँ, नेदरलैंड ने टेक्निकली जीता है यूरोस, लेकिन उसके बाद क्या, जब से मैं शुरू किया हूँ पनौती में खुद सोच के लगा भाई कुछ जीते नहीं है कुछ. तो कम ऑन ब्रो, वी नीड एंड वी वर एक्चुअली देयर. पोर्चुगल ने हराई थी हमें 3 साल पहले, मुझे याद है, नेशंस लीग में था. तो यस, आई डोंट रेट इट एज ऑब्वियसली एज क्लोज टू द यूरोस और द वर्ल्ड कप, एब्सोल्युटली. लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ मेजर टूर्नामेंट, इट्स अ यूएफा रिकॉग्नाइज्ड टूर्नामेंट, जस्ट लाइक अ when are the semis? June. क्या चीज? When are the semis and the finals? June. हाँ, वही नेक्स्ट समर भाई. चलो लेट्स गेट बैक टू भाई. एक दिन तो आई बिलीव अंडर इट, और अगेन फुटबॉल क्रीक्स मैंने आपका देखा, जीरू कैन नॉट बी देयर. जीरू हैज लिटरली गोइंग बाय हिज टैलेंट, ही हैज एक्चुअली ओवर अचीव्ड. ही इज अंडररेटेड और अंडर अचीवमेंट डिफरेंट है. अंडर अचीविंग इज लाइक यू फेल्ट दैट ही वुड हैव अचीव्ड मोर,
गोइंग बाय हिज टैलेंट, और कुछ इंजरी हो गया, द मैनेजर वाजंट हैप्पी विद द पर्सन थ्रू आउट हिज करियर, ऐसा कुछ, ही वाजंट पिक्ड मच, लाइक गोलकीपर में हमने पिक किया है कुडिचिनी को, बट बैलोटेली और एड्रियानो फॉर मी हैज टू बी देयर, दैट इज माय I कॉल. think Daniel Sturridge की shout, because Daniel Sturridge was very talented, बहुत Yeah, talented था, like very talented, Good shout. absolutely. Who was more But- talented भाई? Balotelli, Adriano, everyone agrees. Adriano डाल देते पहले, सबसे पहले. Like Yeah, I he's one think of so. the most Adriano underachieving should players have ever. absolutely. I think his career, but then his father died, that depression came in. But yeah, absolutely. I हाँ, think reason Adriano वो था, लेकिन underachieving तो था ना, correct. underachieving to tha. And it was so हाँ. short that that his career, that those 3-4 years, only 2-3 years, I think. And yeah, see, I think Daniel Sturridge is a good shout because of that one season that he had. But then Balotelli was, I mean, if you see that game against Germany in Euros, like, it's like that Michael Owen moment. Like, you arrive at a big tournament and then the world takes notice. Like, it's not just Europe taking notice, the whole world is watching you. And from there onwards, the way you throw your career away, I mean, that man, he's just crazy. We are talking about Balotelli, right? Yeah. आई एग्री भाई. बाय द वे, आंड्रे शर्ले को मैंने बोला था, उसका भी रीजन था वही डिप्रेशन, यू कैन से दैट, लाइक अ बेंटली, डेविड बेंटली. द थिंग इज वी आर आल्सो, जब हमें लग रहा है 3-4 ऑप्शंस है, देन वी आर गोइंग ऑन टैलेंट. एज मच एज आई पर्सनली लव शर्ले, बट we are talking about Adriano level, who are like, wow, Adriano could have been a goat, to be honest, in terms of the talent. That was his 2-1. talent. 2-1 Luke Shaw. अरे भाई साहब, लुक शॉ एंड गैरेथ साउथगेट का कुछ तो है. मेरा लैग हो रहा है ऑलवेज, लेकिन कोई नहीं. यहाँ And पे also, I don't know if fans are noticing this. Sorry, थोड़ा United prop करूंगा मैं, but Ten Hag has got Luke Shaw in the best shape of his career. By the way, I don't know if you can see it or not, but he's no longer fat. नहीं, हाँ, shape. He's actually looking fit. Finally, he's looking fit. So I mean, let's see. Even though he's not I playing would like still say Chilwell deserved to start tonight, even if he scored. एक सरप्राइज शाउट अभी मेरे दिमाग में याद आई है, लाइक मैं पैनल से भी पूछना चाहूंगा, क्या रेडेमल फैल्काओ को आप डालोगे अंडर अचीविंग में? Yeah, that's a good, यार, good name. But एक second, मैं सोच he's widely respected. He's played in good teams. I mean, if you take out the United and the Chelsea, that 2 years spell he had, I think overall in the career he's had good seasons. He's had good, हाँ, सुपर कप और यूरोपा लीग जीता है यार. But now that we've talked about him, James Rodriguez and Falcao both were at Monaco. They were both ripping it, and they were both supposed to take. And Mbappe came in. So that was, I remember when Mbappe and Falcao ripped City apart in that Mbappe upcoming season. यार, बाय द वे, यहाँ पर आर्यन को बोल रहा हूँ भाई. आर्यन इसलिए हम बात कर रहे हैं, वी आर नॉट जस्ट पुटिंग द नेम्स, वी आर टॉकिंग अबाउट देम. ऑब्वियसली एक चीज होता है, लाइक आई अंडरस्टैंड टोटली, इसलिए हम 2000 के बाद ही कर रहे हैं. प्लस द फैक्ट दैट आई होप यू गेट टू get to know new names about some players who actually deserve much more respect generally in football. आप जाकर देखिए, simply put, और वो हम करते हैं काफी. लेकिन again, thanks for coming on. I'll just say this because England fans are in the house. Once it's all done, will Harry Kane be part of the underachieving? Because 100%. It depends on whether he goes to Bayern Munich or not. That's the only ifs. No, but if he doesn't win this World Cup, Chinmay, if he doesn't win the World Cup, what has he won? You can write it down. He's going to go to Bayern, or there are talks of United replacing him for Ronaldo, but he's going to move from Spurs for sure in the next. No, but Spurs might win something this year. Okay. With Conte, yeah, I know you're hopeful. I know why you're hopeful, but Harry Kane will move, and I'm pretty sure कुछ ना कुछ जीत ही जाएगा वो. Plus, I think he'll also finish as England's top scorer, if I'm not. Yeah. अच्छा, by the way, यहाँ पर by the way, आदरी, आपने बहुत, let me take a few comments. आपने बहुत अच्छे नाम दिए आदरी, लेकिन यहाँ पर एक चीज बोलना चाहूंगा, राहुल एंड इंजागी तो एब्सोल्युटली इज आउट ऑफ सिलेबस, क्योंकि यार दे आर probably for a very good while, Champions League में they were the goats. Rahul and Inzaghi were the goats of the Champions League. So they have achieved a lot. That I would not agree even a bit. They have achieved a lot. Or Rahul especially, bro. He's won so much. And when we look at history, and because Mancini is the coach, Mancini was a attacker. He was Mason Mount. He's not Foden, is Mason Mount. Mason Mount to all. Goal. सच में? गोल सच में? मेरा अभी तक हो रहा है लैग. Mason Mount. Beauty. I'm so disappointed. Oh man. Beauty. Bangalore. भाई बचा लिया भाई साउथगेट का जॉब.
Ankit bhai, I take my comment back. Mason Mount में trust है मेरा. Mason Mount, let's go. What a Bhai, he is a good goal. player. It's just that people react very easily in the media. We know that how it is. I ना mean, प्रेशर जर्मनी भी, क्योंकि जर्मनी का भी बहुत गंदा साल जा रहा है अभी तक परफॉर्मेंस के मामले में. Mr. Flick. दोनों दोनों ही फ्लिक और साउथगेट. लेकिन टू ऑल, who would have imagined that? 2-2 bro in a England Germany game in this form. लेकिन again you have to go to Donnarumma in terms of the Italian game, bhai. He has literally kept Hungary at bay. If not for Donnarumma, I think it would have been 2-2 there as well. मैं सच बोलता हूँ, that's how good Donnarumma has been. अच्छा, yeah, thanks again, thanks. ओके, पार्शियलिटी कोई नहीं. मन रियल मैड्रिड के लाइक बहुत अचीव किए थे भाई बहुत लोग. दैट्स द थिंग. हम डालेंगे एटलेटिको मैड्रिड के प्लेयर ज्यादा, मे बी इवन चेल्सी टू सम एक्सटेंट ऑफ द अर्ली 2000s. जनरली जो अंडर अचीविंग आप बोलोगे ना, दैट जनरली दीज आर योर And टारगेट you know, क्लब्स. is lineup में now that I see the Dortmund. other names, I think Roberto Ayala doesn't deserve to be there. He's won La Liga twice. He's won the UEFA Cup, the या Super ही इज, Cup. बट हमें सेंटर हाफ के लिए और कोई ऑप्शंस नहीं मिले ना. एवरीवन Let's हैज. ask Chinmay. I mean, is there हाँ, somebody, some centre back man that who's not अचीव्ड मच, underachieved? He's not. डिजर्व्ड I मोर. feel as a centre back, if you're not achieving that much, I mean, it's just a personal feeling. There are very less because I feel you move to your dream club. To be honest, as a centre back, you don't face a lot. So you don't face a lot of criticism when you're not at the top of the game. And when you are at the top of the game, you do move to your dream club. You do have good spells. And if you're not good enough, you don't really, probably get your move. You don't probably win a trophy or respect. So I feel the centre back का तो बहुत ज़्यादा tough हो जाता है. I don't. Yeah, अच्छा, but I एक think और Ayala चीज is है, एक wrong. सेकंड. मैं चैट के लिए बोल रहा हूँ भाई, आप लोग सब 2000 के बाद ही बोलो, ऐसे नाम मत बोलो जो बेसिकली मैं भी पैदा नहीं हुआ था भाई तब तक. तो लेकिन हाँ, फतेह प्लीज कंटिन्यू. यू हैड Yeah, no, I was talking about how Mancini as a player, he was fantastic, like he was amazing, but he stayed all his life at Sampdoria, and people talked about like, okay, Italy had so much talent, and you can see that, as a coach, he's very talented, but he never achieved that thing as a player, and he's still a I cult think cult figure in Italy. Godin would be. I heard you all discussing Godin, Yeah, but I think Godin would be my go-to probably. Maybe yeah, one front, Godin, I think. maybe one या front क्योंकि टॉप from 5 लीग से हट गया है वो. व्हाट अबाउट दैट गोडिन का एक और पार्टनर, यार नाम बोल रहा हूँ उसका. one front. Oh, the Fenerbahce guy, Lozano, L. नहीं भाई, वो एक सेकंड में भूल रहा हूँ उसका. Again, let me actually come back to it. I just forgot his name, but कोई नहीं. Is this Potter effect on Mount and Havertz? No, Shivam. Let's not over expect ourselves. भाई 2 सेशंस हुए पॉटर के साथ, 2 सेशन में क्या ही तो झंडा गाड़ा होगा भाई. कोई नहीं. Emil Fitano, Rossi is a brilliant shout by the way. तो सेंटर हाफ में we are replacing with Diego Godin because he's not playing in the top 5 leagues despite him playing currently. Fair enough, everyone. तो Godin और Alex get in the center half position. लेकिन लेट मी नो स्ट्राइकर, एक और स्ट्राइकर बाकी है. Rossi is a brilliant shout in my opinion. I don't think he was that talented. I think Is Italy it just okay? no. I Overrated थे mean, क्या? somebody mentioned Casano. Casano was this guy who went to Real Madrid. Everybody thought he'll do wonders, but then his career and his attitude were just not there. Yeah, But but would you put someone who came with a bad attitude? ये थोड़ा सा मुझे question mark है in this team. I would still put Balotelli, man. I think what talent he had. He नहीं, had but Balotelli everything. ने is not counted ना because currently playing and young. But he's not young. He's 32, 33 now. हाँ, And I don't but think he's playing. He's without a club. I think his Turkish club let him go. he's playing in Swiss. Yeah, top 5 leagues में नहीं है. चलो Balotelli. Yeah, I think I think everyone Cavani और Balotelli. Everyone panel में पूछते I हैं. think Cavani is very respected in Italy. I mean, Cavani is he's very won so much respected. with Cavani PSG. is played in top teams. And Top teams. Morata तो Cavani's भाई the work शुरू है rate that career. he has. Cavani's never been kicked out per se, and Yeah, Balotelli has, I think, been kicked out of Balotelli maybe though two. is just नहीं, अगेन मतलब लोग बोल रहे एथलेटिको टीम की, लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं नथिंग अगेंस्ट एथलेटिको मैड्रिड. मुझे लगता है यस दे प्रोबब्ली डिजर्व टू विन दैट फाइनल इन अ, मतलब यू कैन डिबेट, बट रीचिंग दैट फाइनल इटसेल्फ वाज ओवर अचीविंग. सो आई डोंट थिंक यू वुड कॉल देम रियली अंडर अचीविंग. सच में बोलता हूं तो. बट डिएगो गोडिन का करियर इतना लंबा था ना, तो यू हैव टू पिक हिम. and he sort of didn't do well at Inter. It Yeah, really fell off for him. that's We that's also expected so much more from him.
He really Yeah. didn't do well. Gonzalo Higuain फुटबॉल क्रीज बोल रहे हैं. And Ankit, if you remember his partner Miranda from Atletico, he came to Inter. We respect Mhm. Miranda more than Godin because Yeah. Miranda, he was so underrated at that stage. He was so good, and it was just a shame that Inter were in a banter era and we didn't give him a good enough team. But he was very good. ओके बाय द वे सब लोग लाइक कर दीजिए स्ट्रीम certainly helps the stream and do not forget to subscribe even to Shrey FC not just both our channels यहाँ पर मैं एक्चुअली एक नाम के लिए ढूंढ रहा हूँ मैं वो नाम भूल रहा हूँ बार बार यार बट आई एम लाइक सरप्राइज हाउ डू आई डोंट रिमेंबर दिस गाइज नेम आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग ही वाज Uruguayan as well Forlan would you put him underachieving No, no, no. नहीं Ooh, I think Kane almost. No, I would not put Forlan. I think Forlan Forlan, achieved a lot. golden For ball Atletico that Madrid. 2010. That Pichichi he got the semi-final. Pichichi yeah he was the winner And of Pichichi Dante nahi yaar he was good only for a couple of seasons anyway to be honest Balotelli has Is that a यार वही है penalty? नहीं दे रहा ना नहीं दिया no VR check and that should have been a penalty I feel but check Robinho is is a over. good shout Robinho Oh, is it a is. very good shot Tanmay Oh, potential check. Yeah, I think they'll give it. I hope so. Okay, he's Oh going. my God, चलो what a चलो turnaround. मैं वो दूसरे टैब में लगा रखा हूँ ना मेरे मोबाइल में लगाता हूँ क्योंकि बाय द टाइम आई एम सीइंग लैग हो रहा है क्योंकि लास्ट मिनट्स है लेट मी एक्चुअली पुट दैट I एंड think भाई he'll give it. पीपल तो फाइनली वी हैव ऑल अग्रीड ऑन Balotelli फाइनल Yeah. Absolutely. You have to put him. He was, I think, the one talent that disappointed everywhere. I mean, even he went to EPL, he showed, लिवरपूल what he could do. Man City before that too, like the way his career ended. I mean, he was scoring goals, but then he just ruined it for himself. he went to Liverpool also. Remember that. And as the नहीं Suarez नहीं replaced, अंडर नहीं कर रहे भाई अंडर अचीविंग कर It's रहे a penalty. It's a penalty. पेनल्टी के लिए पेन 0-1 चैंपियंस लीग एंड वर्ल्ड कप एंड भाई पेनल्टी मिल गया है ओ माय It's गॉड coming home. It's coming this is, home. it's so sad as a fan of Oh, watching Germany play. he has Germany a would never give a 2000 के 2-0 बाद lead away. कर रहे हैं भाई उत्कर्ष 2000 के बाद क्या कर रहे हैं खाली that's why we are not included him again for me personally I've just watched him in the World Cup that's what I've done not more than that to not the right as word a, रेड as कार्ड a मतलब left हाँ back, नहीं येलो as a Yeah, left yeah. back, I suddenly, because of Chinmay, I suddenly remembered Marcos Rojo was very good at the 2014 World Cup, but he was never, he never He- sort of, He never hit the heights. He never hit he the अरे never heights. hit that. सॉरी But मैन आई फेल्ट लाइक आप जैसे लिसांड्रो मार्टिनेज को बुलाते हैं ना बुचर आई फेल्ट मार्कस रो ऑल ही डिड वाज ही वाज अ बुचर मैन ऑन द बॉल दैट्स ऑल सच में But the World Cup, 2014, the World Cup, he was very good. हाँ सेम थिंग हामेस रोड्रिगेज वर्ल्ड कप में वाज Yeah. सुपर बट आई जनरली डोंट रेट हिम आई थिंक ही वाज But ओवररेटेड he was good for ओवररेटेड Monaco लेवल में होगा also. I don't know what happened. Like James failed at Bayern, had failed at Real. Monaco that team was crazy bro I don't think it was James by himself no Who is the goalkeeper? What is he doing? Imagine if Ter Harry Stegen. Kane misses. first again. Oh, he scored. Goal shoot. भाई मेरा बहुत लैग हो रहा है यार आज पता नहीं क्या भाई Harry साहब Kane, let's go. हैरी केन scores another goal and यहाँ I'm पे telling you, Ankit, I'm really telling you, like this is probably the best time to be an England fan. Like, a semi-final, a final of a major tournament, and I don't know, like I see a lot of people now, because of like I don't know, like there's a lot of controversy around England, but watching it from afar, I feel like it's just that one little step. They know how to turn it up in big tournaments. Once you have that experience in those big tournaments, I mean, if England are playing Holland in the quarterfinals of a World Cup in Qatar, I'm telling you, I think I'm betting on England because now they know how to sort of get stuff done. And a performance like this just before the World Cup, 2-0 down against the old enemy, and you come back. I think honestly the thing about England is and Yeah. they did not know how to grind out results. And that Hmm. was the biggest thing. Even Yeah. if it was, a small team like Algeria, Yeah. nil all over 2010 World Cup. पे मुझे याद है 2014 they struggled.
2018, the small results, yeah, they started to grind out 2-1, Grind. 1-0. They started to defend अच्छा होने लग गया. Players were doing any, and you might say कि they rely only on Kane or they rely only on Sterling. They come up trumps whenever needed. Whenever England needs them, Phil Foden comes up trumps. A player like Mount today, he was under pressure before today. Mason Mount has just come up with a wonder goal. So somehow the players keep on getting the job done for Southgate. Job done. Yeah. Agreed. Hands down. चलो Hands ये down. पिन करके रख रहा हूँ भाई मुदित, थैंक्स. ये दोनों साथ में लिख दो आप, एक एक कमेंट में पिन करके रख रहा हूँ. ये देखिए एवरीवन, दिस इज द मेन थिंग. और यस एवरीवन, दिस इज नॉट द वे जर्मनी विल प्ले. देखिए मतलब आई एक्चुअली अग्री विद उत्कर्ष टू एन एक्सटेंट. देखिए फॉर मी इट्स वेरी इजी. यस एंड दैट इज और चिन्मय, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, देखिए मीडिया ऑफ England and media of Europe generally is the way that how we have reacted just in the last few minutes. England haven't scored a open play goal except for maybe I think San Marino. They were the only team who hadn't scored a Yeah, open 450 play minutes goal for a without good while. 450 minutes without Agreed, open play. agreed. Look at the players. I'm just saying, look at the players. Bro, These Raheem players- Sterling is scoring for Chelsea. What are you saying, bro? exactly my point. These players are tearing it up in their own clubs. These हाँ the players. तो Southgate out they're यार. Simple है, they're he not cannot like- make No, them but play. no. Ankit, But these big हम अगर इंग्लैंड tournaments का are देख not रहे about हैं, scoring goals. These big tournaments are The never fact about that- scoring goals. It's No, about if you No, but No, I Nations agree. League is not a big tournament. Fateh, वही मैं बोल रहा हूँ. Nations League में भी हगा है proper. agreed. नहीं नेशन So लीग तो मैं कहूंगा चलो एक स्मॉल टूर्नामेंट है जो सीरियस कोई I'm नहीं not, लेता, लेकिन I'm not इंग्लैंड की defending मेरे को एक Southgate डाउट at है all. बस. I'm not. Listen. कैन दे बीट गुड टीम्स? होलैंड, ब्राजील, जर्मनी. क्या जर्मनी इज ऑन अ गुड लेवल राइट नाउ? They've got good But players. who are the good teams? And what if England don't even play the good teams? Like the good teams take care Yeah, of it's themselves unfair. and they start What falling Fateh is out. saying is it's unfair to say England haven't achieved because they haven't got a chance to perform against the biggest of the teams. I mean, Again, okay, लेकिन listen, इटली you're के right. साथ हगा यार लास्ट मैच में You're फतेह. right. Somewhere you're right. The two big games of the big clubs we've played, yeah, in good times, Italy and Croatia. We lost both the games. Okay, you can say that, but we did beat Denmark, which were in form Germany. team in the Just semis. We about, did beat just Germany. about. Agreed. Oh, 3-all. अरे अरे मेरा यार, लैग क्यों हो रहा है भैया आज? मुझे Havertz. गुस्सा आ रहा है आज. Kai Havertz. कोई नहीं. Kai What a Havertz. I'm listen. Who's the I'm goalkeeper? and Nick Pope. यार मेरा कितना लैग हो रहा है यार. आपका टाइम स्टैम्प क्या है फतेह? पता नहीं यार, टीवी पे है वो ये निकाल दो. सोनी 10-2. मेरा 86-10 है. आप लोग का चिन्मय? यार वो निकाल England. दे, एक से हाईलाइट दिखा रहे हो, एक सेकंड. अच्छा. Nick Pope really messed it This up. was अभी 86-20. भाई इतना स्लो आ रहा है मेरा यार. ऐप में तो ये टाटा प्ले का कंप्लेन करना पड़ेगा, बहुत ही स्लो आ रहा है. आप लोग का भी हो गया क्या गोल? डोंट टेल मी. हो गया गोल तो कब हाँ हो गया, भाई. highlight. साने विद अ शॉट, लेकिन काई हावर्ट्स विद द रिबाउंड. और भाई हगा है. यू हैव टू से दैट निक पोप वाज एट फॉल्ट. भाई निक नंबर ये पूछ लेते, चिन्मय से पूछ लेते, इंग्लैंड फैन है भाई, एंड श्रेय एज वेल. क्या बोलते हो चिन्मय? निक पोप Pickford नंबर 1. Pickford number 1, and if not Pickford, if he's injured, not recovered, Dean Henderson. There is no Nick Pope for me in the श्रेय, team. व्हाट अबाउट यू? आई थिंक फर्स्ट मैच, आई थिंक इतना हम लोग को लगता है हमें नहीं करना चाहिए निक पोप को क्रिटिसाइज. इज अ गुड कीपर. आई थिंक तीनों कीपर्स एक I'm सेम not लेवल पे है. criticizing him. I'm not criticizing No, him. I'm just I going. am not saying that. Just overall. Henderson's had a very good start to the season, for all we know. Come on, But I he think saved एंडरसन की भी ना 5 मेरे को कई बार, that's just my opinion, मेरे को उसकी ना पोजीशनिंग में प्रॉब्लम लगी है 2-3 बार. लाइक लगती है, गोल मुझे की भी लगती स्पेस है, के ऊपर मुझे बहुत भी। एक्सेस में उसने छोड़ी है. लाइक आई थिंक मैं ज्यादा प्रेफर करूंगा निक पोप को. बट ये मैं एग्री करूंगा उसकी बॉल प्लेइंग एबिलिटीज एज अ कीपर वर्स्ट है तीनों में निक पोप की. Outright number 1, Jordan Pickford. No call. Nobody can displace Jordan Pickford if injured. If not injured. अच्छा, गनाबली का था क्या शॉट? आई थॉट साने का था. Gnabry का। अच्छा. कोई नहीं. थैंक्स. I mean, उत्कर्ष listen, खुश हो गए? I think मैं थोड़ा wrong बोल गया. I was not defending Southgate. What I'm trying to say here totally is, there was a golden generation. Everybody knows, and everybody said that England wasted the golden generation. He's managed two teams. If you could give it to him, if you could give it to someone else, he's basically gone with a very, very defensive mindset. He just says, defense, you defend your way out of the game, you will get 1-2 chances to score. That's what happened in the game against Germany. That's what happened in the game against the whole of 2018 World Cup. You leave that Panama game, वो 6-1 था, उसके अलावा तो every game was 2-1, 2-0, 2-1, 1-0.
every penalty shootout हो गया था against Colombia. So I really feel he's got the players going. Number one, he's got the players gelling together. The players want to fight for him. The players want to play for him, play for the country. He's got players like Sterling who had issues with the fans. They start loving the fans again. It's become a Oh, team that really likes Sterling. No, oh, Saka, Saka, oh, Saka, come Saka. on, come on, come on, come on. Take revenge, Don't tell bro. me. Take revenge, Saka. Take revenge. Come on. Come on. I think that game deserves to be 3-3, but who would have guessed it's 3-3, bro? It's like that thing. But by the way, 2-0. यहाँ पर meanwhile 20 minutes पहले 2-0 था, imagine. underachieving 11 मैंने share करना है for people who might have And missed the out. manager of this underachieving is Pochettino. Oh man, don't tell me, bro. Come on, Bottle. I mean, really? I think it has to be क्या Or is बोलोगे it- श्रेय? Underachieving manager. Bielsa. I think ABB. Pochettino, I ABB. think he comes to everyone's mind क्योंकि I think उसने achieve भी नहीं करा, but I think do we have really high hopes क्योंकि मैंने सिर्फ टॉप में देखा जिस तरह से बिल्ड करा है, बट क्या we put him on the pedestal of very top manager जिससे हम उम्मीद करें he can No, I win don't. Champions League. तो अंडर अचीविंग मुझे लगता है ऐसा कोई मैन आना चाहिए जिससे हमें लगता है we hope big things मेरे point of view से. मतलब someone who didn't get a chance at the very top level, I would say. Is that a fair way of judging this? Someone who deserved a chance at the very very top level, maybe who did not get it. मतलब I don't Sean think Dyche. anybody remembers the man, but you know the man that I would always put in this as a coach is the guy who lost 2 Champions League finals back to back with Valencia, Hector Cooper, and then he went to Inter and he lost the league on the last day by being the leader, and from there his career just disappeared. And I think people don't even know him, but early 2000s he was supposed to be the number 1 coach in the world, and you know today nobody even remembers him because nobody remembers the run. Fair point. I think एंड्रे विलास बोआस मैं एक नाम बोलूंगा क्योंकि जब वो चेल्सी में आया था हिज रेपुटेशन पोर्टो के साथ यूरोपा लीग जीता था एंड चेल्सी ने उस टाइम पे 10 मिलियन दे दे ब्रेकआउट करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट से पोर्टो कुछ बहुत बड़ी अमाउंट थी लाइक 10 इयर्स बैक एंड एंड्रे विलास रेपुटेशन से आए थे ही इज गोना चेंज एवरीथिंग. उसके बाद चेल्सी में गए करियर खराब हो गया टॉटनहम में गए ही वाज सैक्ड. तो वो भी एक शाउट हो सकता है आई बिलीव क्योंकि टैलेंट हाँ लेकिन वही है फिर मैंने खुद बोला था श्रेय फिर मैं रियलाइज किया he probably overachieved by winning the Europa League so shit he was. Yeah. But then he I mean, did मुझे well लगता है at उसमें भी Marseille बात है, that पता one नहीं. season. He got them back in the Champions League, so you know you'll still Marseille, hear. right? I think, yeah, absolutely. I mean, he got them second or third, and then had a falling out with the या board. करंट तो शायद ही लेंगे अपन क्योंकि यार मैनेजर का करियर तो इतना लंबा हो सकता है यार इट्स डिफिकल्ट टू जज बट आई थिंक आई गो विद फतेह's name again to be very honest I don't remember him honestly speaking Yeah. लेकिन And he was Valencia the I manager remember. of Egypt, you know. So he came back suddenly by taking Egypt to their first ever World Cup in 2018. But again, they had Mohamed Salah injured, so yeah. Yeah, obviously Barcelona will remember that when unfortunately they lost a manager, obviously passed away. But the guy was actually brilliant. Again, that's a different reason altogether. But I think I'll probably give a shout out to him. Yeah. Again, that's something unfortunate. But Louis van Gaal has achieved a lot, bro. He's achieved a lot. People don't know. He's achieved a lot. A lot He of won the stuff. Champions League with Ajax. He's won, you know, like so much with Barcelona. Oh, He's done everything Maradona. everywhere. But Maradona was poor chap. I mean, I don't even know like why. His he was management was not good. Let's face it. His management was not good. Simply poor put. guy. Yeah, the late Maradona, man, the great. As in, for me, again, arguable. Like, he's definitely there in the as a goat, man. But by the way, James mistake tha, yaar, third goal. Gaurav is saying, is it? James mistake. Can you say James mistake? I don't think so. यार shot लिया था भाई बढ़िया. I don't think shot का बहुत बड़ा सा mistake. चलो So- इटली जीत गई यार. Yeah. So who are the semi-finalists? Who are the people that we are हाँ going तो to अभी beat? and 3 win और this? मिनट में हम करने वाले कंप्लीट तो जब इंग्लैंड जर्मनी का लेकिन पता ही लग गया चलो हम दिखाई देते क्योंकि आपको चेंज होने नहीं वाला है इट्स ओनली अबाउट हुज getting more points in that group so you're right actually Italy are there in the semi-finals so congratulations to Fateh and all the Italian fans of course commiserations for not being in the World Cup just a reminder लेकिन had to put in there वो भाई सब लोग आप लोग बताइए कौन जीतने वाला है नेशंस लीग यस इट्स जस्ट नेशंस लीग बट एट द एंड ऑफ द डे भाई बेट मच बेटर देन इंटरनेशनल फ्रेंडलीज लेट्स फेस इट ठीक है दैट इतना तो जरूर बोलूंगा क्रोएशिया
कल पोर्चुगल और स्पेन का बढ़िया गेम होने वाला है, 6 पॉइंटर काइंड ऑफ थिंग, लेकिन सिमिलर टू हंगरी इटली, वहां पर पोर्चुगल नीड अ ड्रॉ, स्पेन नीड अ विन, सिंपल एज दैट, ठीक है. Croatia is already there. Of course, Austria is relegated to Nations League B. Czech Republic is relegated, or rather not relegated yet. Between Switzerland, Czech Republic होगा शायद. Yeah, exactly. लेकिन हाँ, Group A3 में England relegated. आज 1 point मिलेगा, फिर भी 3 points. Germany 7 points होगा. Hungary, unfortunately, are second now because Italy have beaten them 2-0 away. So it's got to be Italy 11 points, and they are on top of Group A3. So they are going to the Nations League semi-finals, and is Netherlands as well. यहाँ पर Wales relegated है. तो भाई, based on this, Netherlands, Italy, I am guessing Portugal. Panel आप बोल दिए. I'll go one by one. Who's winning tomorrow, bro? Or rather, who's going through Group A2 for you, Chinmay? A2, Portugal. Ronaldo fan. Or not just for Ronaldo. You see the performance they had day before. They look like absolutely killing. I'm scared for the World Cup. I'm an England fan, but I actually feel Portugal actually has a great squad. So I don't know. Let's see. I think they'll qualify, and they won the last Nations League, so they might just go as favorites for the semi-finals and finals also. भाई यहाँ पे आई नो भाई शेवचेंको ने बहुत अचीव किया भाई व्हेन इट कम्स टू मिलान. इनफैक्ट यूवे फैंस तो लड़ेंगे भाई कि शेवचेंको ने ऑन पेनल्टी जो जीता था ना, वो मैच यूवे शुड हैव वन इन द चैंपियंस लीग फाइनल, बट ही हैज डन लॉट्स ब्रो. ही हैज गॉट लॉट्स. Yeah, nobody cares about Nations League, but still this time it's important compared to others because Utkarsh, ये World Cup is just पहले. Fateh, it's England. Don't worry. Fateh, what about you? Who's going through tomorrow, Spain or Portugal? I would like to see Spain because I think Spain, we have unfinished business. I think they knocked us out in the Nations League, was it? We lost to Spain after beating them in the Euros. We lost, I think, some months ago. I don't know. Like something happened, Spain versus Italy, and then Spain beat Italy at the San Siro. I don't even remember. It was basically last season Nations League, yeah. Yeah. So I think I'd like to see them. Portugal, like everybody said, is scary. But, the good thing about having Portugal in the summer would be that there'll be no Cristiano Ronaldo in the summer next year. So he will retire, right? Like after the World Cup. Who knows? Knowing him, man? Sir, he's announced. I'm going to be there in the Euros. Yeah. Oh God. Well, things might change abhi bhi, Chinmay and Fateh, but abhi ke liye, announced. I'm going to be there in the Euros so that if there's no injury, he's going to play on. श्रेय आप बोलो यार, कल कौन जा रहा है? पोर्चुगल, स्पेन? आई थिंक पोर्टुगल जा रही है. मुझे लगता है आई थिंक दिल इजीली बीट स्पेन, क्योंकि पोर्टुगल आई थिंक जैसे चिन्मय भाई ने कहा, आई थिंक द स्क्वाड दे हैव गॉट, आई थिंक बात ही ज्यादा हो रही है. आई थिंक दे हैव वन ऑफ द बेस्ट स्क्वाड जो दिख रहा है, लाइक द बैलेंस दे हैव गॉट एंड द वे दे प्लेड अगेंस्ट चेक रिपब्लिक यस्टरडे. अटैकिंगली जो उस टीम के पास टैलेंट है, आई थिंक पीपल आर रियली रीविंग अ लॉट अबाउट ब्राजील, बट अटैकिंगली जो टैलेंट है पोर्टुगल के पास, दैट्स वन ऑफ द बेस्ट मेरे ख्याल से वर्ल्ड में. मैनेजर आप कह सकते हो कि लोगों का फेवरेट नहीं और बेस्ट यूटिलाइज नहीं कर रहा, बट अगर ये साइड अपने बेस्ट में खेल गई, आई थिंक दे आर वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस साइड. एंड स्पेन का वही है, आई थिंक लुइस एनरिके वंडर्स कर रहा है, बट द क्वालिटी इज वेरी लैकिंग. स्पेन में जो क्वालिटी है, एल्वारो मोराटा, सराबिया एंड डेनी ओल्मो कंपेयर टू क्रिस्टियानो रोनाल्डो, बर्नार्डो सिल्वा, राफेलियाओ, 3-3 इंग्लैंड जर्मनी का मैच खत्म हो गया. मैं पोर्टुगल के साथ चाहूंगा. There are two completely exact but different situations. There is a lack of talent with a great manager, and there is huge depth of talent with a manager who's not best suited for the team. Bit like the Portugal and England का भी हालत थोड़ा same ही है. Managers not liked at all. Squad depth is very good. So you have to see. I think Fernando Santos, Southgate, इन दोनों के लिए बहुत ही vital रहने वाला ये World Cup के performances. It will really I am still saying that Portugal last game में देखे ना, they are in that zone. मतलब I know Argentina has been crazily good, लेकिन मेरा argument है, hasn't Argentina peaked a little too early for the World Cup? That's the only my argument. जो we have seen in World Cup, so होता है in major tournaments. Probably Fateh is the best example क्योंकि Italy का I know they were in a crazy run Euros का, लेकिन just when it came to the World Cup qualification at that very stage for Italy का चल गया था वो, नहीं? I think it's no. I think if anybody but Jorginho taking those penalties, and we would have been there. I mean, oh my God, come on, I mean, that guy has ruined. बेचारा भाई इतना अच्छा भी किया है पहले, कोई नहीं. No, that's okay. But then भाई नॉट मैसेडोनिया को हराना चाहिए विदाउट पेनल्टीज. ऐसा थोड़ी है. No, but Switzerland के खिलाफ जो वो penalty थी, that he's missed in both the Switzerland games, and Switzerland qualified at our expense. So no, that's a fact. You cannot deny fact.
yeah, at this level, he should not have taken that penalty in the second game. Like you have strikers like Immobile who've been taking penalties for Lazio since for the last 5-6 years. Then I think it's very wrong, and you can't get emotional just because he takes penalty. He missed a penalty in the final as well against England, so I think that was very wrong. And of course, as a manager, you don't want to take those. Like maybe the player will lose his confidence, but still, like what have we even done? Like we should be there. Like Italy, I think in a World Cup and 2 World Cups, my God, like. And the Anyway, winners of the Euros, come on. I mean, बट very टॉकिंग disappointing. अबाउट इटली पर वापस आएंगे भाई 1 मिनट के लिए श्रेय आई जस्ट नीड टू आस्क यू हियर भाई आफ्टर टुडेज परफॉर्मेंस डू यू थिंक दैट साउथगेट और फ्लिक में से मतलब एक जन इफ से दोनों वर्ल्ड कप तो रहेंगे दैट्स अ रियलिटी ऑफ इट लेट्स फेस इट बोथ ऑफ देम विल स्टे ऑफ कोर्स फ्लिक तो डिजर्व्स बिकॉज इट्स नॉट बीन सच अ लॉन्ग टाइम आल्सो विद जर्मनी लेकिन if you have to say that if there's one person that will be out of management, even you can put in Fernando Santos भी of Portugal. श्रेय क्या लगता है मतलब be it before the World Cup or after the World Cup even who will be the first manager who will get the sack between England, Germany and say Portugal for example? I think for me, अभी अगर मैं कहूँगा why I do think Hansi Flick could be the one, only reason is I think England का मुझे से I agree with फतेह भाई एंड चिन्मय भाई, I think they will reach on good stages, क्वार्टर सेमीज पहुंचेगी एंड उनके पास ऑप्शन भी नहीं है. लाइक कहने की बात होती है फैंटेसीज में जीना, लेकिन थॉमस ट्यूखल कभी भी इंटरनेशनल जॉब नहीं लेने वाले, तो दैट्स इम्पॉसिबल. ग्राहम पॉटर ऑलरेडी चेल्सी आ चुके, तो ऑप्शंस है नहीं इंग्लैंड के पास, सो दे विल बैक साउथगेट एंड फॉर द फर्स्ट टाइम उनकी टीम ऐसे टीम खेल रही है, तो नहीं पॉसिबल है. आई थिंक जर्मनी पे एक्सपेक्टेशंस है एंड जर्मनी लग रही है एक ऐसी टीम, या तो वो सरप्राइज करेगी एंड बहुत अच्छा करेगी, या फिर राउंड ऑफ 16 में बाहर निकल जाएगी, क्योंकि दे आर वेरी वेरी बैड. लाइक या तो अच्छा करेगी या बेकार करेगी, बीच का नहीं लग रहा, सेटल नहीं लग रही. इंग्लैंड इज अ सेट टीम जो फाइनल पहुंची है, सेमीफाइनल पहुंची है, तो आई थिंक इंग्लैंड सेट टीम है जो एटलीस्ट क्वार्टर से पहुंचेगी ही पहुंचेगी. एंड पोर्टुगल में जैसे चिन्मय भाई ने कहा, क्वालिटी इज टू मच, उनकी सारी टीम क्लब्स में भी अच्छा खेल रही है एंड दे आल्सो प्लेइंग वेल इंटरनेशनल स्टेजेस, तो मुझे लगता है वो भी क्वार्टर तो पहुंचेगी. तो जर्मनी पे लगता है मुझे अंकित भाई कि जर्मनी इवन फ्रांस भी डाल देते उसमें, फ्रांस भी डाल देते France पे सबसे I think सबसे बड़ा issue यही है, there is one man who's waiting since whenever, and that is Zinedine Zidane, and वो Didier Deschamps के सर पे बैठा हुआ है. It is just it's लग रहा like, वही है actually. Football Critics is right. and I'm not even kidding. I think this World Cup, France, that there is that World Cup winner curse, which everybody talks about. They're already looking very, very bad. And I don't know, maybe the curse will break. Maybe they'll get out of the group stages, go into the round of 16. But I feel Deschamps is done. He's won the World Cup. He came to the finals of the Euros. He has, performed well. I think Zidane takes the job after the World Cup. And I think that would be the and first I think we have to the first high-profile, manager resigning with Zidane coming in. And I think you have to respect guys like Santos and Deschamps. Generally, a national team, you don't generally have a manager that lasts for such a long time. Like at least in the 90s and 00s, this never used to happen. But now we are seeing it more and more. But then I think it's a quick case of maybe you've sort of overstayed your welcome. I think with the Portuguese manager, any of these 4 nations, if they don't make the semi-finals, Portugal, France, England, and what's the other one? Germany. I think Germany, if yeah. any of these 4 nations don't make the semi-finals, at least they will be sacking their managers. For Santos after 2018 World Cup, after 2018 World Cup, he could have stepped aside because there was a good, the COVID nahi tha, it was going to be Euro 2020. There would have been a good 2-year gap for any Portugal manager to come in, take up the role. That would eventually become a 3-year role, and they would get ready for the Euro. And because he had won the Euro, he had come to a World Cup in 14. He had come up with a World Cup performance in 18. Got out in the round of 16. I'm not wrong. If against Uruguay, where Cavani knocked them out. So I really think he could have gone there. He'd stayed, But, and now everybody wants. For a nation like Portugal to win a big trophy, they had never won it. And if you look at their Euro 2016, they were not all that special. So I think you can understand why nations. A single game in the group stage, if you remember. This is a fun fact. Bolo, jo bolna hai bolo. 3 games, 3 draws, go through somehow, and then they started. See, that is why I'm backing Portugal, bro. That is what you get from Portugal. But that is also what you get from England. Like the same criticism that you make of England, Portugal did the same at Euro 2016. Right? They only won one game. I think Portugal को तो मैं I've also say like I can also argue that even 2004 में, if I'm not wrong, वहाँ पर भी Portugal में हो रहा था. वहाँ पर भी I can argue that the kind of talent that
form that Zidane was in, I was like, "Bhai, France ka ye to 100%." Or I think if I'm not wrong, Zidane had actually announced that because उन्होंने जीता नहीं, he came back. He had announced his retirement कि मैं retire लेने वाला हूँ after this. But then he came back because he had something pending, no? Then he came back for 2006. And that was That's what I'm saying. a sad ending. That was a very sad ending to his No, it entire. was deserved, very deserved, and Materazzi should be Greece. the man of the match. And I don't understand why people. What a player Materazzi, underrated. Winner यार of the वही ना, World मैं Cup. आज ही क्वेश्चन आया था कि भाई was Zidane dropped of the Ballon d'Or? I thought भाई yes he got them to the finals. He was out of the world. मैं तो बोलता हूँ He मतलब was, मेरे लिए नॉन चेल्सी में he is one of the goats ever, मतलब along with Ronaldinho. लेकिन for me the way that the fact that he उसके एक मोमेंट से ना पूरा टीम डाउन हो गया, तो somewhere down the line he was also responsible, नहीं? No, I don't think so. I think the way that tournament was, I still remember. See, that is the thing with France. You know, they have these personalities, they have these clashes. If you remember Euro 2004, they were not really gelling. Again, the World Cup 2006, they were not gelling. They were losing 1-0 to Spain. And it Yeah. seemed to me at halftime, and then it was at Correct me if I'm halftime, wrong, Fateh. Zidane gave that speech. He came हाँ. out in the second half. I don't know what happened. Like, it was like watching a completely different game. And Zidane just completely bossed Spain. And Spain lost. And even And England, bro, 2004 आप बोले ना, 2004 आपको याद है तो that was also Beckham का time. तो 2004 में I remember Beckham, Rooney being there, and then Zidane actually turned the match on his own. He scored off a free kick, if I remember right. yeah, 2-1. and late on, that was the 88 tournament minute. Rooney burst on. That was the tournament Rooney burst on. So England का एक अलग hype था. Everybody was going Rooney mania started. Croatia, So- that game. वो तो भाई रोनाल्डो वर्सेस रूनी हो गया था ना, क्या कर But सकते then, हैं you know, उसमें? and Zidane basically coached that team. I mean, the fact that they knocked out Brazil in the quarterfinal in 2006, then they beat Portugal, who were very good, you know, Figo, Ronaldo, and everybody. But at the same time, I think even if Zidane was on the pitch, Trezeguet was missing that penalty anyway. So it doesn't matter. Like, he was only knocked out for 10 minutes. He was only not there on the pitch for 10 minutes. And Cannavaro deserved that Ballon d'Or. You can't give it to Zidane. And Zidane was Exactly. fantastic. हाँ, see, मतलब I agree. मतलब finally Fateh has agreed to. That's what I'm like seeing. I I've don't know, never man. said, I've never, because he played for Juve and, you know, Galacticos, and I never liked him. But yeah, like grudgingly, now, you know, I have to say that Zidane was very special. Yeah. But But that's Shrey, आपको पूछ रहा हूँ यार, which team are you looking forward to watch? I know Shrey is a neutral, by the way, just for everyone to know. Or by the way, everyone who's watching by, again, do like the stream. I hope we have already crossed our target, which is below. लेकिन again, do not forget to subscribe to Shrey FC भी, उनका भी channel है tagged below. तो Shrey, आपके लिए as a neutral, which is the team that you're really looking forward to watch in this World Cup? I think for me, there are some teams, but I will love to see, like, I'm really awaiting to see Netherlands because friendlies, I think they have looked very good so far, Nations League, and actually, Holland, and it's good to see them play well. I think I'm very amazed to see Portugal as well because Portugal is a team I think to underachieve career and they must start doing better. And they have got a very, very good team. I can't lie, a very, very good team. I'm also very excited of some stunning teams that we are not talking about, like Serbia. Serbia are looking good. The players they've got in attacking department and Yeah, Croatia. surprise. Serbia can be surprise. Everyone is And asking Brozovic, surprise. Kovacic, and Modric midfield. So I think Croatia in big games won't be easy for the teams like England or the other teams, and Denmark as well. We again count Denmark out, but they proved themselves in Euros. Croatia, by the way, have been a World Cup finalist. People yet again, मतलब forget, or especially England fans, we cannot forget that. Lekin I would love talking about Serbia, Yeah. मतलब you have to say that you know Divyanshu यहाँ पर पूछ रहे, by the way, Italian team. By again, no pun intended, Fateh. What is it that Italy are looking forward to in this winter? Simple rest Simple rest, absolutely. I think that will help Italian teams in general in Serie A, nahi? generally, I hope that it helps. But you know, they were talking about having some tournament in the USA, a winter tournament, but I don't think that's going to happen. So yeah, I mean, I think what can we look forward to? I mean, we don't have good forwards. That's so weird. But these last, you know, like we said, Balotelli, we mentioned him. We've not had a good forward at all. And as a Skamaka, big, aren't you convinced? Skamaka? not yet, not yet. I think it's too early, and I don't think he's made the right move. I think he needed to stay in Serie A. He needed to at He least needs have that one more year at Sassuolo. He's just yeah. yeah. वहाँ पर So he'll start some, he'll not start some at West Ham yeah, because of and Antonio being there. and more than him, I think it's Raspadori who's now being talked about. Because he's stayed back in Italy. He's young, so we need forwards, I think, and even defenders. It's a problem. I mean, Bonucci's going, and Bonucci's not all that good anymore. Chiellini's gone. The leadership has gone. Acerbi is old.
Bastoni Yeah, doesn't look all that Bastoni convincing. hasn't Yeah, improved, I he's have not to been say. that convincing, So players are tired, but yeah, I mean, we have huge problems, but we have a very Yeah. good midfield now. I'll take out one name. I'm sure Fateh is like, क्या पागल हो गया क्या भाई? What about the young Mancini? Ah, the Roma defender. No, 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 no. He's horrible. Bro, if Jose can make him work, why can't he work for Italy, bro? I'm just putting a name. भाई सब Jose लोग can तो make Smalling लंबा पे work देखते too, हैं. like in the Conference League, it's okay, but it's Yeah, it's not it's happening different in Serie A. exactly. Yeah, Yeah. yeah. Anyway, man, as in good stuff. I know हम काफी discussion कर रहे हैं. But Do you think what do you Insigne guys think time is about over? Qatar? Because Qatar won the Asian Cup. Mhm. You never know, like that host nation thing. Just But that was itself a surprise, no? When they won that the was a Asian Cup. surprise. But yeah, You never know. मैं Canada, you know what? मैं follow किया हूँ when I was there actually during that time. देखिए Canada का वही है. There was a lot of एक इतना ना एक साल का difference हो गया by the time they last proper played in that qualifier versus when the World Cup is actually going to happen. And that's actually the Achilles heel for Canada. क्योंकि a team like Canada or a team जैसे मैं बोल रहा था about Argentina, yes, I'm actually putting them in the same bracket. Unfortunately, लेकिन I don't mean that. When I say that, it's like there are certain teams who kind of peak very early and हमने जाना है भाई whenever we say that this is the favorite बहुत कम होता है that they actually go on to win the World Cup. That's one more thing. Or again, even for a group Canada, I doubtful if they'll be able to do it. Of course Jonathan David is very good. Of course they have Davis. Tomori could have played for Canada. यहाँ पर मैं श्रेय और चिन्मय से पूछता हूँ भाई, please tell me, help me understand why was Tomori removed from today's squad by Southgate? As in Tomori, he should just pick Canada, bro. Why is he playing for England? I have no idea. What is the reason behind keeping Maguire, who has been like, let's be honest, he's nowhere. Yes, he's criticized more than what he deserves, but at the same time, he's not been good. Tomori, yes, he is a Past little bit overrated, but past much better. performance profile के ऊपर Maguire has been selected, and Maguire has been a trusted servant for Southgate. I'm not against you. I completely agree. I watched Tomori. I think Tomori should be in that back three. But if he's going for Maguire, it's the only reason is because whatever said and done, he has performed when it comes to this tournament. And he made a very egoistic statement, by the way, on Wednesday. I don't know if people read it or not. He said, "I was not fit in the beginning of the Euro 2021, but somehow I ended up in the team of the tournament." That tells you that Yeah, you yeah. know How सब लोग ने पढ़ा है भाई, yeah, definitely. yeah, that tells you, what kind of performances I come up with. So I mean, I don't want to give him any ego boost or something, but truth be said, he does perform for England in the big moments, in the big games. Tamori is there for the future. I hope he doesn't select नहीं नहीं Canada because देखिए सॉरी चिन्मय, मेरा पॉइंट ये है, how yeah, can you why was remove he a not player selected? without actually giving him a chance? You have him in the squad. It's First of it's all, you have given him the break. it is one of the huge mistakes Mr. Southgate has done. You have a look at a player who played against us today, Musiala. उसको chance ही नहीं दिया आपने, भाग गया वो. And he's हाँ? a great talent. He's a great talent who could have turned out Yeah, for just us. let him go, bro. I know the pain about Musiala as well, जो होने वाला है. लेकिन No, हाँ, it's what you're saying. You're completely right here. It's what Southgate does. मतलब वो होते हैं ना टीचर्स पेट, थोड़े फेवरेट्स है, हाँ उनने परफॉर्म किया है, पर वो डिस्प्लेस करने ही नहीं देता. So no, tell I me, don't I you feel it's more than that, bro. It's almost like saying that at some point you can argue. Let's say again, Graham Potter is today coach of Chelsea, नहीं? yeah, मेरे ख्याल से होने वाला है in course of time. Let's say Ronaldo का होता है all the time with all the managers, that the players is bigger than the manager, in terms of just the aura, just the media, but everything, and Maguire that's a is no reality. aura, to be honest. Maguire is no aura. I mean, there is no reason for any manager to select नहीं, but he Maguire. thinks he has, no, at least he thinks he has, and I वो don't. I बोलता तो mean, है. exactly. अंकित भाई, मैं सच में बोल रहा हूँ. I don't know why he is giving such interviews. उसने literally ये हफ्ते में उसने 2 interviews air किए. One shooting a shot towards David De Gea, saying it's his mistake that Maguire was not able to defend properly, and another interview saying stuff like this, the Euro 2021 jibe, and saying stuff like, I don't know why Ten Hag is not selecting me. नहीं, I mean, और come श्रेय on. से भी पूछता हूँ भाई, फॉर मी एक और यू आर टॉकिंग अबाउट द रीजन आई एम टॉकिंग अबाउट कनाडा से आया है ना टॉपिक. बाय द वे दिव्यांशु, आपका भी कमेंट लेंगे, मैंने स्टार करके रखा है कपल ऑफ कमेंट्स. देखिए मतलब आई रिमेंबर अगेन, आई विल कम टू द अदर्स एज वेल, लेकिन वन एग्जांपल कैन बी ओवन हार्ग्रीव्स. देखिए ओवन हार्ग्रीव्स इज अ प्लेयर हु वाज एक्चुअली अ कैनेडियन, ठीक है, कैनेडियन, वो कनाडा के लिए खेल सकता था. ही कुड हैव प्लेड फॉर जर्मनी एज वेल एट सम पॉइंट, आई बिलीव, ठीक है. तो बट ओवन हार्ग्रीव्स पिक्ड इंग्लैंड, और उस समय
I think we Sven Goran Eriksson and everyone involved एक ही criticism थी. Yes, Lampard Gerrard couldn't have played together. एक सिंपल है भाई, हम लोग फीफा में खेलते हैं, हम लोग बेसिकली अपने फील्ड में खेलते हैं, हम लोग एट सम लेवल खेलते हैं, हम लोग को दिखता है भाई, इफ यू हैव लैम्पार्ड जेरार्ड अहेड, यू हैव ओवन हार्विस बिहाइंड, you have Gerrard and Owen Hargreaves can replace in between the game, and you can have Scholes coming in between. That is how you should have gone, instead of kind of trying to fit everyone and play Gerrard as right midfielder. But Owen Hargreaves had trust till the end. मुझे तो ये बोलना पड़ेगा भाई, Owen Hargreaves is one of the most underrated of that generation. He was so good in my opinion until he came to Manchester. People didn't know because वो Bayern में खेलता था, मैं देखता था, but he was so good. Same thing Tomori, he's playing in a different league. ठीक है, maybe that is the reason why maybe Tomori is not given a chance over Maguire. Or do you think what Chinmay ने बोला is about old performances only? आई थिंक मैं एग्री करता हूँ पूरा चिन्मय भाई से. मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं पुरानी परफॉर्मेंस ही, क्योंकि अगर हम करंट परफॉर्मेंस देखें तो कोई क्रेडिट ही नहीं है इन द बैंक मैग्वायर के लिए आने के लिए लाइनअप में. आई थिंक मैं कहना कि इसमें साउदी को बैक करूंगा, लेकिन यही है कि अगर ये बैक फायर कर गया तो सिर्फ ये नहीं कि उसने मेरी रेपुटेशन डिस्ट्रॉय कर दी होगी फैंस के बीच में. प्रॉब्लम ये होगी कि फ्यूचर ऑफ इंग्लैंड भी प्रॉब्लम में डल जाएगा, क्योंकि अगर ये बैक फायर कर गया तो फ्यूचर में आप एक स्टार खो दोगे एंड ही विल गो टू कनाडा. लेकिन अभी मैं क्यों बैक कर रहा हूँ साउथ को, क्योंकि मैनेजर्स को ऑलरेडी इंटरनेशनल मैनेजर्स को सिर्फ एक हफ्ता मिलता है प्लेयर्स के साथ काम करने के लिए. वहां भी क्लब्स के एक्सक्यूजेस आते हैं, कीप माय प्लेयर्स फिट, कीप माय प्लेयर्स फिट. तो लाइक 3 to 4 ट्रेनिंग सेशंस बस. तो अगर आप एक वर्ल्ड कप के लिए सिर्फ गिनती में अगर कहीं 15 से 20 ट्रेनिंग सेशन करवाओगे तो एक प्लेयर को आप 2 साल से बैक कर रहे हो लाइक हैरी मैग्वायर, और एक प्लेयर अभी नया नया है. आई थिंक ये स्मार्ट थिंग है कि आप अपने उसी प्लेयर्स को ट्रस्ट करो जिनको 2 साल पहले से आप ट्रस्ट कर रहे हो. मैग्वायर, आपके लुक शॉ, आप ये प्रोजेक्ट जो इंग्लैंड का शुरू हो चुका था यूरो से भी पहले वर्ल्ड कप के टाइम, जब ये क्रोएशिया में फाइनल उस टाइम पे पहुंचे थे सेमीफाइनल पे. ये प्रोजेक्ट 4 इयर्स का प्रोजेक्ट है इंग्लैंड का, जिसमें 2 वर्ल्ड कप्स कवर हो रहे हैं और एक यूरो कवर हो रहा है. तो आई थिंक इट्स बेटर कि आप एक ही स्क्वाड से स्टिक करो जिन्होंने अच्छा परफॉर्म करा है. जैसे ट्रिपियर ने भी अच्छा परफॉर्म करा इंग्लैंड के लिए, तो आई थिंक इट्स बेटर कि आप मैग्वायर के साथ स्टिक करो. बट यस, अगर वो परफॉर्म ना करे एंड वर्ल्ड कप में कहीं ना कहीं अगर आपकी बिलो द पार परफॉर्मेंस गई, देन तो साउथगेट विल हैव टू फेस द म्यूजिक. और अगर नहीं गई तो वी विल हैव टू फेस द म्यूजिक. हम क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से. Any fair. Fateh, I think you would definitely like to add about yeah, Chinmay. I don't know. No, I feel like Maguire in a 3 at the back for England. He was successful at the Euros and he was successful in the World Cup. So I think that is what Southgate is thinking, and I think he will take Tomori to the World Cup. Like Tomori will be in the World Cup squad. There's no doubt about that. And you don't know at that stage what happens with injuries, who's available, who's not available. Like we don't know. So I think Tomori will get his. Something related to the Argentinian national team has officially requested all players of the Argentinian squad to please not play in the last game week of all their respective leagues before the World Cup. So already requests have started coming in. अरे यार ये सब नहीं होना चाहिए, to be very honest. They've already said that the November 10th to November 13th weekend जो है the request चाहिए ना भाई clubs. नहीं. And the thing with AC Milan is that they play 4 at the back. So I don't know whether Tomori fits the 3 at the back and whether England. Oh no, he does, bro. He does. So Tomori again. I've watched a lot of Tomori in the academy, right? Wrong at Chelsea. Did he not? Were there not some games where he played? No, under Lampard we used to play very rarely at the back. Lekin. Yeah. Let me just because Fateh ne pucha na, whenever Tomori did not play in the starting 11 in Chelsea, at that point what Lampard used to do, for people actually don't know and don't rate Lampard about, I rate him for that reason. Lampard actually made sure that उस समय उसके दौरान ना जो एकेडमी के गेम्स होते थे, जो Chelsea under 23 के गेम्स थे, उसमें we used to play actually 3 at the back. Or Lampard actually utilized a couple of them. Shrey would have remembered this. We played against Jose Mourinho, and he did a Jose Mourinho to Jose Mourinho, and we won that game. I remember away to Spurs. So that was something that I remember. 2-0 था, जहाँ तक मुझे याद है. और Tomori was playing there when Lampard suddenly towards the end of Lampard's era he was not playing much. So Tomori has played that. In fact, Tomori is one. मेरे ख्याल से looking at him making those long passes, Fateh will add to that, is one actually who's pretty comfortable on the left foot as well. Fateh, would you go with that? Yeah. I think Tomori he's really coming along very well. He's being everything. He's got everything. I think he's got pace. He's got that physicality, the feet, like you said, the left centre back, the right centre back. So he's doing. Stone's injured, by the way. He's injured. He went off. Injury there was no contact for anyone. He made the run and he just clutched his hamstring and suddenly went off.
So you never know. You don't know how serious that is. Is he going to play against City? Is he going to play for City? Is he going to play against United, the first game they have right now? Is he fit? Does he need surgery? You don't know. There are a lot of things which are going to happen within now and November 15th. So you can still take a call. There's a lot of talk about Ivan Toney. He did not come on in both the games, but he was selected. So you see Trent Alexander-Arnold. He didn't play a single minute. He was in the squad today, Yeah, he but wasn't they in the say squad. आज but बेसिकली बोवन, जेम्स और प्रॉवर्स और ट्रेंट को ड्रॉप किया गया था, वही पोल में भी yeah, डाला they मैंने, say he's the most लेकिन creative player in the England squad. So हाँ. a lot of things But which can Tomori, I happen. hope he's at least in the squad, bro. Like, let's hope for the best, especially Chelsea fans और AC Milan fans. But यहाँ पर देखिए, फुटबॉल का एक बहुत अच्छा पॉइंट है. आज थोड़ा सा डिफर करना चाहूंगा. देखिए, when Saka plays in the England team, ना, he kind of is that player who is attacking from one end, like how maybe a Pep plays at times, how Potter plays at times with Brighton. आज लेकिन इसलिए मैं क्रिटिसाइज कर रहा था when I saw that lineup कि भाई वापस से back to tried and trusted five at the back गए, but with a Luke Shaw and a Reece James. As much as Reece James and Luke Shaw dono they're actually good when it comes to attacking wing backs. But in a performance, until say Germany scored those couple of goals, Chinmay, we didn't see that really, right? To be honest. You didn't. I think Luke Shaw, maybe defensively he was, let's say, solid, but in the first half. But I think attacking wise, which is kind of the main forte of Reece and Luke Shaw as wing backs, they did not really get down to the wings, and they could not. I only saw Sterling, Kane, Foden was there at times, but Sterling and Kane were the ones who were actually making threat. So you can, a lot of things did not work out till say the 70th minute, but I think after that they did work out. Now you can say that why is it happening? Is there a lack of ambition? Was there a lack of the team gelling? You don't know. So let's have a look at what Southgate is going to think. I'm again and again the same thing with England. The problem is luck favors us in draws, but in injuries it doesn't. I hope no top players are injured in the next 1 2 months. And I don't know, of course, I hope not. I just hope no international international teammate decides to probably injure someone else in a Premier League game or in a Oh Serie my A game, God, that will be Liga very game. controversial if that That would happens. be very controversial, and it could happen. There are a lot of people who would do anything for the country. So you don't know. Let's hope. Yeah, absolutely. But by the way, yeah, it's what close to 2:40. By everyone, thanks for joining. Yes, there are couple of start more comments that मुझे लेना था. लेकिन again, that is something about experiences. There's a nostalgic जो हम हमेशा करेंगे. But I'm hoping like we have more of Fateh, Chinmay. भाई सब लोग हो जाए Fateh OP, Shrey OP, Chinmay OP. Because again, these guys are busy, but they come on, as much as possible. So we have a great conversation. हाँ, जो लोग miss किए भाई, we picked an underachieving 11 of all time 2000 onwards, तो बहुत अच्छा रहा. So we have discussed that, but of course that missed by Saka, Nakiret बोल रहे, but again आज का इतना हम रीड नहीं करेंगे. It was more about Southgate saving his job in my opinion more than anything else. लेकिन हाँ, Fateh generally believes that England are on paper doing much better than what people are thinking, which I as can long get it. as long as in a big tournament like this, in mid-season you have your defense right, you're going to do well. Like look at Portugal Euro 2016, France World Cup 2018, and Yeah, even Italy, in the last World Cup. As long as you have tournament a good football. defense, you're going to do well in a Chelsea, tournament. Chelsea 2021, bro, in Chelsea, Champions League. Why exactly. not? So that's the thing. So I don't believe, when people say they say Southgate this, Deschamps that. As long as these big teams they have their defense, and that's where I worry about countries like Argentina. Like yes, I've seen Scaloni play, but I don't know whether he's a manager who can outfox a Deschamps or a Yeah, Southgate or structure है. As soon as no, they are sussed out when they're playing the yeah. big teams Yeah, regularly exactly. in I a don't think, tournament. and that whole Messi, that reliance, I don't know how that happens. Like, I mean, I'd love to see Yeah. Argentina win, a South American team win for the first time in 20 years. So that would be beautiful. But yeah, I don't. I have one question. And do you think finally, someplace in the World Cup, we see a Portugal versus Argentina? Do you think we see at some level we see that? The only possibility I believe is the final, no? So Or earliest is the semi-finals. that is exactly my question. Do you probably see some Bro place आएंगे हम somewhere लोग. We in are the doing final? to we are going to do World Cup series, but early predictions मैंने किया था और मुझे बहुत हेट मिली थी भाई, बिकॉज वो लोग बोल रहे थे भाई पागल हो गया है, क्या फूक है, पोर्चुगल तो हग रही है. बट भाई आप लोग देख रहे हो पोर्चुगल
when the time gets right, your Fateh is right that the fact that they have such a squad, and if they can kind of maintain that in a tournament, Defenses, why not? absolutely. It can be the thing. Defenses, So good defenses will always do well in these sorts of tournaments. मेसी बोल रहे नहीं भाई मेसी खुद ही बोल रहे चलो नाइस नाइस doesn't rely on Messi the way they used to yeah मतलब again they have a DePaul they have a lot more Yeah. लेकिन I think Fateh's point of Divyanshu that have they been tested regularly in a tournament apart from maybe a Brazil and to some extent Uruguay in the Copa America last year in the last couple of years in the big run they've had that's the only question which again I believe that they are good enough like enough time will tell I and you mean, need luck. in 18 they struggled against Iceland. In 18 they struggled against Nigeria. In 18 2018 was just crazy. they Yeah, struggled 2018. against Croatia. They Maybe this is the somehow time. That's why there always is a time. Sometimes it's got to go. But again, people, we've got to go now because भाई बहुत देर हो गया है. But again, thanks to everyone who's joined. Again, भूलिएगा मत like, share, subscribe. Also to the panel, give them a follow as well. And big up to the panel. अभी के लिए good night. And of course, we'll be back later tonight. अभी later tonight हो गया because the last round of Nations League matches is back for Portugal and Spain, the big one. And बहुत सारा हम बात करने वाले. तो again, see you soon and thanks everyone. अभी के लिए bye. Good night.